believe it's in your DNA. This is our legacy to you. Come on, you Blues. Come on, Jeffs. How's the Josh? How's the Josh? Guys, it is Super Saturday. बहुत सारे मैचेस होने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं सब मैचेस के, लेकिन ऑब्वियसली इट इज द डार्बी वीकेंड जहां पर डार्बी शुरू होने वाला है विद चेल्सी अवे टू ब्रेंटफोर्ड. यस, फॉर पीपल हु डू नॉट नो, बाय चांस आपने प्रीव्यू मिस कर दिया था भाई, दिस इज अ वेस्ट लंदन डार्बी जहां पर कहीं ना कहीं यस लाइनअप्स आर आउट, वी आर कमिंग टू इट एब्सोल्युटली. बिग अप टू एवरीवन भाई, लेट अस नो हु ऑल आर इन. एब्सोल्युटली हम कवर करने वाले हैं थोड़ा बहुत इधर उधर के मैचेस एज वेल, बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल रेस मैचेस है, बट let's get real. But when it comes to Chelsea bhai, difficult times. Poch, I know Josh इतना अच्छा नहीं है, but the reality is this, अगर हमें इतना सा चांस है ना to go to Europe, every match is a must win almost, or especially a derby match against Brentford, जो by the way relegation के लिए fight कर रही है, and we have not done well against Brentford in the recent past, मैं बोलूंगा in the Premier League for sure. लेकिन मैं यहाँ पर स्क्रीन में डालने वाला हूँ guys, ब्रेकिंग न्यूज, ऑफ कोर्स ब्रेकिंग न्यूज अगेन, जो भी लोग आए मैंने कम्युनिटी में भी शेयर किया, एज वेल एज आई बिलीव लाइक्स आर ओपन डेफिनेटली एट द प्रेस ऑफ अ बटन, जैसे हम हमेशा करते हैं. लेकिन हाउ इज अ जोश इन टर्म्स ऑफ द लाइनअप, मतलब सरप्राइज बाय पॉच येट अगेन थोड़ा बहुत. आर यू गाइस सरप्राइज्ड और नॉट? लेट मी नो भाई, सब लोग बोलिए चैट में कौन कौन है. अगेन एनीवन हु इज न्यू टू द चैनल, कंसीडर सब्सक्राइबिंग, डजंट टेक मोर देन just a press of a button, doesn't take a buck bhai, come on, wherever you are everyone is welcome, be it a Chelsea fan or opposition, we would love to know any comments here. Absolutely, कौन कौन है बताइए सब लोग. लेकिन आप देख सकते हो, आई होपफुली यू गाइस आर एबल टू सी right now what we are at in terms of the starting lineup. Again, पेट्रोविच इज इन गोल, तो ये कहीं ना कहीं रिलीफ है फॉर अ चेल्सी फैन फॉर श्योर कि यार पेट्रोविच, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि यार शुड आई टेल शुड आई नॉट टेल, हाँ प्लेयर्स नो बट आई नॉट श्योर, लेकिन वो मुझे नेगेटिव लग रहा था. लेकिन थैंक गुडनेस भाई, पेट्रोविच इज अ नंबर वन इन टर्म्स ऑफ द ईपीएल गोलकीपर. चालोबा स्टार्टिंग एन ईपीएल गेम, गॉड नोज आफ्टर व्हेन. Of course, वो शुरू किया था against Leeds in the FA Cup, and in my opinion, apart from that one goal conceded moment, I think Chalobah अच्छा game था considering the context of missing so many months. Disasi yet again भाई हर एक second खेलता है. Colwill as well. Thiago Silva is not there in the starting 11. Gusto, तो looks like it's clearly a back three yet again. तो हम खेल रहे हैं Disasi, Colwill, Gusto. Basically, the Gusto will be playing the I think right wing, और Chalobah, Disasi. और कॉलवेल है सेंटर बैक, वाओ, विद चिलवेल एज लेफ्ट विंग बैक. तो लुक्स लाइक इट इज अगेन वही है 3-2-3-2 आप बोल सकते हो, विद एंजो कैसेडो इन द मिडिल. लेकिन गैलेगर स्टार्ट्स एंड नॉट अ मुड्रिक, ये चेंज हुआ है विद दैट लीड्स गेम, बट पामर एंड जैक्सन इन. वाओ भाई, दिस इज समथिंग भाई. स्टर्लिंग स्टार्टिंग लाइनअप में नहीं है, वो भी बेंच पर है, मुड्रिक भी बेंच है, मडवेके भी बेंच है, बट अब 3 विंगर्स आर ऑन द बेंच एंड वी आर गेटिंग अ विड्थ फ्रॉम चालोबा एंड चिलवेल. Is Chalobah really a guy to get you width? With all due respect, I know I love him, and one of the most memorable moments in my life जब Chalobah surprised me on Chelsea TV when I was invited on honor to be that, and I love the guy. Cobham guy अपना full देता है, as much as potential, still basically he needs to work on it for sure, but he's not a right wing back. Against Brentford, yes, it's an away game in a must win. Why are we playing Chalobah as a right wing back as a starter जब हमारे पास बेसिकली 3 विंगर थे भाई, और मडवेके का एक्चुअली लीड्स का 60 मिनट्स का परफॉर्मेंस अच्छा था. वेद इन द हाउस, बिग अप हर्षित, अंकुश, फुरकान. अगेन पॉच, हम बोलते थे भाई बैक इन द एरा, रनियरी एरा, जब चेल्सी में था ना, हम बोलते थे भाई दैट ही इज अ टिंकर मैन, बट कम ऑन, दिस इज समथिंग एल्स ब्रो, दिस इज समथिंग एल्स. Seriously guys, would love to know your comments. Again, I have a few more topics to discuss. आ जाइए सब लोग. अगेन बिग अप टू द फैम जो भी यहाँ पर आए. चिल्ले लेफ्ट विंग अम्मा बहन जाऊंगा. अंकुश, आई डोंट नो अंकुश, वी विल वेट. थोड़ा सा सब्र रखिए. एब्सोल्युटली मुझे लगता है वी आर प्लेइंग कहीं ना कहीं 3 द बैक, क्योंकि इन द फर्स्ट से 55 मिनट्स वी हैड स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस अगेंस्ट लीड्स, लेकिन वो लीड्स थी इन अ कप गेम जहां पर वो आती है आप पर, एंड दैट इज व्हाई यू बेसिकली वांट टू डू दैट. लेकिन Brentford, who have lost 12 and 15, mind you, as much as उनका record against Chelsea is good, they have lost 3 in the trot. ठीक है, तो वहां पर आप 16th in the table हो Brentford,
Come on. Why do you need so many defenders on the pitch? Why do you need Chilwell, Colwill, Gusto, Disasi और Chaloba जब हमारे पास है एक मुड्रिक जो ने गोल स्कोर किया है? Of course we'll talk about the Mudryk versus Sterling वाला डिबेट, प्लस मडवेके जिसका अच्छा अपीयरेंस था और थोड़ा बहुत फिजिकलिटी है भाई. अगर फिजिकलिटी आप चाहते हो ना, मडवेके का फिजिकलिटी है, ऑल्दो ट्रैक बैक इतना नहीं करता जो स्टर्लिंग में भी इश्यू. आई गेट दैट, बट कम ऑन, I don't get it. I hope it's 3 the back, no more Chilwell left wing experiments. I agree. वही होगा in my opinion. कहीं ना कहीं लाइक फॉर लाइक है. While defending, we are 3 the back. While in possession, वो winger बन जाएगा. That's what I'm saying. Mudryk dropped. Why? Gaurav, exactly my question. 3 wingers bench पर बैठकर क्या कर रहे हैं? I don't know. अचार बना रहा है. I have no idea. लेकिन the fact is सॉलिडिटी तो डेफिनेटली है, और मे बी द फैक्ट इज हम काउंटर पे नहीं खाएंगे गोल्स, क्योंकि दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी काइंड ऑफ लूज अगेंस्ट मिड टेबल टीम्स लाइक ब्रेंटफोर्ड. इज ब्रेंटफोर्ड और चेल्सी रियली अ बिग राइवलरी हिस्टोरिकली? वेद हिस्टोरिकली मतलब इन टर्म्स ऑफ राइवलरी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जोग्राफिकली वेस्ट लंदन में बेसिकली 4 ही टीम्स है वेद, और वहां पर बेसिकली ऑब्वियसली इफ यू आर लिविंग इन द एरिया, ऑफ कोर्स आई हैव अ कपल ऑफ फ्रेंड्स वहां पर जो रहते हैं, दे बिलीव दैट नहीं, इट इज डेफिनेटली अ थिंग. और जब ब्रेंटफोर्ड वापस आई थी प्रीमियर लीग में, इट वाज नोन कहीं ना कहीं दैट इट इज गोइंग टू हैपन. मिलवॉल, ब्रेंटफोर्ड, चेल्सी एंड आई थिंक अनदर क्लब इज व्हाट यू आर टॉकिंग प्रॉब्ली. यहाँ पर मुड्रिक शुड बी स्टार्टिंग. ही डिड ग्रेट वाज द लीड एंड ही कुड हैव गेन कॉन्फिडेंस. फेयर पॉइंट. उत्कर्ष का उत्कर्ष का भाई 3 लेटर रिएक्शन इज इनफ. आई थिंक चालोबा राइट सेंटर बैक रहेगा एंड गुस्तो राइट विंग बैक रहेगा. हाँ, probably. I think probably I got it wrong. Thanks for that, Sagar. Confirming. मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया. For last 3 minutes I've been talking about Chalobah being right wing back. लेकिन मेरा point ये है सागर, that मतलब why do you need against Brentford who's not in form? I know desperate है, थोड़ा बहुत अच्छा रिकॉर्ड हमारे साथ, all that, but come on, मतलब we are 11th, हमें चाहिए win, simple as that. और the fact is Brentford खाती है भाई goals भी, तो we should have been a little bit attacking considering हमारे three wingers. I don't know, मतलब I understand if there are 2 wingers on the bench. I don't understand the 3 wingers वाला criteria. Daksh in the house. Daksh, what's up bro? What's up? Monday night के लिए all set. मैं अभी भाई members in the chat भाई, big up मेंबर्स में. प्रेडिक्शन लीग का मैंने डाला था कमेंट इन द मेंबर्स कम्युनिटी पोस्ट, आप लोग चेक कर सकते हो. मेंबर्स स्पेसिफिकली क्विक शाउट आउट है. मेंबर्स आपके पास समय है फॉर नेक्स्ट 1 घंटा, आप डाल सकते हो स्कोर प्रेडिक्शंस. मैं इसलिए याद आया मुझे दक्ष का चैट देकर, क्योंकि भाई वहां पर सर्टेन मेंबर हैज पुट दैट आर्सेनल इज गोइंग टू बीट शेफील्ड यूनाइटेड 7-0 अवे. वाओ, दैट्स समथिंग, बट लेट्स वेट एंड वॉच. वहां पर विल टॉक अबाउट दैट. उत्कर्ष भी बोल रहे 5-3-2 ही है, काइंड ऑफ वही है. 3-2-3-2 बोल सकते हैं, या 3-5-2 बोल सकते हैं. 5-3-2 when in position, not in position बोल सकते हैं. बट हाँ, again I repeat, it is more like Palmer and Jackson will be like your 2 strikers up front, कहीं ना कहीं floating dynamic आप बोल सकते हो, with Enzo, Caicedo और Gallagher being the presser. तो वो it's something which is similar. Chilwell तो left wing back ही खेलेगा, लेकिन यहाँ पर मेरी गलती थी in the last 3-4 minutes. मैंने बोला था that Chalobah, why we need wit from him when it will be him as center back, and of course Gusto as right wing back. My bad, big up to the chat. I think it's back 3 with 5-man midfield to dominate midfield, as Brentford likes to have men in midfield. लेकिन वो चीज हो सकता था even if we had a 4-man defense, in my personal opinion, the menace. क्योंकि आप क्या देखते हो ना, मतलब Palmer anyway roams, तो he has to do a lot of defensive work आज. मतलब I know physicality में नहीं है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ हमने देखा था, that is one of the weaknesses of Palmer for sure. लेकिन come on guys, we know that that was part of the job मतलब in terms of profile आज के लिए against Brentford away, वो तो है ही है. इतना वेस्ट लंदन डार्बी प्लस ब्रेंटफोर्ड फिजिकल प्लस वो डेस्परेट मेजर्स वाला सिचुएशन उनका कंपेयर्ड टू इवन अस, सो दैट्स हाउ बैड दे आर. मानव इन द हाउस, बाय द वे उनके भी काफी इंजरीज है, विल टॉक अबाउट दैट. जनरली फील चेल्सी इज प्लेइंग वेल फ्रॉम पास्ट 5-6 गेम्स, इवन आफ्टर दैट late loss to Liverpool should give Poch time. I feel Wade, big up to you for having some positive thought, although that is debatable for sure. Why no Sanchez? Bhai Sanchez, the reason is because मतलब bench पर है, by the way, he's back on the bench. और Sanchez was signed as a potential number 1, लेकिन केपा के साथ compete करने के लिए किया गया था. हार्दिक तो वो तो outright number 1, और पेट्रोविच हमारी scouting team बहुत believe करी थी, और after what he has done in the cup games, I think Petrovic is a number 1 right now, especially distribution में वो भी एकदम perfect नहीं है, but he makes a
डेफिनेटली इन माय ओपिनियन बेटर सेव्स जनरली और एक ज्यादा श्योर है। शांतन ये स्टार का आई हैव अ लॉट ऑफ टॉपिक्स टू बी डिस्कसिंग, इसलिए हम 1 घंटा पहले आते। वी हैव टू डिस्कस द प्रीमियर लीग इन जनरल, वी हैव टू डिस्कस अदर मैचेस जो भी हो रहे हैं। आई नो लिवरपूल का भी काफी इंपॉर्टेंट मैच है एज वेल एज स्पर्स टू सम एक्सटेंट, लेकिन ऑल्सो न्यूकासल और जो हुआ था कल रात को बायर्न म्यूनिख पीएसजी, कुछ बवाल मचा था भाई। वी विल टॉक अबाउट दैट। एसी मिलान गाइस, डिड एनीवन वॉच लाजियो वर्सेस एसी मिलान? इफ यू मिस दैट भाई, that second half was absolutely bonkers. First half तो भाई कहीं ना कहीं बोर्डम था। सेकंड हाफ एमएमए full flesh to the power of 3 था। Lazio versus AC Milan, of people who know the rivalry, love that भाई। अपने Serie A lovers in the house, big up to you, Harsha as well। You want to play attacking football without playing any wingers, that's the stupidity level of Poch। Forza Barca, यहाँ पर मैं I get your point, लेकिन यह जरूर बोलना चाहूंगा, we did play a lot of attacking football when we used to play certain games, not every game. Say for example Juventus ke against, I remember that game under Tuchel, awesome game we played at Stamford Bridge, I remember, जहां पर कहीं ना कहीं अपने विंग बैक्स, प्योर विंग बैक्स जैसे कर रहे थे, बॉम्बिंग ऑन वाला चीज। तो इट्स अबाउट मेंटालिटी, द गेम प्ले। अगर वो यूज टू है, दे आर इन दैट रोल, एंड फेयर इनफ। लेकिन अगर वो है जस्ट टू काइंड ऑफ सेव द काउंटर, थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच है, देन आई हियर योर पॉइंट एब्सोल्युटली। जैसे मैं लास्ट वीक डिस्कस कर रहा था आई थिंक विद द पैनल दैट इंजागी ही प्लेज दैट फॉर्मेशन, लेकिन अब इतने श्योर हो गए ना बंदे कि भाई आपके विंग बैक्स आर प्लेइंग लाइक विंगर्स ऑलमोस्ट, एंड इवन योर सेंटर बैक्स आर रोमिंग अ लॉट, और वो ज्वाइन करते मिडफील्ड में विद द मिडफील्ड गोइंग इन अटैक। सो दैट हैपेंस, जो हमने देखा था some games under Conte, if you remember a game against Everton 4-0 हमने जीता था। just go and watch the highlights, you'll remember exactly what I'm saying। if you play 3 at the back and wing backs, you can still have attacking football, लेकिन it depends on the other personal or mentality। Chilwell had a Mudryk after such a great performance, बिल्कुल और again Chilwell is the captain, that might be, I don't know, yes, fair enough GK। लेकिन वही ना, हमने खेला है I think last 6.5 days में हमने literally खेला 210 minutes, but Mudryk has not played all the minutes, so I'm a little bit surprised। Sterling भी, in fact one of them too, मैं दोनों नहीं बोल रहा हूँ, और even Madueke, one of them 3 मेरे ख्याल से आज शुरू करना चाहिए था। वाई नो कैसेडो स्टार्टिंग, हाँ ये एक अच्छा पॉइंट है, कैसेडो कुड हैव कम इन, क्योंकि एंजो कैसेडो बहुत है। अगर आप 3 मैन मिडफील्ड एनीवे खेल रहे हो, अगर हम जा रहे हो इन अ 3-5-2 सिस्टम, तो इन दैट केस द थर्ड मैन मिडफील्ड में तो कैसेडो इज गुड इनफ, एज मच एज गैलेगर अपना कचरा भाई, विल लव हिम व्हेन ही डज वेल, अपार्ट फ्रॉम द संडे फाइनल जहां पर वो मिस किया चांसेस। बट वही है, क्योंकि ब्रेंटफोर्ड अवे है, और बाय द वे उसका हाइट है, द मैनेस गुड पॉइंट, क्योंकि कैसेडो हैज एन हाइट और ब्रेंटफोर्ड इज नोन फॉर दैट फॉर श्योर। टॉक अबाउट दैट भाई, इतने मिनट्स हो गए, मैं अभी तक ब्रेंटफोर्ड का लाइनअप नहीं देखा हूं फॉर व्हाटएवर रीजन, चेल्सी पर ही फोकस है, एंड वी विल कम टू अदर गेम्स एंड व्हाट हैपेंड इन द वीकेंड। बट सर्जियो रेगुलॉन इज प्लेइंग ऑन विंग बैक, तो वो एक अच्छा बैटल देखने को मिलेगा। सर्जियो रेगुलॉन डिफेंसिवली थोड़ा ससेप्टेबल है, पीपल नो, स्पेशली टॉटनहम एंड ला लीगा फैंस एज वेल एज मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, लेकिन अटैकिंग वाइज आई थिंक ही इज अंडररेटेड इन माय पर्सनल ओपिनियन। तो देखते हैं क्या होता है। इफ गुस्तो बॉम्ब्स ऑन द राइट विंग, यू शुड बी केयरफुल, एज मच एज वो बहुत अच्छा है गुस्तो कवर फॉर रीज गेम्स फॉर श्योर, लेकिन लास्ट 2 गेम्स से थोड़ा सा लेगी लगा है, तो थका हुआ लगा है, क्योंकि हमारे पास राइट विंग बैक है ही नहीं। तो दैट्स गोना बी इंटरेस्टिंग एज वेल। बट भाई वीसा इज देयर भाई, मैं तो सोचा वीसा इंजर्ड था, बट कोई नहीं, टोनी इज ऑब्वियसली देयर, द गाय जब चेल्सी लिंक हो रही थी इन द लास्ट समर एज वेल एज दिस समर होने वाली है, वी ऑल नो दैट। तो आई थिंक दीज आर 2 men, ऑफ कोर्स उनके भी बेनमी एक्सेट्रा मिसिंग है, सो दैट्स अ बिग डील फॉर देम। ऑफ कोर्स एम्बूमो इज मिसिंग, तो ऐसा नहीं कि चेल्सी के प्लेयर्स मिसिंग है, यस चेल्सी के प्लेयर्स आर बैक, बट अगेन बेंच अगर देखा जाए तो आई वाज एक्सपेक्टिंग आवर बेंच टू बी स्ट्रॉन्गर। आज मिखाइलो मुड्रिक, मडुएके, स्टर्लिंग, कैसेडाई, कुकुरेया, थियागो सिल्वा भाई ऑन द बेंच, तो बहुत स्ट्रॉन्ग है बेंच। अगेन couple of them could have started आज, और थोड़ा सा रोटेशन हो सकता था, बट इट्स अ मस्ट विन। आप देख सकते हो द टेबल ऑन द राइट हैंड साइड गाइज, हाउ इज द जोश वहां पर। मीनवाइल 16th है ब्रेंटफोर्ड, जस्ट सो यू नो। और थोड़ा कमेंट ले लेते हैं क्विकली व्हाइल वी काइंड ऑफ कम बैक टू द टैक्टिक्स एंड अदर मैचेस। चालोबा का ट्रांसफर वैल्यू बढ़ जाए, इसलिए स्टार्ट दिया है, अंकुश तो बोल रहे हैं। इंटरेस्टिंग दैट, व्हाट अ वीकेंड अहेड, एब्सोल्युटली भाई सब लोग let's make a weekend big by getting to 150 likes quickly। first of all, is it a 3-5-2? looks like it at least on paper, लेकिन I hope वो शुरुआत के सीजन में जो किया था with Chilwell playing left wing वो नहीं हो, especially while in defense। ब्रेंटफोर्ड के साथ अपने प्रीवियस मैचेस रिजल्ट अच्छे नहीं है, एग्जैक्टली एक मैच जीता हमने प्रीमियर लीग का बस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आउट ऑफ लाइक समथिंग लाइक 5 सागर, और लास्ट 3 मैचेस में ब्रेंटफोर्ड ने क्लीन शीट रखा है चेल्सी के अगेंस्ट। हैविंग सेड दैट,
मतलब मैंने कल भी दिखाया था इन द प्रीव्यू दैट ब्रेंटफोर्ड आर अ टीम जहां पर उनका डिफेंस इज ससेप्टेबल स्पेशली इन द सेकंड हाफ, तो वी हैव टू बी श्योर। लेकिन इस बार हम थके हुए रहेंगे ज्यादा क्योंकि उन्होंने पहले खेला था और हमने एक डबल मैच खिलाया है, तो वी हैव टू बी केयरफुल बोथ वेज, इधर वेज। आप देख सकते हो फ्रॉम विनिंग पोजीशन दे डू लूज अ लॉट ऑफ पॉइंट्स दो। There's a possibility of Chalobah as a CDM. There's a possibility, Rahul. To be very honest, big up to Rahul for reminding me that when I was lucky enough to meet Chalobah ऑन चेल्सी टीवी, मैंने ऑफलाइन पूछा था, वो चीज एडिट किया गया था भाई, मतलब विच इज ऑफ फेवरेट पोजीशन इफ नॉट बेसिकली द सेंटर बैक, बिकॉज यू कुड प्ले राइट बैक, यू प्ले सीडीएम। तो भाई कहीं ना कहीं उन्होंने हिंट किया था, डायरेक्टली नहीं बोला था, क्योंकि मैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था अबाउट गोल्स एंड दैट वाज फीचर्ड इफ यू ऑल नो, एंड ही डिड मेंशन और हिंट मी दैट बेसिकली ही डजंट माइंड प्लेइंग सीडीएम, लेकिन राइट बैक आई एम नॉट टू वेरी श्योर, बट आज राइट सेंटर बैक खेल रहे, which is what he used to play under Tuchel, where he used to play well, to be very honest to him, ठीक है। बट कोई नहीं, बिल्कुल हाँ, मैड्रिड मैनिया, आंसर इज यस, बिग अप टू यू एज वेल। अभिषेक, इट मस्ट बी दक्ष बोल रहे बेस्ट मेंबर जिन्होंने 7-0 प्रेडिक्ट किया आर्सेनल के लिए, इट मस्ट बी माय इनर फीलिंग, बट आई गेस दिस लाइनअप मे वर्क फॉर अस, वी मे नॉट लुक ग्रेट प्लेइंग थ्री द बैक बट वी गेट रिजल्ट्स, दैट इज द चेल्सी डीएनए। आई डोंट नो, टॉकिंग अबाउट चेल्सी डीएनए भाई, आई नो हमें बात करना है व्हाट हैज हैपेंड लास्ट नाइट, मतलब मे बी थ्री द बैक रिप्रेजेंट्स अस इन अ स्ट्रेंज वे, कॉन्टे, टुकल एंड मतलब एक दो मैचेस में आई रिमेंबर लैम्पार्ड फर्स्ट चिंट बीट मुरिन्यो टॉटनहम के अगेंस्ट इन अ डार्बी, टॉक अबाउट डार्बीज आज का जो है, मतलब ये टुकल का स्टेटमेंट आप लोगों को याद ही होगा। For people who remember, Leo Messi बोल रहा है we need to win if you want to finish 6th position at end of the season. 6th is difficult, but 7th is achievable, absolutely. But we will try. We will be there no matter what. Stuart Little in the house, nice. Bhai Stuart Little, nice name. Is it your real name? Bhai Stuart is the different spelling. I love that movie by the way. बोलना पड़ेगा. Barca forever in the house. Harshit बोल रहा है I'm Poch out. He has not figured out a perfect lineup and a year has passed by. Harshit, लेकिन उस year में टू बी वेरी ऑनेस्ट ही, मतलब अगेन मैं डिफेंड नहीं कर रहा, पॉच डेफिनेटली इज एट फॉल्ट मेजरली अलॉन्ग विद द ओनरशिप एंड डायरेक्टर्स, 100%, 33% देता हूं सब तीनों को, तीनों पार्टीज को, एब्सोल्युटली। बट द रियलिटी इज वी कैन नॉट फॉरगेट दैट उस जो आप बोल रहे हो ना 9 महीने हुए भाई, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा था 9 महीने बेबी इज गुड बी कमिंग आउट पॉच जोक क्रैक करने की कोशिश कर रहा है इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम यहाँ पर तड़प रहे हैं, लेकिन हाँ द फैक्ट इज वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ इंजरीज, और वो फैक्ट था, तो इसलिए कहीं ना कहीं डजंट नो हिज लेवल, मे बी दैट इज व्हाई। राही इन द हाउस, थैंक्स अ लॉट भाई, बिग अप टू यू यार, जो भी लोग देखते हैं हमारे वीडियोस ऑन बोथ द चैनल्स, बिग अप टू यू। देखते हैं, Pogba is finished, Hardik, unfortunately that's a fact, cannot deny that. Where is the width? Width wing backs is what we are hoping, that's the only fact, लेकिन 3 विंगर्स बेंच पर कोई फायदा नहीं है, like I said the match is a classic, लाफ्टर क्लब बोल रहे हैं, yes Brentford away is always a good match to watch, even 0-0 मुझे याद है जो हुआ था in the past, it was a good game भाई, people remember Mendy Malangsar days, absolutely, why no Mudryk, yes, जैसे मैंने बोला wingers so many on the bench, why Mudryk number 10 भी खेल सकता था, this is 5th instance is Mudryk, yeah Mudryk has been dropped, fair point, very fair point, I don't know if you all agree, ये मे बी पॉच इज अंडरमाइनिंग हिम, जैसे लैम्पार्ड ने किया था टू सम एक्सटेंट टुवर्ड्स द एंड ऑफ लास्ट सीजन, इफ यू ऑल रिमेंबर, लेकिन पता नहीं, मतलब आई नो इन द नोज बोलते, घंटा मालूम नहीं होता फिर भी बोलते, बट आई बिलीव एक जनरली ही इज ट्रीटिंग हिम लाइक अ किड who is going to be basically flourishing next season is what I understand from sources, although next season पहुंच ही शायद हो सकता नहीं हो, as much as I would not like to say it right now, I don't know, this is one of the sources which is saying, आप लोग बोलिए whether this is a fact or you don't believe a shit out of it. What do you think about Xabi Alonso? Do you think they should stay at Leverkusen and gain some experience in UCL and then come to Liverpool or Madrid? Very good point, Laughter Club, क्योंकि हम सब बोल रहे Liverpool, Real Madrid, Bayern Munich and even मतलब some wannabes want Chelsea as well, fair point. But the reality is that Bayer Leverkusen का अभी मैनेजर है, और अगर जर्मन फुटबॉल फैंस, वेयर आर यू, आई नो सेरिया पर वापस आएंगे बिकॉज दैट मैच हैज टू बी डिस्कस्ड अलोंग विद पीएसजी का, लेकिन कम ऑन जर्मन फुटबॉल फैंस इन अ वेरी स्ट्रेंज वे, यू वांट बायर लेवरकुसेन जिनका एक हिस्ट्री है टू काइंड ऑफ कम बैक टू वेयर दे बिलोंग, इज व्हाट यू से, तो are we disrespecting that? उनके पास काफी सारे young players हैं with a couple of very experienced guys, so कहीं ना कहीं we are assuming a bit too much, maybe even Amorim के लिए, क्योंकि Sporting Lisbon में वापस से वो history ला रहा है with Sporting Lisbon in Portugal, kind of had say couple of decades earlier, should be an easy win Pramodni, लेकिन वो ये should be could be वाला चीज है। Having said that, yes there are a lot of injuries, that's fair. I think Brentford ने मतलब थॉमस फ्रैंक ने उससे स्टेटमेंट दिया था, although I don't know if he's trying to do a pep
talk about Pep. भाई, how are you ready about the Man City versus Manchester United कल? वहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की काफी इंजरीज है, लेकिन ब्रेंटफोर्ड का मैनेजर ने बोला ही था, कंफर्म किया ही था. Yes, Gaurav, जैसे चैट बोल रही ऑलरेडी, we should have played with back four Mudryk on the pitch. I would have picked either of Mudryk, Madueke or Sterling. तीनों में से कोई भी पिक होता, I would have been okay. As much as Sterling, I know he gets a lot of hate and deservingly at times. What happened to Brentford this season? They were playing so well last season even without Tony. I think Mbeumo, who does a lot of defensive work, और अपना heading ability जो बोलते हैं वहां पर they are very good. Maybe they are missing Mbeumo at the far end, और Tony और Mbeumo साथ में खेले तो भाई अलग ही लगती है वो front line, especially with their crosses. I don't know if you all know, bhai, Brentford are first while Chelsea are 18th on crosses into the penalty area in the Premier League this season. I repeat, Brentford पहले नंबर पर है with respect to crosses into the penalty area despite being 16th in the table, और Chelsea are 18th. That's how bad we are at crossing. Maybe that is why wingback system आया है, but वहां से Chelsea का न्यूज ये भी आया है इंटरेस्टिंगली दैट we might का चीज है, ये एक ऑप्शन दिया है आई बिलीव फॉर पॉच. अच्छा भाई दे, पॉच का हैप्पी बर्थडे यार, मैंने आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल नो पॉच का हैप्पी बर्थडे यार. मतलब आई नो हमारे लिए हैप्पी तो यही होगा अगर वो 3 पॉइंट्स दे दे. आई थिंक इट्स 52nd बर्थडे, और ये क्विक स्टार्ट में दे तो भाई पॉच, आई नो जिंक्स, रिवर्स जिंक्स ट्राई करते इस बार. चलो, पॉच on his birthday has lost 2 games and drawn 1 game. He has not won on his birthday in a Premier League game. Just saying, 3 games में से पॉच ने बेसिकली जीता ही नहीं है भाई प्रीमियर लीग में on his birthday. But happy birthday to Poch यार. I hope he makes it happy for the club and our fans because we don't want to ruin another weekend. लेकिन हाँ, ये एक चीज आया है, अब देखते हैं एंथनी बैरी के बाद में कोई आता है तो कौन आता है. भाई सब लोग जो भी लोग देख रहे हैं भाई, वी आर लाइव फ्रॉम 23 मिनट्स नॉन स्टॉप डिस्कसिंग द लाइनअप, नॉन स्टॉप टॉकिंग अबाउट वेरियस अदर टॉपिक्स, और हम आ रहे हैं वापस से और मैचेस में, लाइक आई सेड द टाइटल रेस एंड अदर लीग्स एज वेल. लेकिन भाई सब लोग कंजूसी नहीं करने का. 150 लाइक्स ज्यादा नहीं मांगते भाई अपन, 150 लाइक्स इज व्हाट वी आर आस्किंग अप अंटिल हाफ टाइम. 150 लाइक्स हो जाए क्विकली. एवरीवन हुज हियर, जिन्होंने लाइक नहीं किया स्ट्रीम को या कम्युनिटी पोस्ट में, बिंदास बोलिए क्यों नहीं किया. जस्ट द प्रेस ऑफ अ बटन, लेट मी नॉट गो राउंड एंड राउंड अबाउट इट. बिग अप टू यू. यहाँ पर दर्श बोल रहा है, आई थिंक दिस लाइनअप इज आल्सो चोजन कीपिंग सेट पीसेस इन माइंड. आई थिंक वही है रीजन, क्योंकि मैंने प्रीव्यू में बोला था कल, आई डोंट नो इफ यू गॉट अ चांस टू वॉच इट, लेकिन I didn't mention that clearly that I would have risked Thiago Silva. I know Thiago Silva is 39, you don't want to risk him. लेकिन considering अभी March break आने वाला है, I think I would have risked Thiago Silva. In my personal opinion, in terms of heading ability on the box, in the box, Thiago Silva का जो presence है और एक just take ability even attacking wise में, it's second to none. Maybe Bardishile is the closest Chelsea football club में, तो मेरे लिए वो बहुत important था. और in my personal opinion, इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव 2 विंगर्स, क्योंकि मेरा आइडिया ये है कि अभी विंग बैक पर क्या होगा ना, अभी 2 विंग बैक्स आर गोइंग टू प्ले एब्सोल्युटली. लेकिन पॉच बॉल जो हम देख रहे थे प्री सीजन में ना, जहां पर पीपल इंटरचेंज पोजीशन सो फ्रीक्वेंटली, वो बहुत कम होता है. तो आई कैन एक्सपेक्ट देम टू एक्चुअली चिलवेल नॉट टू काइंड ऑफ टक इन, चिलवेल जो करता था ड्यूरिंग द एंड ऑफ टुकल रेन, इफ यू ऑल रिमेंबर. तो आई डोंट एक्सपेक्ट दैट टू हैपन मच. तो चिलवेल विल स्टे वाइड एंड गुस्ताव विल स्टे वाइड, लेकिन वी डोंट हैव लाइक विंगर्स. तो the onus on them is more to defend or not let those crosses. When we have 2 wingers, then I would have expected certain defensive work from them, especially for Sterling, who was experienced to do that. यहाँ पर उसको गाली मिली है बहुत. So I think we have double protection if you have a winger plus a fullback rather than just a wing back. So letting those crosses in is the first mistake we make, or फिर why not having a Thiago Silva, and that is why I can see either आप खेलो 3 center backs या आप खेलो with wingers and fullbacks. काफी लोग बोल रहे जोक है भाई, क्या ही तो बोले, बट हाँ, लेट्स हिट दैट लाइक बटन, डेफिनेटली हेल्प्स. भाई वी हैव गॉन बैक टू व्हाट वर्क फॉर चेल्सी, सिंपल एज दैट भाई. आई नो हम सब सरप्राइज्ड एंड आफ्टर अ डिसेंट, नॉट ग्रेट मैच, आफ्टर अ डिसेंट परफॉर्मेंस बाय मुड्रिक एंड Madueke for sure was good in my perspective. मतलब they are dropped to the bench, लेकिन हाँ, it is a league game after all. Ankit, I think Mudryk does not fit in Poch system, but Poch can't say that to the owners as they bought him for a very high price. That is the take आपका है. मतलब again, if that is the case, then in that case आपने इतने सारे लोगों को लोन में जाने क्यों दिया? मतलब मेरा यही पॉइंट. आई नो इंजरीज है, हम भी काफी इंजरी से जूझ रहे हैं. एग्जैक्टली, वी हैव लाइक 7 इंजरीज, आई गेट दैट, बट एट द सेम टाइम आई डोंट नो, लोग बोल रहे भाई जब भी वो स्कोर करता है
पॉज ड्रॉप कर देता उसको. मतलब एट द सेम टाइम मैं बोलूंगा सेकंड हाफ परफॉर्मेंस अगेंस्ट लीड्स वाज नॉट गुड फॉर मुड्रिक, टू बी फेयर टू पॉच टू सम एक्सटेंट, ऑल्दो आई एग्री दैट ही शुड हैव प्लेड. ये आई डोंट नो, मतलब इफ इट्स अ फैक्ट, बट दिस इज अ फैक्ट. इफ दैट्स ट्रू, आई डोंट नॉट गोइंग टू से दैट ही इज बेटर देन ऑल द नेम्स ऑन द स्क्रीन. लेकिन मतलब मुड्रिक का परफॉर्मेंस और इवन स्टर्लिंग, आई नो स्टर्लिंग को गाली देते बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड इन डिफेंस, बिकॉज ऑफ हिज इनकंसिस्टेंसी, क्योंकि वो एक लीडर नहीं है डिस्पाइट बीइंग एक्सपीरियंस्ड, और फिनिशिंग एबिलिटी में भाई ही फिनिशेस ओनली 50% ऑफ द चांसेस एट बेस्ट. लेकिन साथ साथ में जैसे मैंने बोला था कपल ऑफ गेम वीक्स पहले कि भाई जब स्टर्लिंग 2 बार फ्री किक मारता है, वंडर गोल, वहां पर इतना उसको प्रशंसा नहीं मिलता वर्सेस एन एंजो स्कोरिंग दैट. एंड इवन द चेल्सी, मतलब सोशल मीडिया में बोलूंगा, मतलब आई एम जस्ट सेइंग, आई एम नॉट सेइंग स्टर्लिंग इज ग्रेट और मुड्रिक इज ग्रेट. मैं बोल रहा हूँ कि यार कहीं ना कहीं मुड्रिक बिकॉज ऑफ प्राइस टैग, और स्टर्लिंग क्योंकि वो ऑलवेज ही गॉट दैट, क्योंकि उसका एक एक्सपेक्टेशन बार इतना था व्हाइल ही काइंड ऑफ वाज साइन फॉर बिग वेजेस. तो मे बी दैट इज द रीजन, आई डोंट नो. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पॉच देखता बेस्ट ट्रेनिंग में क्या कर रहे हैं, कितने मिस्टेक्स कर रहे हैं, डिफेंसिवली कितना अच्छे है. एंड आई थिंक फेयर पॉइंट ये है, टू बी वेरी ऑनेस्ट टू एवरीवन इन द चैट, जो मुड्रिक नहीं होना बहुत सरप्राइज जाहिर कर रहे हैं. मेरे ख्याल से द फैक्ट इज इफ मुड्रिक इज नॉट देयर, मुझे यही लगता है क्योंकि स्ट्रेंथ वाइज, बॉल रिटेंशन वाइज, विनिंग दो सेकंड बॉल्स में मुड्रिक में थोड़ा सा कम है डिस्पाइट स्पेस, और वो मुझे लगता है माइट बी द रीजन, इफ एट ऑल समथिंग आप सोच सकते हो. बट अगेन एंजो बहुत गेम्स खेला तो काइंड ऑफ फेयर. बारसा फॉरएवर पूछा हु डू यू थिंक द फेवरेट फॉर द टाइटल राइट नाउ. आ जाते हैं थोड़ा बहुत, विल कम बैक टू द टैक्टिक्स, यहां पर थोड़ा बहुत बाकी का बात करना पड़ेगा भाई साहब. मतलब अगेन हमने देखा ही था इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन, लिवरपूल ऑब्वियसली आर इन पोल पोजीशन, नो टू वेज अबाउट इट. ठीक है, आज फॉरेस्ट अवे है, आई थिंक डिस्पाइट द इंजरीज, और अब वापस आ रहे लोग, दे आर गुड. मैन सिटी अब 2 डिफिकल्ट गेम्स थे, बैक टू बैक 1-0 विक्ट्रीज लिए थे. ऑफ कोर्स चेल्सी डिड अलाउ देम टू ड्रॉप पॉइंट्स फाइनली, लेकिन आर्सेनल स्कोरिंग अ लॉट ऑफ गोल्स, या तो भाई बेसिकली यू गेट वन ऑफ दोस रेयर पोर्टो वाले परफॉर्मेंसेस. तो आई थिंक फॉर्म के हिसाब से देखे तो लिवरपूल आर्सेनल एक्चुअली आर्ग्यूबली मतलब कहीं ना कहीं बेटर, बट वी ऑल नो मैन सिटी का पीरियड आ गया, मार्च आ गया. एज मच एज ये भी एक स्टार्ट है गाइस, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल नो इट. कमिंग बैक टू चेल्सी फॉर अ सेकंड व्हाइल वी डिस्कस दिस एज वेल. भाई चेल्सी ने लास्ट टाइम मार्च में लीग मैच हारा था, आई डोंट नो द जिंक्स इट, सॉरी गाइस, लेकिन 2019 में, आफ्टर 2019 वी हैव नॉट लॉस्ट अ लीग मैच. अच्छा ये क्या हो गया, एक सेकंड, आई थिंक माय वीडियो इज अच्छा एक सेकंड दीजिएगा गाइस, आई थिंक माय वीडियो इज अरे यार डोंट टेल मी इट्स गोइंग टू स्टे लाइक दिस. अगेन स्टिक अराउंड गाइस, मैं थोड़ा सा टेक ग्लिच हो गया है, बट आई एम गोइंग टू स्पीक, आई होप आप लोग सुन सकते हो. या थोड़ा सा एक सेकंड ले लेता हूँ. इफ आई स्पीक आई विल बी इन ट्रबल, जेस बोल रहे हैं यहाँ पर. एक सेकंड, लेट मी जस्ट स्टॉप कैम एक सेकंड एंड ट्राई अगेन. दीजिएगा एक सेकंड ना, I'm just restarting my OBS so that वो आए. चलो, I believe it should be fine. नहीं, अरे भाई आजा यार, don't tell me. Screenshot लो quick meme में. Why do you think I removed that screen? एक सेकेंड, अरे यार ये नहीं होना था भाई, आजा आजा. It sometimes happens, I get it back. एक सेकेंड दीजिए भाई, अभी तक आया तो नहीं है. You know what, I'll have to call someone, man, someone needs to help me out. भाई कोई भी कंटेंट क्रिएटर है जो आ सकता है, and then I kind of go out and come back, because if I go out वो stream end हो जाता है. That's how it is. But I believe ऐसा ही है भाई. ये क्या हो रहा है, एक सेकंड दीजिए. If there any is there any content creator who can basically help me out? अगर कोई ऑनलाइन है, any content creator, if they can message me, people who know me by WhatsApp में मैसेज करिए. If you can come just for 2 minutes. अरे भाई दक्ष, बिग अप यार. I think I'll have to go out and come back. दक्ष को मैं भेज रहा हूँ लिंक. OBS यार, seriously, give me a toss. एक सेकंड, we're just coming back to it. Guys, meanwhile, सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बोलिए. We were talking about the title race. What is your prediction? Because मेरे लिए on paper, I know Daksh is joining us, but I believe we might have Arsenal slightly tougher fixtures. वो हम देखेंगे एक सेकंड में. चलो दक्ष, I'm just sending it to you. थैंक्स यार. या नहीं, मैं ट्राई किया कैमरा ऑफ करके. द प्रॉब्लम इज दैट समटाइम्स
I might have to. Yeah, video attack गया. I try that. It kind of comes back. Let me just see if it helps. नहीं तो we'll have to have uh, someone join us, and they'll be leading us आज. चलो दक्ष join. एक second दक्ष. I'll just add my earphones. This is what live shows are all about, guys. Daksh, thanks यार savior. क्या नो हाल है? इश्यूज, What's up? नो इश्यूज। अंकित भाई इसको बस स्क्रीन क्या हो रहा शेयर है को bro? ऐड कर दो। आई टॉक अबाउट दिस जब तक आप जाते हो, अबाउट द लाइनअप, हाँ एंड आई चलो टेक मैं द चैट। इसको आप अपना ओबीएस फिक्स कर लो। ट्राई री इंस्टॉलिंग द सोर्स। मेरे साथ भी कभी कभी यही होता है कि वो हाँ सोर्स को दोबारा इंस्टॉल करना पड़ता है वेबकैम वाली को। तो देख लो अगर हो जाता है तो। Okay, let me just try, but I think you know what it's saying. मतलब if I'm stopping it, या it's saying all streams will be shut down. Are you sure you want to exit? ओ मतलब हुआ पहले भी हुआ है. It happens a couple of times. It's हम्म happened, but उस समय अपने आप ही ठीक हो जाता है if I kind of play around, right? But हम्म let me just try something. कोई नहीं. We'll continue. मतलब till what time are you free, by the way? आई एम, आप जब तक ठीक कर लो बिकॉज उसके बाद आई एम गोना वॉच द गेम्स बाय माय सेल्फ। तो टेक योर टाइम, Fair दैट्स enough. नॉट एन इशू। टेक योर टाइम नो मैटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स। आई विल होल्ड इट डाउन चलो हियर, कोई नो नहीं. प्रॉब्लम। चलो भाई, anyway, let's continue. Hopefully it fixes by itself. I don't think it's fixing by itself आज for whatever reason. But Daksh, इफ यू मतलब वांट टू गो ऑफलाइन एंड ट्राई एंड फिक्स इट, कर सकते हो। अच्छा, I don't need to end the stream and I just need to leave studio, जस्ट right? ट्राई एंड एग्जिट फ्रॉम स्ट्रीम यार्ड, फिर हाँ वो ठीक है. वर्चुअल कैम ऑफ कर लो एंड देन ट्राई टू फिक्स इट उधर। चलो तो I'll just continue. या You carry over. मतलब again you just हाँ discussing title race and all that, so you know what to हाँ, do. नो ठीक है, इश्यूज, नो इश्यूज। ये मैं या हटा रहा हूँ. I think कूल कूल कूल। let's just एक second. Let's या just ये वाला करते हैं. ऑलराइट चैट। ठीक है, रोड चेल्सी आर्सेनल वाला तो टफ वर्क करते रहते हैं। फॉर मी, मैंने आज एक वैसे वीडियो बनाया था अंकित भाई, वो टॉकिंग अबाउट आई थिंक लिवरपूल हैज अ, चलो अंकित भाई चले गए, लिवरपूल हैज अ स्लाइट एडवांटेज आई थिंक इन द टाइटल रेस, बट टुडे आई थिंक इट्स गोना बी, yeah, it's a 5-3-2 versus 5-3-2. You know, if you look at Brentford's lineup as well, they are going for a back five as well. And I think उनके दो स्ट्राइकर्स आगे हैं। तो अगर आप दो स्ट्राइकर्स की बात करो, वीसा एंड टोनी, इट मेक्स सेंस दैट चेल्सी हैज अ बैक फाइव ऑन दैट केस, बट आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द पीपल हु थिंक कि यू नो ये क्यों पॉच खिला रहा है, बिकॉज आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड विद द मुद्रिक पॉइंट। मुद्रिक प्लेड अ ब्रिलियंट रोल इन द एफए कप एंड द नंबर 10 रोल, उसको फिर ड्रॉप कर दिया, राइट? स्टर्लिंग नहीं खिलाया, एंड इट लुक्स लाइक नाउ आई डोंट नो इफ इट्स अ बैक फाइव और worst case scenario it's a Chilwell at left wing, which I'm personally not a fan of. Yeah, five at the back, three at the back, it's sort of like an in possession out possession kind of thing. Yeah, Pranjal, that's the only issue. Even as a Chelsea fan, I'm still backing Arsenal to win the league, says Jess. Are amazing hai Jess. uh, Chilwell and Gusto will go forward, classic Poch. Yeah, the thing is, I think, okay, if I have to take out a very silver lining from this, I will say कि Chilwell जो है, this lineup gives you a lot of versatility in the sense that you can play it as a back five, right? Let's say Brentford are attacking from the wings, from over the top, whatever. It gives you that back five wala security. You can also play a back four in the sense where Gusto and Colville are your left back, right back, and Disasi and Chaloba are your centre backs. Chilwell is your left winger, Palmer is a right winger, Jackson is striker, and आपके तीन तो बीच में आपको पता ही आपके hard working midfielders हैं ही हैं. So in that way, maybe you can also play in that way, a back four, depending on the game state as well. 3-5-2 is really good for Lautaro if Chelsea go for. I don't think Lautaro is going anywhere, Ayush. Last 2-3 seasons, whichever team has won the come on, put then. We know about the Community Shield curse. Don't try to put the wool over my eyes. Can Poch ball work against Thomas Frank? Yeah, this is the thing. Thomas Frank this season has been uncharacteristically, like, Brentford has been underperforming. But Thomas Frank himself is a very good tactician, right? Wow. Yes, it's working. चलो, amazing, amazing. मैं सोचा भाई आज तो कल्याण ही हो गया, बट सीरियसली मैन दक्ष ओपन हो गया भाई, तो चैट सब लोग भाई आज तो स्पेशल. एक बार पहले एक बार क्या हुआ था ना, सुबह सुबह हम वी ऑल टू वॉच अलोंग इंक्लूडिंग यू, राइट?
So basically, during FIFA World Cup, it happened towards the end of a match, and it was almost 3 a.m. in the morning. So I did similarly. Luckily, we had, I think, Fateh or someone joined us then. But big up to you. Nice. What were we discussing? Please continue. Oh no, I was just saying ki, like, if I have to take out a silver lining from this, is that this lineup can be either a back four or back five depending on how the game is going. So that is all I'm saying. Ki, yes, it's disappointing that Mudrik is not playing after putting in a great shift, and yes, there is no Sterling, but you नहीं can वहां make पर this lineup. एक्चुअली दक्ष देखो while I Hmm. know that your point is valid, but the reason Hmm. what I was saying is मतलब for people who looked at the second half ना Mudrik is not a 90-minute guy yet in the Premier League, वो clear है. Hmm. तो मेरे लिए क्योंकि ब्रेंटफोर्ड अवे हैज दैट 1 सेकंड एंड वी काइंड ऑफ टेंड टू लूज दैट गोल. और वही है क्योंकि डिफेंसिवली इन टर्म्स ऑफ फिजिकलिटी में बोल रहा हूँ, नॉट इन टर्म्स ऑफ Hmm. पेस और गेटिंग बैक टू द पोजीशन, Yeah. लेकिन फिजिकलिटी वो बोल रहा हूँ ना. लेकिन मैं वहीं पर डिसएग्री भी कर रहा हूँ पॉच से, क्योंकि वही चीज फिजिकलिटी में मडवेके हैज बेटर फॉर फिजिकलिटी, तो ही कुड Hmm. हैव यूज्ड मडवेके ऑन दैट. मतलब आई डोंट नो व्हाट यू थिंक अबाउट दैट. Yeah, no, 100%. If you feel that he's not match fit or not fit enough to carry 90 minutes, I think there are other options you could have used. Why do you think Sterling was dropped? I don't think Sterling was also okay, to be honest. स्टर्लिंग यार प्रॉब्लम ये है ना, स्टर्लिंग का क्या हुआ है ना, मतलब when he has the motivation he does well absolutely. Hmm. अभी I know it's not a great point, लेकिन with injuries in the England setup, sudden say if he has a great last 3 months, who knows, he might just be in the Euros. तो I think Yeah. he should have that. प्रॉब्लम है कि डिफेंसिव वर्क रेट ना जो हम बोल रहे हैं मुड्रिक का इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी वाइज he has to learn there. Yeah. स्टर्लिंग का Yeah. we know that he has that क्योंकि वो किया है. आपको याद हो तो पॉटर के अंडर वेरी फर्स्ट चैंपियंस लीग गेम he was playing left wing back and he actually Hmm. scored as well in that game. Yeah. So Yeah. was it against Salzburg, was it? हाँ, तो उस गेम में he played that. तो he has that ability, लेकिन वो दिख रहा है कहीं ना कहीं इंटेंट नहीं दिख रहा कि he is going for that ball and fighting for every ball, and that is the red Hmm. flag, right? इसलिए यहाँ पर, लेकिन हाँ as a neutral मैं पूछता हूँ, मतलब you are saying is great. यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, and to be fair to him, Hmm. when Sterling scores those great free kicks, it's very good. लेकिन जब एंजो स्कोर करता है भाई हमारी फैन बेस, यू नो हाउ वी डू. तो एक डिफरेंस तो है, वो तो मैं अग्री Yeah. करता हूँ. वो भी एंजो दो एक बार किया, स्टर्लिंग 2 बार किया है. बट इन Hmm. इन टर्म्स ऑफ मतलब ब्रेंटफोर्ड के इतने सारे इंजरीज यार, मतलब डेफिनेटली यार स्टिल डिफेंसिव इतना नहीं होना चाहिए था इन माय ओपिनियन. और चालोबा बैक टू बैक गेम्स आफ्टर व्हाट 6 months 7 months वो खेला ही नहीं Yeah. यार. I मतलब think दैट्स I think it's a 5-3-2 versus 5. I think Brentford though will try and suck you guys in only and try to score over the counter. तो वही उनका game plan is just one track only. And Brentford on their day when they're defensively right, they can be really good. वो City के against भी only conceded because Ayer slipped. And Ayer was and उसका Haaland was through. Flecken is in good form. तो देखते हैं यार. अब मेरे हिसाब से इट्स लाइक अ 3-5-2 वर्सेस 3-5-2 और अ 5-3-2 वर्सेस 5-3-2 जिस तरह से देख रहे हैं. बट मिडफील्ड कंट्रोल इज व्हाट बोथ टीम्स. इट्स लाइक अ मिरर इमेज ओनली. तो यस. आज इटालियन डार्बी होगी प्रीमियर लीग में. बाय द वे, हैविंग सेड दैट इटालियन, मतलब आई नो 20 minutes left for kick off यार. Daksh, if you have a few minutes, like, did you happen to watch the Lazio versus Milan game last night or highlights? I भाई didn't watch the game, but I've seen there was 3 red cards or what? भाई 11 yellow cards, 3 red cards on the pitch और एक off the pitch. Off Totally the pitch. मतलब Guendouzi got 15 2 year cards. red cards, I think. एब्सोल्युटली क्रेजी. मतलब हाँ, ये Yeah. जरूर बोलूंगा दैट सेकंड रेड कार्ड मेरे लिए थोड़ा सा क्वेश्चनेबल था. लियाओ वाज इन द एयर एंड दिस गाय पुश्ड. मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा हार्श लगा मुझे. बट जनरली स्पीकिंग आई नो लाजियो भाई बहुत, मतलब दे आर गिविंग लाइक ऑल काइंड ऑफ थ्रेट्स टू पुलिसिक क्योंकि लास्ट सेकंड में आई थिंक ही caught hold of if I'm not on Guendouzi, और Guendouzi basically retaliated. ठीक है, वो हुआ था. Having said that, सेम थिंग हैपेंड टू हिम वर्सेस पेलिग्रीनी, जब पेलिग्रीनी को सेकंड यूरो मिला था, व्हिच इज क्वाइट फेयर. बट जनरली बिकॉज यहाँ पर हम विंगर्स की बात करते हैं, मिखाइलो मुड्रिक, मडुवेके, स्टर्लिंग, अगर हमें 3 द बैक खेलना ही था और हमें अभी विट चाहिए ही था, मतलब पुलिसिक यार, मतलब द वे ही इज परफॉर्मिंग, आई नो सीरिया इज डिफरेंट. These kind of guys, don't you think यहाँ पर, I know Arsenal अभी भी वो लोग बोल रहे हैं इंटरेस्ट दिखा रही है मुड्रिक में, but I think these kind of wingers are rare ना आज के गेम में. Do you think that Yeah. in terms of transfers, in terms of letting go players, Pulisic could have been one जो हम रख सकते थे, or you have other names? Yeah. मतलब I think he was probably moved on because more of a motivation thing. I think he also sort of like lost faith in the Chelsea. वो आपके think that summer you signed वो Havertz, टुकल के साथ Werner लड़ाई and हो गई थी उसकी लास्ट में yeah. एक्चुअली.
तो किसके साथ? वो अंकुंगू के साथ? टुकल टुकल टूकल लड़ाई के हो गई थी, साथ, मतलब टुकल was obviously playing him as right wing back and whatnot, तो he gave an interview या Pulisic, वो so ironic है क्योंकि टुकल ही उसको by the way चांसेस दिया था while at Dortmund initially kind of right, लेकिन या अब वही होता है, मतलब even talk about Tuchel, I don't know Bayern यार, I think they are gone, मतलब it's safe to say now Bayer Leverkusen का season. Yeah, uncharacteristically another. By the way, the goals in that game were amazing. Huh? मैंने देखे goals. Musiala का goal was fantastic. Even the Freiburg goals were really really nice. But yeah, I think it's now done. I think Leverkusen will win this weekend. I think हो ही जाएगा. I think that should be that. भाई It's यहाँ crazy. पर आई डोंट नो यू, आई थिंक लास्ट हमने स्ट्रीम किया था साथ में, हमने डिस्कस किया था ब्रीफली, बट आई हैव Hmm. गॉट सम स्टैट्स, सब लोग बोलेंगे भाई कितना तू करेगा टुकल के बैक यहाँ पर देखो, मतलब जस्ट कंपेयर टू लास्ट सीजन, Yeah. जो आप बोल रहे हो ना मुसियाला वाला चीज, अगेन इट कम्स आउट टू इंडिविजुअल क्वालिटी एंड दैट इज व्हाट द क्रिटिसिज्म ऑफ टुकल इज, फेयर इनफ, एंड सर्टेन इंडिविजुअल Hmm. प्लेयर्स आर नॉट मतलब प्लेइंग अप टू द पोटेंशियल बिकॉज दे डोंट बिलीव इन टुकल मे बी, लेकिन Hmm. डोंट यू थिंक that injuries also is a part of it, and the way that Hmm. Tuchel has basically got these numbers tells that at least the fact यार मतलब Hmm. ऐसा नहीं है कि यार he is all at fault, but Yeah. there are things that maybe the players are not doing or recruitment has not got right based on what he was thinking, लेकिन अब तो बहाने भी नहीं चलेंगे, the fact is that इतना individual quality पर आता है, but man management is the only reason, right, मतलब वही लगता है मुझे, I don't tactically what wrong Yeah. is he doing in Bayern. Yeah. I look. I think this के दो points है. One is that even though he won it last year, it was more of a fact that Dortmund slipped at the last hurdle than Bayern actually snatched it from them. Fair So point. right, so it was sort of given to Bayern Munich on the last day. Second thing is with Tuchel, I am a little sympathetic towards him because there were so many transfers that he wanted that fell through. Chalo, he got Harry Kane 100%. He got the man he wanted. He got Dyer for some reason. Now it's extended. But he wanted Palinia as well, and it's very obvious that midfield is one of the areas where Bayern Munich struggle a lot. Attack में तो खैर कर ही रहे हैं, but midfield is one of the reasons. There's a reason they're playing Pavlovic जो है, he's playing for Bayern Munich for a reason, right? I Right. think if he had gotten Palinia, जो last moment deadline day पे fall out हो गया था, I think he Including had Chalobah as well, by the way. क्योंकि yeah. Chalobah, as much as he's not great, squad player के लिए as a someone who has a pace compared to Eric Dyer, वो Chalobah pace is ज्यादा much रखता better than Eric Dyer. I think if he gets Chalobah, he doesn't go for Eric Dyer anyway. है. But मेरे हिसाब से वही, I think there's fingers to be pointed on both sides. I think he has not probably raised the squad to a maximum level, but on at the same time, मेरे को लगता है he also realizes the limitations of the squad, and he was trying to overturn it while new defenders, new attackers, and new midfielders. Trying to get rid of Goretzka and trying to bring in Palhinha. उसको भी दिख रहा है कि एक squad refresh की जरूरत है, because this club as an institution has won what 13, 14, 15 in a row. कहीं ना कहीं आपको तो चेंज करना ही पड़ेगा यार. But देखो यार, अब a manager's job is to get the best out of the players he has, and clearly he's not been able to do it. It's not only against Leverkusen. वो ऐसे randomly points drop कर रहा है. कल Freiburg के against कर दिया. He got eliminated in the Pokal against a third tier team from हाँ, Germany. पोकाल वाला तो I think he was at fault because he was playing people out of position despite basically a couple of them returning. Yeah. पोकाल वाला I definitely agree with you, लेकिन Yeah. वही है, मतलब we used to But say then that he's Tuchel also is a lost, cup I think, manager. Coman he's lost. कोमान एंड गनाब्री एट द सेम टाइम, मैं वही बोल रहा था ना, क्योंकि Yeah. दो विंगर्स आपके एट द सेम टाइम गए हैं, तो देयर सो मच एक्सपेक्टेड ऑफ साने ऑन द विंग्स, और मुलर इज नो लॉन्गर अ Hmm. विंगर, वो एक समय था वो चला गया, ठीक है, और मुसियाला यू वांट हिम एट द फल्क्रम, मतलब वो एवरीथिंग should go through Yeah. him, he should be the Yeah. pass before the goal actually, Yeah. वो एक आइडियल टूकल सिस्टम में करता है, और वहीं पर आई थिंक किमिक ही लाइक्स टू पुट द बॉल ना, और तो वो Yeah. विंगर्स जो भागते हैं ना, इट इज बेस्ट फॉर देम, Yeah. एंड दैट्स नॉट वर्किंग, बिकॉज वो मुसियाला का गेम ही नहीं है, Yeah. और आप हाँ जैसे पीपल लाइक, हाँ ये जरूर बोलूंगा, लाइक टुकल प्लेइंग यंगस्टर्स लाइक Matthias Tel could have got more minutes, those are things that one can say, but I don't know, मतलब as things stand,
आई नो 15 मिनट्स इनटू द गेम मैंने खुद रेज रैंट किया कि भाई मैच डे में मत बात करो, लेकिन अब दक्ष इज हियर तो एंड आज बहुत सारा चीज हो रहा है इन द सोशल मीडिया ऑफ कोर्स, लेकिन चेल्सी ऑब्वियसली लिंक टू नेम्स, यहाँ पर बाकी क्लब भी लिंक टू नेम्स है इन टर्म्स ऑफ मैनेजर्स, बट just in terms of these two managers, what is your opinion generally, not for Chelsea लेकिन generally about Ruben Amorim and De Zerbi, अगर आप बोलोगे in terms of fitment, आप कहाँ देखते हो? Yeah. For Ruben Amorim, I'll be honest, मैंने ज़्यादा नहीं देखा, but I think Tifo and Athletic have done a really good video on Ruben Amorim today. So अगर आपने नहीं देखा, If I किसी can ने, brief quickly, मतलब for people हाँ, in case you have not seen, again even I have just watched the extended highlights more or less, या एक दो matches in Europa. मुझे क्या लगता है ना, the way that he plays, although it's a 3-4-3 system, जो obviously people think that is rocket science, जो चीज हमने देखा है in Chelsea especially in the past, yeah, but the difference is that मतलब in a very strange for people who remember, जब Conte used to play Fabregas and Kante in midfield, yeah, तो it looks like a 3-4-3 but it becomes like a 3-1-6, तो got it. 3-1-6, तो दैट वन गाई जो Hmm. बहुत मतलब क्या नाम है उसका, हुइलर्ड ऐसे कुछ नाम है ना, द वन इन मिडफील्ड, सो दिस Hmm. गाई लिटरली इज लाइक अ वर्क हॉर्स टू द पावर ऑफ 3, ठीक है, तो वो Hmm. एक मतलब कांटे लेवल तो नहीं बोलूंगा ऑब्वियसली, लेकिन मतलब दिस इज You समथिंग need दैट ही somebody who एक्सपेक्ट, works hard in the midfield, करेक्ट, like a और Declan Rice. आज मैंने रीट्वीट किया एक, पीपल कंपेयरिंग ऑलरेडी, लेकिन मैं बोला भाई पहले चैंपियंस लीग को तो जीत जाओ फिर बात करेंगे, एब्सोल्युटली, लेकिन आई हियर यू, फिर भी Yeah. यार एट द एंड ऑफ द डे ही इज आल्सो चेल्सी एकेडमी बॉय, Hmm. बट हाँ, कमिंग बैक टू दैट पॉइंट ना, क्योंकि वो जो सिस्टम होता है ना, दैट काइंड ऑफ वर्क्स व्हेन यू आर प्लेइंग say for the counter, क्योंकि you have your overloading your wings, you're overloading your you know above midfield वाला space, तो उसमें क्या होता है, you are kind of इन पोजीशन जब आप हो ना, तो आप कहीं ना कहीं यू वांट योर पीपल टू ड्रॉप बैक एंड देन योर एंटायर Hmm. फंडा इज गॉन, तो Yeah. स्पोर्टिंग इट वर्क्स, बट आई डोंट थिंक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब टॉप टीम इन प्रीमियर लीग स्पेशली जहां पर लो ब्लॉक के अगेंस्ट आप देखते हो, इट मे नॉट वर्क, इट मे वर्क फॉर ऑल वी नो, ठीक है, लेकिन इट मे नॉट वर्क एज वेल, क्योंकि मैंने उसको देखा नहीं फोर एट द बैक जितना मैंने देखा है, It takes अलोंसो का time. डिफरेंट है, Yeah. अलोंसो इज मोर लाइक इंजागी, आई फील, It takes time and it takes a lot of patience to implement very different systems. चाहे इंजागी का हो, चाहे शापी का हो, चाहे like I'll give you an example. Like Ange came with a very unique set of build-up styles. ठीक है, बड़ा adaptive था. But he lost a couple of players. Injuries हो गई, Madison को, Udogi was absent. अभी Emerson Royal right back खेल रहा है, Porro is injured. Right, बीच में Van de Ven was injured, and that system fell apart. That entire adaptive, progressive, high intensity build-up collapsed. तो ईद चाहे रूबन आमरम हो चाहे डिजर्बी हो, नीदर ऑफ देम आर क्विक फिक्स सॉल्यूशंस, बोथ ऑफ देम विल टेक टाइम, एंड दैट्स मेरे हिसाब से वही डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि इफ यू आर एनीवेज गोइंग टू गिव टाइम टू आमरम और डिजर्बी, is it that bad an idea to maybe let's see where Poch finishes in the FA Cup this season, because he's already reached one final. If he reaches another final, I think with the squad and the atmosphere and whatever it is with the owners and the squad, he's done fairly well, I would say. So if भाई it's आजकल तो मैं स्पेशली लास्ट वन वीक से ना, मतलब दोस्त टाइम सोशल मीडिया वाजंट देयर, दक्ष यू नो, मतलब hmm, हाउ वाज द एटमॉस्फेयर इन स्टैमफोर्ड ब्रिज इन गेम्स जब राफा बेनिटेज केम टू yeah, yeah, स्टैमफोर्ड yeah, ब्रिज, इट इज वर्स देन दैट, मतलब दैट इज हाउ yeah, बैड सोशल मीडिया हैज बिकम yeah, yeah, अगेंस्ट पॉच 100%, अगेन, मैं 100%. फैन नहीं हूं, मैं तो दक्ष आई थिंक वी स्पोक, रिमेंबर समर में हमने बात भी की थी, आई वाज लाइक जूरी इज आउट मेरे लिए, वो वाला सीन है, लेकिन बिकॉज ही डिड सर्टेन थिंग्स इन प्री सीजन, बिकॉज among the people available जो accept कर रहे थे भाई, he was an experienced guy, Yeah. although certain experience guy, I know 10 minutes left for kick off, we're coming to that guys, लेकिन कल रात को एक और चीज हुआ था, PSG जो भी जाता है भाई, टूकल इज इन द कॉन्वर्सेशन, पॉच इज इन द कॉन्वर्सेशन, अब लुइस एनरिके टेकिंग ऑफ एम्बापे, मतलब ऑब्वियसली एम्बापे इज एट फॉल्ट फॉर व्हाट ही डिड, लेकिन Hmm. लुइस एनरिके नॉट यूजिंग हिम इन हाफ ऑफ गेम्स फॉर लास्ट टू Yeah. गेम्स, quite questionable. Uh, like, I think PSG will have to decide what to do. I think if Luis Campos has decided कि हम Enrique को back करेंगे, that's fair. And he's logically what Enrique said makes sense. We'll have to learn how to play without him. He is going anyway, and if he feels that he's not performing, then what what is it? Like, अब तो threat, like all the cards are out on the table, right? अब Mbappe क्या कहेगा, मैं जा रहा हूँ, हाँ सबको पता है वो जा रहा है. So now I think he's just preparing for life after Mbappe. You have to bed in Barcola, you have to bed in Zaire Emery, you have to make them the mainstays of that PSG team. अगर जावी सिमोन्स आएगा, make him the mainstay of that team. तो आगे तो यार निकालने ही पड़ेंगे.
नहीं We'll नहीं, have to move on. लेकिन Yeah. वो ये ना मतलब पहले होता था हमेशा लॉट ऑफ टाइम्स ऑफ कोर्स वो बॉजमैन ट्रांसफर एटसेट्रा आया कि Hmm. पीपल यू न्यू दैट उनका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है एटसेट्रा, यू आर मूविंग अवे, बट स्टिल एक प्रोफेशनल होता था Yeah, yeah, विद yeah. विद मैनेजर्स लाइक टूकर एंड प्लेयर्स लाइक एम्बापे, वो दिख रहा है विद सोशल मीडिया अराउंड, और एक मतलब पीपल गेटिंग मोर पावर एट अ वेरी यंग एज, Yeah. स्पेशली बी मैनेजर्स और प्लेयर्स. समथिंग जस्ट सीम्स ऑफ अबाउट एम्बापे. आई डोंट नो. आई थिंक निधि भाई ने भी यही टेक्स्ट किया था, ट्वीट किया था. आई देयर इज जस्ट समथिंग ऑफ, मैन. Either the guy needs to be in an environment where he's not the biggest dog, and there are other big dogs like maybe Real Madrid, because at PSG उसको तो खुली छूट मिल गई ना, right? Like the prime minister of the country is getting involved in his previous transfers, right? He is being invited to a one-on-one dinner with the head of the country. How is your head not going to stay on earth? Like, how you will be completely on cloud, pata nahi kaun sa, you will be on space, you will think I'm the biggest dog. And fine, किसी और अगर प्रोफेशनलिज्म की हम बात कर रहे हैं, राइट, what Mbappe did yesterday after being taken off going to the stands was not professional at all. So I don't, if you're not going to give professionalism, I don't think the coach owes you anything. I think he will have very thin patience with you. तो निकलना चाहिए. Anyways, अंकित भाई आप कंटिन्यू करो. बिल्कुल Build बिल्कुल, up मैं and यहाँ पर everything. वही कर रहा था भाई. आई एम जस्ट एडिंग ए फॉर आर्सेनल, ऑब्वियसली Thank इमरजेंसी you so much, में guys. आए दक्ष, ऑफ कोर्स यू आर वेलकम ऑलवेज. जैसे मैंने बोलता हूँ, यू नो, everyone, let's hit that like button, but most importantly check out the channels as well, take subscribe button for sure. लेकिन ऑल द बेस्ट यार मंडे के लिए. मैं उस दिन बोल ही Yes. रहा था, मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं चाह की बात करूँ तो आई प्रोबेबली pick, as much as it pains me to say it, लेकिन obviously Man City, Liverpool over an Arsenal, but the reality is that Arsenal are playing well, so credit where is due. Yeah. तो देखते हैं what happens away to Sheffield, and of course we Yeah. get the victory more importantly. और कल मैनचेस्टर डर्बी, भाई क्या लगता है कौन, मतलब सिटी जीत रही है नहीं? Yeah, easy, Ankit. Bhai. I'm holding hope for a United miracle, but I think we all know it's. I'm Yeah. just hoping it's not a damaging win for City, because once they get that big score against a team, na, एक psychological impact पड़ जाता है बाकी competing teams पे. So I'm just hoping if even if City win, it's a narrow win. Yeah, that's my feeling. चलो fair enough. चलो भाई, दक्ष ओपी इन द चलो, चैट हो जाए. दक्ष, see you soon मेरी. see you guys. Best of luck Yep, for the game. and मिलते we हैं. need that big time. चलो, all right. Bye bye. चलो. अनुराग यहाँ पर पूछ रहे विल स्टर्लिंग स्टे नेक्स्ट सीजन. भाई साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ वी हैव टू अफोर्ड, और यहाँ पर आई नो किक ऑफ में 7 मिनट बाकी है, वी आर कमिंग टू द प्रेडिक्शन इन अ मिनट. हम टैक्टिक्स लाइनअप थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी विद अ लॉट ऑफ ट्रांसफर टॉक, बट द मेन ट्रांसफर टॉक ऑब्वियसली विच विल कंटिन्यू ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स ये है कि बाय विच स्ट्राइकर टोनी आज खेल ही रहा है. कहीं ना कहीं वी ऑल नो हिज एबिलिटी, लेकिन अभी 2 ही महीने से खेला है. लेट्स सी हाउ इट डज इन द लास्ट पार्ट ऑफ द सीजन, और बहुत एक्सपेंसिव होने वाला है फॉर चेल्सी स्पेशली. But will they come? That's a big question. लेकिन if you have to afford any of this four, even Victor Boniface or anyone, अगर वो हाँ भी बोलते first of all और फिर afford भी कर सके, then we'll have to sell one asset, and that doesn't mean Sterling might not be that guy. We have to sell an asset, and that might be, for all we know, Gallagher, as much as we don't want to say it, लेकिन that's the truth. अब देखते हैं. Chalobah is playing again. People saying in the chat that maybe उसका transfer value बढ़ाने के लिए, remember Lukaku is still a Chelsea player. Kepa will come back, so hopefully we make enough money to invest, but let's see what it is. Let's see. By again, मैंने कल भी बोला था पुदिन, I don't see the transfer fee coming in big, जो हमने देखा था in Koulibaly's case as well. अब देखते हैं what happens, but let's see. Yeah, Maguire is injured is what I hear for the Manchester derby, if I'm not wrong, जो भी covered yesterday पुनीत इन हाउस. भाई जो भी लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोग सब प्रेडिक्शन दीजिए. टाइम फॉर एक नारा होगा भाई. आज एक भी नारा नहीं लगा है. कम ऑन भाई. चेल्सी 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 चेल्सी. Come on, Chelsea. Come on, Chelsea. It's a West London derby. Plus, we have to try and get to as close to 7th position as possible, because FA Cup अभी भी यार, yes, quarter finals है, लेकिन chances we all know, like कभी single digit percentage chance to win that FA Cup, because there are at least 3 stronger teams in the FA Cup still remaining. Although फुटबॉल है भाई, कुछ भी हो सकता है, जो ब्रेंटफोर्ड ने दिखाया है in the last few years against Chelsea. So let's see how what happens. But in my personal opinion, मैंने बोला था it might be a draw. मेरा prediction सब लोग को याद होगा yesterday's preview show में, as much as I hate saying it. अभी considering that हम खेल रहे हैं 3 at the back, I don't see us conceding 2 goals. लेकिन set piece में मुझे अभी भी डर लग रहा है, because Thiago Silva start नहीं करा, but he's on the bench. So I think we'll be conceding 1 goal. But again, that might come from a cross for all we know. और हम यहाँ पर सेकेंड हाफ में लीड ले लेंगे. तो आज मेरा बेस्ड ऑन द लाइनअप
ऑल्सो थोड़ा नेगेटिव लग रहा है ऑन पेपर, लेकिन बेंच को देखकर आई एम नॉट टू डिससैटिस्फाइड, क्योंकि वी कैन इम्पैक्ट टू द बेंच जो हम दिखाए है, लेट्स बी रियली फेयर रिसेंटली इन अ कपल ऑफ गेम्स. तो भाई देखते हैं if you can continue that. Of course, back to back games में victory और भी important for the morale. Remember, there's a big FA Cup game coming as well, लेकिन उसके बाद एक international break है. So for Poch's job, कहीं ना कहीं you can argue that this is very important, क्योंकि if we are not in the top of the table, for all we know, as much as अभी तक looks like it वो रहेगा job में, maybe just अगर FA Cup game हारता है तो all of a sudden he's gone, which probably I know majority of fan base already मांग रही है. बट आज तो बर्थडे भाई, तो आज करा दे बस. वी हैवंट बीटन ब्रेंटफोर्ड सिंस, यस एग्जैक्टली, लास्ट 3 गेम्स में क्लीन शीट्स है भाई. लास्ट ब्रेंटफोर्ड के क्लीन शीट्स है लास्ट 3 गेम्स में. सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू रेस्पेक्ट. Your favorite match of the season, Chelsea 4-all versus City or 1-all in the Etihad. I think 4-all versus City was something else in my opinion. Again, there were some good games of Liverpool as well, to be very honest. Not the Chelsea-Liverpool game, of course. 3-0 Chelsea, Jackson hat-trick. चलो देखते हैं कितनी लंदन डार्बी प्रीमियर लीग में. गुड क्विज क्वेश्चन. आई थिंक आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ कौन कौन है भाई लंदन टीम्स. ऑब्वियसली वेस्ट लंदन इज अ डार्बी प्रॉपर, तो आज तो प्रॉपर डार्बी है, लेकिन टेक्निकली स्पर्स, वी हैव पैलेस ऑफ कोर्स, वी हैव आर्सेनल ऑफ कोर्स. और कौन सा मिस कर रहा हूं भाई? डिड आई मिस वन मोर टीम? व्हिच क्लब डिड आई मिस यार? Artem Dovvik. Bhai, again, people like Dovvik and Gyökeres are someone who's not itna inexperienced. Lekin, I think problem hai they are not playing in teams jahan par they are having more possession of the ball. That's the only thing against low block as much. So, मेरे लिए managers who play in such teams as well as players who play in such teams, jury is out. सच में बोलूं तो. You rate Enzo performance this season, Laughter Club, he should be doing better, to be very honest about it. Caicedo शुरुआत काफी खराब किया था, Enzo शुरुआत अच्छा किया था. Enzo has probably gone down, Caicedo has come up, and Caicedo in the last couple of games काफी अच्छा किया in my opinion. Cannot really argue with that, can we? नहीं ना. लेकिन come on हो जाए भाई, एक और नारा हो जाए. While couple of minutes are left, wherever we go, we'll follow our team, for we are the Chelsea and we are supreme. भाई आज ब्रेंटफोर्ड ही है, आई नो ब्रेंटफोर्ड से क्या है तो कंपेयर करना, लेकिन you'll never sing that वाला. आई होप सिंग करने का मौका मिले as much as वापस it might fall back on me for all we know. फुलम हाँ पुदिन, अरे भाई फुलम कैसे मिस कर सकते? फुलम इज अ प्रॉपर डार्बी यार. फुलम इज एक्चुअली मेन डार्बी इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, बट यू ऑल नो. भाई सब लोग जो भी लोग चैट में हैं, मैं देख रहा हूँ लाइक्स अभी भी थोड़ी कंजूसी हो रही है. लाइक कर दीजिए, doesn't take a press of button. If you're new to the channel, consider subscribing. Come on, every subscription, and hit the bell icon as well, so that you know what content we put, be it shorter videos as well as live or whatever. Bhai, come on, we're not even 100 likes. Seriously, guys, come on. We can do better. Chelsea fam, bhai, neutral fam. It's always a fan channel for all to see. You can check out our content. Not even joking, but come on, we can do better. Everyone, जो भी यहाँ पर देख रहे हैं, come on, let's hit that like button on the stream as well as the community post, so that people come in and we watch along. Chelsea, 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 Chelsea. Yes, we are shit, but we'll be there no matter what, and I hope players are feeling that way as well. Again, bench आज देखा जाए तो we do have people in the bench, youngsters, लेकिन आज bench में ब्रेंटफोर्ड के ज्यादा youngsters है जी के. अगेन लाफ्टर क्लब, वी डिड कमेंट ऑन दैट ओनली रीजन मुझे लगता है फिजिकलिटी, और वो 90 मिनट प्लेयर नहीं है, सो मे बी इंपैक्ट टू द बेंच है. लेकिन अगेन 3 विंगर्स ऑन द बेंच का फायदा है नहीं. आप देख सकते हो गाइस, 175 लाइक्स ऑन द स्ट्रीम इज व्हाट यू आर एमिंग. अगेन लेफ्ट विंग, देखते क्या होता है व्हेन द मैच स्टार्ट्स. आरटी परमन, आई थिंक ही विल बी प्लेइंग लेफ्ट विंग बैक मोर और लेस, और वो हेल्प करता है इन द विड्थ एज वेल एज डिफेंस. लेकिन आई वुड हैव रादर प्रेफर्ड, क्योंकि क्रॉसेस बहुत है ब्रेंटफोर्ड के, हैविंग 2 बैंक्स ऑफ प्रोटेक्शन विद अ विंगर एंड अ फुल बैक, वो बेटर रहता, क्योंकि वो क्रॉस अलाउ करना, नॉट अलाउ करना इज मेन थिंग व्हेन यू डोंट हैव अ थियागो सिल्वा एंड अ बार्डिशेले एट द बैक स्टार्टिंग. तो मैं अग्री नहीं करता लाइनअप से. आई वुड हैव एक्चुअली गॉन विद 4 एट द बैक, with maybe play one of the wingers, either of Madueke, Mudryk या Sterling, maybe even Madueke, to be honest. हर्षित आपने क्या लिया था भाई चैट? सॉरी यार, अगेन आई माइट हैव मिस्ड इट, लेकिन बिग अप टू यू एज वेल. शाउट आउट दे रहा हूँ, वापस कर दीजिए, नहीं तो यू कैन ऑलवेज सुपर चैट और बिकम मेंबर इफ यू वांट टू प्रायोरिटाइज. अंकित भाई, ये पॉच थोड़ा सा
बुड्री गोल मारता है। मैंने स्टार्ट दिखाया था विनीत, आप मिस कर दिए थे वो। वी स्पोक अबाउट इट हाफ एन आवर अगो। Again, Chirag, big up to you. Whoever's new and who do not know how Almighty Blues came into being, how we came being as a fan. आप चेक कर सकते हो होम पेज पर काफी सारे प्लेलिस्ट है, वहां पर वी स्पीक अबाउट नॉस्टैल्जिया। वहां पर एक है नो योर क्रिएटर, चेक आउट दैट फर्स्ट वीडियो एंड लेट्स speak if you want to ask anything on the DMs. How do you see Chelsea? Tony is a Chelsea striker. I think एक physicality specimen है, वो एक top proper number 9 है, लेकिन he has played with Mbeumo next to him a lot of times. तो can he play with a lone man up front? That is the big question. That is what Chelsea way has been. जो Tuchel ने भी बोला in the recent past, I remember. Again, crosses and headers, we have to be there. Chat prediction हो जाए भाई। मेरा है 2-1 चेल्सी विक्ट्री फ्रॉम द बेंच, और मैं बोल रहा हूं अगेन टचवुड, लेकिन इन माय ओपिनियन कहीं ना कहीं मुझे लगता है इट वाज काइंड ऑफ अनफेयर, एंड आई नो वेरी रेयर है, लेकिन मैं बोल रहा हूं मडवेके विल हैव एन इंपैक्ट ऑन द बेंच, ऑल्दो हो सकता है मे नॉट इवन कम ऑन, तो वन ऑफ द विंगर्स विल हैव एन इंपैक्ट फॉर श्योर। आप लोग भी बोलिएगा फॉर श्योर, लेकिन भाई यहाँ पर मैच शुरू होने वाले, सब लोग ध्यान रखिएगा, we are here no matter what, or let's go Chelsea, 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 come on bhai, come on Chelsea, come on Chelsea. We have to start the game well despite Brentford second half में थोड़ा weak performance देती है। First impressions guys, 15 seconds, Nicholas Jackson trying to hold the ball unsuccessfully. I know Nicholas Jackson को apparently videos दिखा रहा है Pochettino, Chilwell यहाँ पर almost losing the ball, no, लेकिन second ball में he has kind of got it only for Enzo to come and help him out, लेकिन Gallagher should do better, very well done on the other side। कहीं ना कहीं चालोबा आई थिंक इज इंजर्ड, आई होप नॉट, लेकिन निकोलस जैक्सन राइट चैनल में है, उसके पास बॉल गाइस, और प्लेज इन गुस्तो नहीं। आई थिंक देयर डिफेंस डज वेल, रिमेंबर बेन मी इज मिसिंग इन दिस गेम, लेकिन चालोबा प्लेइंग सेंटर हाफ, लीवाई कॉले प्लेइंग लेफ्ट सेंटर हाफ क्लियरली, दिसासी प्लेइंग राइट सेंटर हाफ गाइस। Again, I would have rather liked for the back, but it is what it is. So Chaloba playing center half, not right center back, जो टूकल के अंदर खेलता था, जो बाय द वे लीड्स के अगेंस्ट खेला भी था। मिडफील्ड में काइसेडो और एंजो आर देयर विद गैलेगर प्रेसिंग, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 3-4-3, लेकिन वो 3-4-3 ऐसा नहीं कि वी आर प्लेइंग विद विंगर्स। पामर kind of is a floating forward with Nicholas Jackson up front or Gallagher just in behind. So it's a different kind of a 3-4-3, 3-4-1-2 बोलते हो. That is what Chelsea is playing more or less. Come on, you Blues, come on. 3-0, come on, man. It'll be great. बहुत difficult है. I don't think it's probable, but let's see. कोई नहीं, Rohan, big up to you as well. Chelsea fan is harsh on Jackson. To be honest, उसके numbers अच्छे हैं apart from the goals, conversion percentage from the chances. I think the fact is he's got goals and assists, और chances भी create करता है, dribbles भी करता है, link ups भी करता है, लेकिन the fact is percentage conversions बहुत अभी raw है, and that's the reality of it. और by the way, I know खुद बेंजेमा से कंपेयर किया था, लेकिन बेंजेमा का फैक्ट था भाई in early days, not as much as Jackson, but if you know what I'm saying. पॉच कंटेंट टुगल का चेल्सी अरे भाई राइट साइड में ऑलमोस्ट जैक्सन इज थ्रू, बट नहीं, ब्रेंटफोर्ड जस्ट अबाउट डिफेंड, बेन चिलवेल लेफ्ट बैक था ना, बिल्कुल लेफ्ट विंग बैक ही है, लेकिन यहाँ पर पामर नाइसली ड्रिबलिंग पासेस प्लेयर, अरे रेफरी इडियट, सीरियसली मैन, और यहाँ पर छक्का मार दिया है अपने एंजो, लेकिन कम ऑन मैन, क्लियरली पामर, लेट चैलेंज ऑन पामर एंड रेफरी बटन पहनकर आया शुरुआत से, रेफरी को मौका चाहिए भाई, ही ड्रिबल्ड पास द प्लेयर, डेफिनेटली इट्स अ फाउल गाइस। भाई जो शुरू करते ना 5वीं कक्षा में हम जो फुटबॉल खेलते ना, हमको मालूम है भाई, रेफरी फॉर वंस सरप्राइज मी, रेफरी मैन, I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble, and I don't want to be in big trouble. येलो तो नहीं बोलूंगा मेरे भाई, येलो तो नहीं बोलूंगा, इट वाज अ फाउल क्लियरली, मतलब ही वाज अ बेटर फुटबॉलर इन दैट मोमेंट, वो है भी पामर, और क्लियरली वो चैलेंज ऑटोमेटिकली आ गया, विच इज समथिंग दैट द गाई डिड नॉट इंटेंट, तो इंटेंट नहीं था तो येलो तो नहीं बोलूंगा, बट कम ऑन, एनीवे लेट्स कट दैट, अभी बेटरवेज के पास बॉल है, लेट्स सी हाउ वी गो, कम ऑन चेल्सी अगेन, काफी सारा पिंक बॉल होगा,
जैसे बाय द वे कल दिखा था अगेंस्ट मिलान वर्सेस लाजियो इन द फर्स्ट हाफ. हाई बॉल्स काफी ब्रेंटफोर्ड लाइक दैट, इट सूट्स देम एज मच एज उनके भी कपल ऑफ स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स आर मिसिंग, लेकिन उनका फुटबॉल ही वो बोलता है. Levi Colwill taking throw-ins, guys. Interestingly, not Chilwell. तो looks like Chilwell ज़्यादा attacking role खेल रहा है as a left wing back. It's not a defensive left wing back per se. Levi Colwill taking throw-ins from the left hand side. यहाँ पर नहीं Visa Tony is offside. Yeah, Visa is offside, guys. Prime Ramos or Prime Van Dijk? I think again, I'm a Dutch fan as well, Rakib, if you know. But to be very honest, both of them together, क्योंकि बहुत different footballers है, is the best. I know safe answer मैंने दिया, लेकिन मैं बोलता हूँ Prime John Terry, bro. Prime Maldini. लेकिन in my opinion, I would just about take Ramos. To be fair to Van Dijk, he's also very close, but Ramos को लूंगा just about. Build up from back नहीं कर रहे हैं भाई. मैं तो बोलता हूँ वाइब अलग होती है व्हेन यू हैव समवन हु नोज चेल्सी. आज मैं बोल रहा था भाई, आई नो, पता नहीं, मतलब मैनिफेस्टेशन. आई नो चेल्सी फैंस, मतलब ऑपोजिशन फैंस बोलेंगे मैं डेल्यूडेड हूं, लेकिन राइट नाउ, मतलब इवन लास्ट ईयर मैंने यही चीज बोला था. आई नो डेजा वू, एंचेलोटी इज द आंसर टू आवर प्रॉब्लम्स, लेकिन वो इम्पॉसिबल है. डायरेक्टली मैं बोलता हूँ राइट नाउ, स्पेशली लास्ट ईयर फिर भी थोड़ा सा होप था, इस बार तो एकदम ही नहीं होप नहीं, क्योंकि एंचेलोटी इज द गाय हु नोज चेल्सी, हिज एक्सपीरियंस, मैन मैनेजमेंट सही है, टैक्टिकली सही है. टूकल का मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, पॉच का मैनेजमेंट सही है, लेकिन टैक्टिकली ही इज अ लिटिल बिट टू हेजिटेंट, इतना ब्रेव नहीं है. लेकिन एंचेलोटी इज वन गोट मैनेजर, एब्सोल्युटली. Wow, interesting stat this from Ved. Again, Iniesta से मतलब पहला चीज यही आता है, being a Dutch fan and Chelsea fan, you all know that 2009 and 10 back to back seasons में. लेकिन यहाँ पर Chelsea playing out from the back अभी looks like it. Brentford keeping the shape. उनका mid block आप देखो तो 4 लोग are putting a square. It's not like a typical 3-5-2 in a line. उनके 4 लोग are kind of putting a box. So what happens is double protection in midfield है, one behind the other. I think Tony Kroos has overtaken Cesc Fabregas, मेरे भाई Pudin, as much as हम बोलना चाहेंगे Chelsea fans, obviously, to be fair to him. How would you define Prime Terry in a few words? To be honest, Terry and Lampard are two guys ना जो again lucky enough, मतलब again match चल रहा है, but lucky enough, Shashwata, that हम मतलब some of us have seen them proper मतलब play in that 2000 to 2010 वाला period, decade. मतलब that was like awesome. The connect between them was awesome. लेकिन मैं बोलता हूँ टेरी का, people associate him कि भाई वो last minute challenges, putting your head in the line, flying header in the box, जो कार्डिफ में किया था in the Carling Cup final against Arsenal, and swallowed his tongue, and those kind of captain material kind of elements, ठीक है. और his goals as a defender, दो चीज बहुत underrated. Goals as a defender, the highest defender to score in the Premier League. I'm not counting Ashley Young as a defender क्योंकि आधा career नहीं खेला था as a defender. And his passing distribution ability, left-footed bangers used to मतलब जो diagonal passes होते थे, जो वर्जिल वैन डाइक से हम बोल रहे हैं ना, वर्जिल वैन डाइक is also awesome. Thiago Silva is also underrated in that opinion, in my opinion. लेकिन John Terry was second to none in my opinion. हाँ, playing out from the back में थोड़ा सा I think Rio Ferdinand was better. Apart from that, he was better in all the aspects in my opinion in England. But we'll come back to it. यहाँ पर अरे चालोबा डेंजरस बॉल, लेकिन लकीली वी कीप द बॉल अगेन. ये कैसे कंपैरिजन है भाई, दो अलग प्लेयर्स है जस्ट बिकॉज दे सर्बियंस. नहीं यार, ये अनफेयर भाई हार्दिक. हाँ, समझदार. बट कोई नहीं, लेट्स फोकस ऑन द मैच गाइस, विल टॉक अबाउट दिस ऑफ द एक्टिव मैच. लेकिन कोई नहीं, गुस्तो मेकिंग अ रन इनसाइड, इंटरेस्टिंग, नाइस थ्रू बॉल पामर द्वारा, नहीं पामर को मिला है थ्रू बॉल रादर फ्रॉम गैलेगर. कम ऑन, फार पोस्ट में नहीं, एंजो ने डाला, लेकिन निको ओके, कॉर्नर है गाइस, कॉर्नर है. Enzo got the ball in midfield again, very well put by I believe Gallagher. कचरा ने बॉल डाला था थ्रू बॉल टू अ रनिंग पामर ऑन द विंग, और पामर ने राइट हैंड साइड से कट बैक किया टू एन एंजो इन द बॉक्स. एंजो ने खेला, आई डोंट नो इट वाज अ शॉट और अ क्रॉस और जो भी बोलो, लेकिन निको जैक्सन वाज प्रोबब्ली नॉट देयर, ऑफसाइड होता अगर ट्राई करता भी, लेकिन ब्रेंटफोर्ड क्लियर इट फॉर द कॉर्नर. गैलेगर टेकिंग अ शॉट कॉर्नर, ऑफ कोर्स ब्रेंटफोर्ड बहुत स्ट्रांग इन हेडर, सो आई गेट दैट. यहाँ पर एक शॉट आया है और ग्लांस हेडर, ओ डिड इट हिट द बार और जस्ट ओवर द टॉप. और राहो PECE फुटबॉल, चेक आउट ऑलमाइटी स्पोर्ट्स गेमिंग स्ट्रीम्स ब्रो.
certain teams of opposition where I want them or wanted them at Chelsea. Just to let you know a few names, या इधर उधर से. I think Liverpool में तो there are 2-3 people who know it, OGs of the channel know. Luis Diaz, Gakpo, Gravenberch, these are 3 of the people that I wanted. Barcelona से I always मतलब thought that Araujo का थोड़ा सा चांस है क्योंकि at the end of the day is not Spanish, लेकिन वो है नहीं अभी reality, अब तो और भी नहीं है. तो I have that thing. कोई नहीं, it doesn't matter how much you follow. At the end of the day, it's all about the passion. Do you miss Mason Mount? Answer is yes, Pudin. People might be shocked to say it, and I know मैं उससे खफा भी हूँ, absolutely. लेकिन I know गैलेगर ने किया है बढ़िया बहुत इस सीजन में. But come on यार, मतलब क्या हो सकता था हमारा मिडफील्ड? जस्ट इमेजिन गाइस, अगेन इफ्स एंड बट्स वाला मामला है. हमारा लास्ट सीजन ऑलमोस्ट था ही, वो लोग मोटिवेटेड नहीं थे. यू कैन आर्ग्यू, बट जॉर्जिनो, कोवाचिच, मेसन माउंट, कांटे, आई नो सऊदी लीग है बट वहां पर खेल रहा है अच्छा, टचवुड इंजर्ड नहीं है. क्या ही तो बोले यार, क्या ही तो बोले. क्रॉस हैंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, फार पोस्ट में नहीं, वी मिस्ड अप. व्हाट रबिश यार, 2 लोग ने मिस किया हेडर यार. टोनी लकीली डिड नॉट गेट द शॉट ऑन टारगेट. आई थिंक ही गॉट और क्लियर्ड बाय लीवाई कॉलवेल फॉर अ कॉर्नर. क्या था यार ये? What are Colville and Chilwell doing? First, rubbish defending of a cross yet again. मैंने बोला था, try and block the crosses. Play a winger and a fullback. Double protection of line होता है in terms of blocking the cross का attempt. बिल्कुल मुजाहिद, बिग अप यार. प्रेडिक्शन लीग फॉर मेंबर्स गाइस. यस, मुजाहिद इज डूइंग वेरी वेल. आई मस्ट से मुजाहिद आप काफी अच्छा कर रहे हो. रिमेंबर 15 कम से कम आपके अटेम्प्ट्स चाहिए मेंबर्स. लेकिन एफपीएल का प्राइस भी है गाइस. अगेन couple of people who keep DMing us. FPL I know couple of months से हमने किए, लेकिन we'll come back to it when time permits and health permits, जो हम शुरू कर रहे हैं with other channel Almighty Sports. लेकिन यहाँ पर चेल्सी लूजिंग द बॉल आफ्टर विनिंग इट नहीं. लेफ्ट विंग में आई थिंक चालोबा ने शायद फाउल किया था, बट रेफरी प्लेज ऑन. शॉट आया नहीं, ओ जस्ट वाइड यार. वीसा शॉट भाई. व्हाट इज दिस मैन, व्हाट इज दिस गाइस? ब्रेंटफोर्ड हैव ग्रोन इनटू द गेम ट्रेमेंडसली. बिल्कुल अग्रीड. Gallagher is sub. मैं actually I wanted आज Enzo to be coming on a sub. I wanted him to be rested. मैं देखता Gallagher to be in midfield with Caicedo with one of Sterling, Madueke या Mudryk to play. मेरा ये था with a back four. Falcao Chelsea और Pato Chelsea. Naughty भाई, naughty, काफी naughty भाई राजवीर. Come on. नॉटी. फलकाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड तो नहीं बोलूंगा, लेकिन फलकाउट मोनाको पार्ट 1 और पार्ट 2 वो भी इंटरेस्टिंग है. लेकिन हाँ, हाई बॉल फ्रॉम पेट्रोविच भाई. प्लेइंग फ्रॉम द बैक कम हो रहा है, जो गौरव ने देखा था ऑलरेडी. सेट पीस इज डिफेंडिंग तो सीजन, बिल्कुल इसलिए हम जा रहे हैं सेट पीस कोच के लिए, इज व्हाट आई हियर. पेट्रोविच इज आउटसाइड द बॉक्स. रेफरी साला देगा नहीं, इज नॉट आउटसाइड द बॉक्स. रेफरी ने बोला है हाँ, पैर उसके बाहर थे लेकिन हाथ अंदर थे. यहाँ पर हाई बॉल फ्रॉम द राइट हैंड साइड. गैलेगर देयर. गैलेगर नाइसली कीपिंग द बॉल, बट कैन ही पास फॉरवर्ड? नहीं. गिव्स इट टू पामर. 1-2 मिलता है, लेकिन यहाँ से वापस से पीछे आया टू काइसेडो ऑन मिडफील्ड. नहीं, रेड नहीं होना चाहिए था यार. कम ऑन. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट लाइक अ गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी. सेकेंडली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट थिंक एनी हैंडबॉल इज अ रेड कार्ड भाई. जस्ट यू नो, रूल क्या है ना भाई, मैं बोलता हूँ, वो अगर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी ब्लॉक किया ना तब रेड है डायरेक्टली. अगर यू नो, if I remember right, goalkeeper if he handles the ball outside the D, tab it's a free kick. If it's like not a chance wala moment. Correct me if I'm wrong, people. Higuain and Chelsea, definitely put in just about. Lekin we all know what we're talking. Bhai comparisons चलते रहेंगे भाई. Let's focus. Come on Chelsea, low block भाई कैसे बीट करेंगे हम लोग, इसलिए मे बी इंजो खेल रहा वापस से. मैनचेस्टर डर्बी प्रेडिक्शन मैंने बोला है ऑलरेडी इन द प्रीव्यू. यहाँ पर एक सेकंड लेफ्ट साइड से ओपन अप किया, लेकिन पामर ने टच हेवी कर दिया और गोल किक है. लीवाई कॉलेज का बॉल था. आई थिंक क्लिफर्ड इन द हाउस, लॉन्ग टाइम नो सी मेरे भाई. आई थिंक मैन सिटी इज टेकिंग इट. विक्रांत, लेट्स बी रियल, बहुत सारी इंजरीज है मैनचेस्टर यूनाइटेड के. एज मच एज आई नो आर्सेनल लिवरपूल चाहेगी अदरवाइज, एंड आई नो चेल्सी ने दिखाया था ब्लूप्रिंट हाउ टू प्ले अगेंस्ट सिटी, बट आई डोंट थिंक दे हैव दैट एक्स्ट्रा मैन इन मिडफील्ड दैट दे नीड. बिल्कुल क्लिफर्ड डिड. लेकिन वही ना, है कौन? कैसेडा इज टू यंग मेरे भाई, इज टू यंग. Costa or Carlos Tevez? I think Tevez was a better player, but Costa's attitude any day of the week and every day of the week in term when he was prime year. So as a team man, Costa. लेकिन Tevez as a player on skills, I would go with Tevez.
Again, easier answer, I know, लेकिन वो fact है. That's how we say it. दोनों से partnership would have been lethal, by the way. Just think about it. ब्रेंटफोर्ड के पास आ गया भाई, यहाँ पर ऑन द राइट हैंड साइड. अगेन गाइस, जो भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, लेट्स हिट दैट. वी आर टारगेटिंग कितने 200 लाइक्स फॉर द स्ट्रीम हो जाए. कितने लाइक्स हुआ अभी तक? यहाँ पर चिलवेल गिविंग अ फ्री किक अननेसेसरली, आई बिलीव. एक भाई गलत पॉइंट पर मत दो यार. व्हाई डू वी नीड टू गिव दीज फ्री किक्स अवे भाई, व्हेन ऐसी हम हकते हैं भाई. कोई नहीं आएंगे हमारे भी आएंगे. हैवर्ट्स एक्सपीरियंस फाइनली वर्किंग. आर्टेटा, हार्दिक, again one of the rare people who kind of had a soft corner for Havertz. You all know that even when he left Chelsea. मैं बोला था between Felix and Havertz, मैं actually Havertz को रखता हूँ. People were shocked, लेकिन going by the fee of Felix, but reality is that one of the two रखना था in hindsight. Chelsea so far has been defensively susceptible on crosses as always. Second, third balls में again we have been susceptible, लेकिन again हाफ चांसेस, क्वार्टर चांसेस बेस्ट हुए. थोड़ा बहुत एंजो का एक बॉल था ओवर द टॉप, एक जहां पर एक उसने क्रॉस भी रहा था, कम शॉट, वहां पर कॉर्नर जीता था हमने, बट नॉट रियली मेन चांसेस क्रिएटेड. यहाँ पर इन द बॉक्स अपील आया ब्रेंटफोर्ड द्वारा फॉर द फ्री किक, बट आई डोंट थिंक इट्स अ पेनल्टी. कम ऑन, इट्स अ गोल किक, प्रीटी श्योर. लैम्पार्ड और इनिएस्टा, टू बी ऑनेस्ट डिफरेंट है यार. अगेन पीपल हु अंडरस्टैंड द फुटबॉल ना, मैं यही बोल रहा हूँ. जो लोग टेरी के बारे में पूछ रहे थे ना मुझे फ्यू मिनट्स अगो, I believe the question about Lampard or Iniesta is wrong, in my personal opinion. क्योंकि again, people who have seen their live football throughout their career, ना आप जानते, they had certain ability जो people आप media अलग ही frame कर दिए. Well, Terry was great in defending and Jazba great था and he was the last man standing. But he used to do a lot of ball playing and passing as well, long passing as well, goals as well, which so underrated है. Lampard on the other hand, yes, he's the highest goal scoring midfielder that there could be, but work rate uska, he played as a central midfielder yaar for majority of his career. Iniesta was more like I would say a left attacking midfielder or someone who's a cam, more like a central midfielder. मैं बोलूंगा Lampard was in a very strange way ना. मैं I know बोलोगे Chelsea bias and all that, लेकिन Lampard was also second in the Ballon d'Or यार. तो मैं बोलता हूँ डेफिनेटली मैं जाऊंगा. जस्ट एज अ प्लेयर कंपैरिजन इज अनफेयर क्योंकि टू डिफरेंट रोल्स थे. आई वुड स्टिल गो विद लैम्पार्ड फॉर मी. The reason is because he could do more than in terms of skills, obviously Iniesta, but in terms of the total package, goals है आपको, creativity, again Lampard was very silky, at the same time those tackles, so he could give you a little bit more as a player अगर आप coach हो. Simple as that. एंजो और मेसन माउंट, आई थिंक हाँ यहाँ पर मेसन माउंट हैज नॉट प्रूवन इनफ. आई थिंक आई एम हैप्पी विद एंजो राइट नाउ मुजाहिद, एज मच एज आई मिस मेसन माउंट. मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा. नॉट द वन हु लेफ्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, द वन जो प्राइम चेल्सी में था व्हेन वी वन द चैंपियंस लीग. दैट इज नॉट प्राइम, बट यू नो व्हाट आई मीन. नहीं, ही इज अ कल्ट हीरो. कल्ट हीरो होते हैं भाई जो बेसिकली एक मोमेंट्स प्लेयर होते हैं. मतलब कल्ट हीरो, आई थिंक फ्रैंक लेबफ एक कल्ट हीरो थे, सेंटर बैक ऑफ चेल्सी. ऑल द ओजीज ऑफ द चैनल वुड नो. हम काफी रेट करते हैं फ्रैंक लेबफ को फ्रॉम द पास्ट. देन आई बिलीव राउल मेरेलिस खाली 2 सीजन के लिए था लेकिन कल्ट हीरो बना था. डी मटायो, ही इज नॉट अ लेजेंड बट डेफिनेटली कल्ट हीरो. द फैक्ट इज ही वन अ चैंपियंस लीग एज अ मैनेजर और एज अ प्लेयर एज वेल, वन द कप्स व्हेन हम वापस से एज जस्ट अ क्लब 97 2000 के बीच में हम जीतने लगे थे. अगेन वियाली, दोज आर लाइक कल्ट हीरोज मोर. अलोंसो उस लेवल का नहीं है लेकिन डेफिनेटली है भाई, क्योंकि भाई वो him, Matic scoring those bangers, I cannot forget यार. FA कप में against Spurs. विलियन, विलियन मैं बोलूंगा वो तो एक्चुअली कल्ट हीरो भी नहीं बन पाता. मैं तो बोलता हूँ ही इज मोर लाइक अ अंडररेटेड गाय, सिंपल एज दैट. यहाँ पर नाइस प्ले ऑन द राइट हैंड साइड में चेल्सी भाई, 1-2 काफी हुए. गुस्तो रनिंग अहेड, लेकिन एंजो शायद ऑफसाइड होगा. एंजो ऑफसाइड है भाई. एंजो शुड हैव ट्रैक्ड बैक. कम ऑन, बहुत अच्छा मूवमेंट था राइट हैंड साइड से, जहां पर हमने गोल भी मारा था अगेंस्ट लीड्स, इफ यू ऑल रिमेंबर व्हेन वी मेड दैट कमबैक इन द अर्ली इन द आफ्टर द फर्स्ट गोल. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, काइसेडो, गुस्तो, निकोलस जैक्सन का एक अच्छा ट्रायंगल बन रहा है. आई लाइक इट व्हाट आई सी. डेविड लुइस, बिग शाउट, डेफिनेट कल्ट हीरो, 100% कल्ट हीरो. हाँ, मलूडा, I don't know, man. Maluda, as much as he was there in that, one of the most underrated seasons ever in football, मैं बोलता हूँ 2009-10 Abhishek. But the reality is that Maluda, I will always have. Abhishek knows it exactly. मैं Robin, for me, Robin, Kaka, Terry are my goats. As much as the goats are there, of course, shout outs to the Maradonas or
मेसीज, रोनाल्डोज एंड रोनाल्डिनियोज एंड जिडान जो मैं रेट करता हूँ एज वेल, लेकिन फॉर मी रॉबिन को रिप्लेस किया भाई मलूडा ने, तो मैं उसको नहीं डालूंगा उसमें. Andre Schürrle, yes, I would agree with this. He was definitely a crowd hero, bro, for a while. Biggest mistake of Chelsea, nahi, it has got to be De Bruyne, yaar. Musiala is there. Biggest mistake has to be De Bruyne. There's not a bigger mistake. Salah is close, लेकिन definitely मैं बोलता हूँ De Bruyne. अरे भाई नाइस 1-2 अगेन, लेकिन ऑफसाइड इतने हो रहे यार, दो बंदे ऑफसाइड थे. व्हाट आर वी डूइंग यार? कम ऑन, 3-5-2 में यू गॉट टू होल्ड योर लाइन. भाई पामर एंड जैक्सन कम्युनिकेशन करो भाई थोड़ा सा. बर्ट्रेंड ट्रायोरे नहीं, रमीरेस हाँ डेफिनेट कल्ट हीरो. रमीरेस इज अ कल्ट हीरो. बर्ट्रेंड ट्रायोरे, आई थिंक ही probably meant रायन बर्ट्रेंड बिकॉज उसने खेला था लाइक सर्टेन प्लेयर्स हु प्लेड दोस इंपॉर्टेंट मैचेस. चैंपियंस लीग फाइनल की बात हो रही है. नो, आई डोंट थिंक इट वाज अ कल्ट हीरो ऑन रायन बर्ट्रेंड. लेकिन हाँ रमीरेस डेफिनेटली वाज, नो टू वेज अबाउट इट. Dembaba भाई, obviously 2013-14 लिवरपूल फैंस लुक अवे. और ऑफ कोर्स मैं तो बोलता हूँ पीपल माइट फील इज अ फ्लॉप. आई वुड इवन पुट फर्नांडो टोरेस इन अ कल्ट हीरो. कहीं ना कहीं टीमो वर्नर, फर्नांडो टोरेस वर हेटेड इन द लीग परफॉर्मेंसेस एंड कहीं ना कहीं दे आल्सो डिजर्व दैट, बट इन टर्म्स ऑफ कप दे वर आल्सो क्लोज टू कल्ट हीरोज इन माय ओपिनियन. जो रॉस टर्नबुल, अलग ही कॉन्वर्सेशन चल गया भाई. यहां पर थ्रो इन है, ब्रेंटफोर्ड का थ्रो इन है फ्रॉम देयर राइट हैंड साइड. स्टोक की याद दिला रहा भाई, ये बंदा जो थ्रो कर रहा है, everyone knows Rory Delap, he was a cult hero for Stoke. अरे भाई साहब, Petrovic catching it, second header glanced, लेकिन गुस्तो on the right hand side, better ball खेलना था मेरे भाई. थ्रो इन जीता हमने, लेकिन कम ऑन काफी बुरा खेल रही है पुनीत. हाँ एक दो अच्छे मोमेंट्स आए एट बेस्ट, but nothing beyond that, nothing beyond that. Again guys, जो भी लोग यहाँ पर आए हैं who have not subscribed to our second channel, guys we are just around 300 away from 5k on Almighty Sports. There's a lot of content coming there as well, people, and again it's give and take wala both ways. So big up to जो लोग किए हैं. Check out links in the description again. our panel as well जो जुड़े थे हमें यहाँ पर. विली क्या यारो. Yep, Charlie Adams and whatnot. Rivaldo is a cult hero. भाई Rivaldo तो he was a legend, bro. हाँ लेकिन clubs के लिए yes, I agree, for Barca in my opinion, right? Those moments of Torres and Ramirez in Barca, yes. Barca Chelsea and Liverpool Chelsea ना, अगर आप देखियो those Champions League games, in terms of just एक edge of the thriller moments ना, as much as one sided बोलोगे because of possession at times, लेकिन edge of the box वाले प्रॉपर एज ऑफ द सीट वाले मोमेंट्स हुआ करते थे भाई. आई मिस दोस टाइम्स यार. क्या याद दिला दिया भाई मुजाहिद भाई. आई थिंक दैट एरा बिटवीन 2000, इनफैक्ट मेरा फर्स्ट मैच यार बारसा चेल्सी 2 लेग टाई था. चेक करिए भाई जो लोग चेक नहीं किए. 99-2000 का सीजन था, राउंड ऑफ 16. माय फर्स्ट लाइव चेल्सी चैंपियंस लीग मैच दैट आई वॉच्ड ऑन टीवी. बिफोर दैट आई यूज्ड टू वॉच generally only finals and semi-finals and all that, or of course world cups and all that of course. यहाँ पर काफी पोजीशन रख रही चेल्सी, ट्राइंग टू गेट ब्रेंटफोर्ड आउट ऑफ द स्पेस, लेकिन ब्रेंटफोर्ड शेप भी रख रही साथ साथ में. बट आई डोंट थिंक गैलेगर कैन कीप इट. ही डज कीप इट. पामर वेरी वेल डन भाई, क्या गेम प्ले बाय चेल्सी. वी ऑलमोस्ट डिजर्व अ गोल. राइट हैंड साइड में भाई जैक्सन फ्री है, गुस्तो गेटिंग इनसाइड द बॉक्स नाइसली, लेकिन जैक्सन हक दिया है. नो वे भाई. गाइस पीपल हु आर वाचिंग ऑन टीवी, चेक करिए ये अपना टाइम स्टैम्प है. डू नो स्पॉयलर्स प्लीज. यहां पर हम देख रहे हैं हॉटस्टार में, बिकॉज जनता जनार्दन है हमारी ऑलमाइटी फैम, घंटा गैंग ने बोला था भाई हॉटस्टार फॉलो करिए बिकॉज 90% वहीं पर देख रहे थे. तो दैट इज हाउ इट इज. तो इट विल बी 5 सेकंड्स बिहाइंड बिकॉज ऑफ हॉटस्टार. दैट्स हाउ इट इज. ठीक है, लेकिन जैक्सन फ्लफ्ड इट टोटली एंड दैट इज वन थिंग दैट ही हैज टू लर्न. दैट इज व्हाट अ स्ट्राइकर का डिफरेंस होता है भाई. और हम इतने सारे नाम बात कर रहे हैं, पीपल लाइक रूड वैन निस्टेलरॉय, पीपल लाइक इंजागी, in the box they were a menace yaar. They were a menace absolutely. Jackson is funny. He is, that's the reality. और हम ट्रोल का पात्र बन गए यार. The reality is that. लेकिन यहाँ पर लेफ्ट विंग से कैन वी पुट द बॉल अप हाई एंड रिटेन पोजीशन? नहीं, दैट इज नॉट चेल्सीज गेम भाई. गॉन आर डेज. हमारे पास नहीं है जीरू यार, हमारे पास नहीं है ड्रॉगबा यार. हम क्यों ट्राई करते हैं दैट हाई बॉल भाई. एक सेकंड, और नियर पोस्ट में ऑलमोस्ट वीसा इज देयर. टोनी पुटिंग अ क्रॉस इन. टोनी एंड वीसा का जो लिंक अप है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग people wanting Tony in Chelsea, while is great in hold up play and link up, he is working with a second striker. Remember that. यहां पर Disasi was
very or rather Chalobah was very slow, was it? Colville out of position as well. Absolutely, Colville तो दिखाई नहीं मेरे भाई. Need to change it half time. आप बोल रहे हो प्रणव, पता नहीं अवे गेम है. I would take a 1-0 victory if I'm honest. Again, जो भी लोग यहाँ पर आए, I know there are a lot of people who have not subscribed. Doesn't take a buck. Again, big up to everyone. लेकिन always a fan channel for all to see. Check out all our content भाई. काफी सारे नया content आ रहे हैं. And yes, guys, जो भी लोग देख रहे हैं, एक quick announcement है. We are also looking for a new editor or someone who could make thumbnails. आप बात कर सकते हैं, आप DM कर सकते हैं. हमारे links are always below, open to discuss. Why don't people rate Simeone Inzaghi as a coach? Even as a player, he was decent. As a player, Pippo Inzaghi was better. भाई उसका भाई. Simeone Inzaghi was okayish. I think he played in the Lazio side जहाँ पर Simeone ने खेला था, Diego Simeone as midfielder. But I believe as a coach, first year में लगा था that Conte को replace किया ना, तो Conte वाला vibe था Inter में. That's one of the reasons. But I think he has proven it, and credit where is due for sure. Pulisic or Ziyech cult hero. To be honest, they are Champions League winners, but no, I wouldn't put them in the cult hero section yet. I think Mason Mount, as much as people would say, come on, he left Chelsea and went, he's lost that. लेकिन कहीं ना कहीं उसको मैं for the Champions League run बोलूंगा like a Warner, like a Havertz. लेकिन यहाँ पर नो इन द बॉक्स, अरे भाई पेट्रोविच ने बचा लिया फ्रॉम द बाइसिकल किक फ्रॉम वीसा. वीसा ज्यादा दिख रहा है भाई, वीसा ज्यादा दिख रहा है बॉक्स में. कम ऑन चेल्सी, कम ऑन चेल्सी, वेक अप गाइस. सांप सिंगो यार भाई, मोजे मोजे अपना सूंगो यार, जो भी सूखो. Come on, we were playing some good football in the last 5 minutes. What has happened in the last 2 minutes? Come on, guys. Come on, Chelsea. Bhai, away fans, what are we doing here? Wherever we go, we'll follow our team. For we are the Chelsea and we are supreme as much as we are 10th. Bhai, we will be there. Chelsea till I die. I'm Chelsea till I die. I know I am. I'm sure I am. I'm Chelsea till I die. Come on, Chelsea. Come on, Chelsea. Neil Mope warming up, guys. क्या हो रहा है? कुछ इंजरी लग रही है क्या? Tammy Abraham, not really, although he did very well. I think he was not a mainstay. वो UCL का mainstay नहीं था ना. Ziyech, Tammy Abraham, etc. were not the mainstay. Simple as that. भाई जो भी लोग यहाँ देख रहे हैं, एक सेकंड दीजिए, मैं रिफ्रेश करो स्ट्रीम को. मैं देख रहा हूँ लाइक्स काफी कम हो रहे हैं और आई बिलीव पीपल आर हियर हु वाचिंग बट नॉट सब्सक्राइब. डजंट टेक अ बक. वी टेक एज मेनी कमेंट्स एज पॉसिबल. अगेन यू कैन ऑलवेज सुपर चैट, यू कैन ऑलवेज बेसिकली बिकम अ मेंबर एट द कॉस्ट ऑफ ऑलमोस्ट नथिंग. लेकिन again, always a fan channel for all to see. आप जानते ही हो. Again, mods big up, members big up, all subscribers big up. Inzaghi is a Milan legend, of course, bhai, and of course having a soft corner for Milan big time. यहाँ पर पामर का नाइस बॉल बॉक्स में, बट क्या हो गया? मैं पीछे हो गया क्या सडन से? ये क्या हो गया? अभिषेक मैंने मिस कर दिया क्या आपका? सॉरी मैन. If you can just retype that, मेरे भाई. Multitasking, bro, happens. You know that. Supreme Shestra in the house. I'm seeing a lot of people coming after a long while. यार आ जाया करिए, कभी कभी अच्छा लगता है. Nice to see. Again, Levi Colwill हक दिया है. No, Levi Colwill second time he wins the ball though. लेकिन Brentford have it on the left channel और nice. अपना कचरा गैलेगर हो जा भाई सब लोग. Winning the ball एक बार तो बनता ही. Come on. मैं मरते दम तक किसी के सामने नहीं झुकूंगा. आप लोग मेरा साथ दें या ना दें, मगर कचरा खेलेगा. भाई मैं रिफ्रेश करने के बाद 5 सेकंड और पीछे कैसे हो गया टाइम स्टैम्प से? बट कोई नहीं. आई थिंक इट्स अबाउट हॉटस्टार. सॉरी, या हॉटस्टार से पता नहीं. इब्राहिमोविच कन्विंस्ड कॉन्टे टू टेक मिलान जॉब, विल बी गुड एट एसी मिलान. या वो सुनने में आ रहा है. इन माय पर्सनल ओपिनियन मैंने खुद प्रेडिक्ट किया था, इफ यू रिमेंबर हार्दिक, इन द बिगिनिंग ऑफ सीजन, दैट आई कैन सी दैट हैपन. इटली में बहुत होता है ऐसे, पीपल गोइंग टू द अदर क्लब्स एटसेट्रा. बट ऑनेस्टली they don't have the personnel to play that way, in my personal opinion, क्योंकि वो 3 the back system में और midfield में you need a lot of legs. मतलब as much as Loftus-Cheek का अच्छा सीजन गया, he's not a player जो एक workhorse है. Absolutely. यहाँ पर चिलवेल प्लेइंग टू एंजो, हु प्लेज इट बैक. काइसेडो को मिडफील्ड में, काइसेडो करना चाहता है स्विच, लेकिन अनसक्सेसफुल. बैड बॉल फ्रॉम काइसेडो, गिव्स इट अवे. बट गुस्तो का नाइस प्रेस ओनली टू गिव अ फ्री किक अवे. कम ऑन चेल्सी, कम ऑन चेल्सी. ऑस्कर और माटा भाई, एनी डे ऑफ द वीक माटा ब्रो. आई एम अ ह्यूज माटा फैन. अगेन लेफ्ट फुटेड अटैकर्स का थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा है. If you know Ankit from Almighty Blues. लेकिन ऑस्कर का वर्क रेट एंड ऑफ कोर्स मेसन माउंट, ऑस्कर come in the same category in my opinion. As much as Oscar was better on the ball, absolutely. लेकिन मैं जाऊंगा माटा
Prime Mata was different level in my opinion. कहीं ना कहीं he was calling the shots. Pipo Inzaghi, absolutely. Shevchenko, Inzaghi, Crespo, crazy front line, bro. Milan का क्या ही तो बोले. Why don't Chelsea fans rate 2021 UCL team as much as 2012 UCL winning team? One, because 2012 UCL winning team में those were players who also won us the league and whatnot. काफी सारे cups. तो वो एक difference है. तो they had better mentality. Second, it was the first Champions League जो always भाई part 1 कोई भी मूवी का ज्यादा स्पेशल रहता है as much as part 2 हम देखने जाते हैं. सिंपल सी बात है ना, वैसे ही है. और ऑफ कोर्स जो स्टोरी हुई थी 2012 की वो अलग थी. आई नो यहाँ पर भी टुकल आया था आफ्टर लैम्पार्ड वेंट अवे एंड वी वन दैट, लेकिन टुकल वाज अ बिग नेम इन फुटबॉल. रोबर्टो डी मट्टायो took us to a Champions League final and won us, of course. और हम खेल रहे थे almost like a prime Barcelona in the semi-finals. Napoli एक ट्रेल करते हुए वापस आए. नाइस थ्रू बॉल, कम ऑन, गोल लेने वाला है. नहीं नहीं, कम ऑन, नहीं यार, निकोलस जैक्सन, नाइस रन. लेकिन कहा यार, शिद्दत से मारना यार. लेफ्ट फुट प्रैक्टिस नहीं करता था ट्रेनिंग में. वेरी नाइस थ्रू बॉल यहां पर मिडफील्ड से. अगेन गैलेगर एंड पामर एबन की, आई थिंक एंजो का था, असिस्ट डिजर्व करता था. आई नो गोलकीपर ने फार ले लिया. एंजो का था, आई थिंक कमिंग फ्रॉम गुस्तो टू एंजो, और थ्रू बॉल रन फ्रॉम निकोलस जैक्सन लेफ्ट फुट और कॉर्नर मिला. बट कम ऑन मैन, कम ऑन चेल्सी. ले लिया था मैंने, एक सेकेंड. Disasi takes too much time. I hope he's in the box well now. Gallagher taking the corner, guys. Yes, absolutely agreed with this. अरे यार, डायरेक्ट कॉर्नर लेने का फायदा नहीं है ब्रेंटफोर्ड का. अरे भाई, रेगुलॉन ऑन काउंटर, चिलवेल ओपी हो जा, लेकिन नहीं, पामर भाग यार. डिफेंसिव एलिमेंट ऑफ पामर हमने डिस्कस किया था अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड, लेकिन यहाँ पर बैड बॉल बाय ब्रेंटफोर्ड द लेफ्ट विंग. रेगुलॉन हैज केप्ट द बॉल दो. Rude Hullet, yaar, big up man. Rude Hullet, what a legend, bro. What a legend of football. Rude Hullet, Clarence said off. Why? Again, for people who watch them, some level of footballers. Milan, Chelsea के लिए भाई Rude Hullet तो absolutely. और of course a said off for multiple clubs to be honest, including Milan. होता है यार, होता है. जैक्सन से ही होता है. लेकिन ही वॉज रेडी फॉर दैट रन, वो एंटिसिपेट किया था. वहां पर अगर आप बोलोगे, अगर ब्रोजा बोलते वी कुड हैव केप्ट हिम फ्रॉम लोन एटसेट्रा एज एन ऑप्शन जब इनकम को इंजर्ड है, लेकिन ब्रोजा वो एंटिसिपेट शायद नहीं करता. अब वो लेफ्ट फुट स्ट्राइकर नहीं है जैक्सन, वी नो दैट. अब उसको अगर स्टेप ओवर लेकर जाना ही था वाइड, तो या तो इतना हेवी मत ले, या तो डिंक करना था गोलकीपर को. देयर आर ओनली टू ऑप्शंस दैट ही कुड हैव गॉन विद. बट कोई नहीं, अब तो आदत सी हो गई यार, क्या ही तो बोले. बट पीपल लुक एट दैट, क्योंकि वो बन जाते हैं रील्स. और जैक्सन में अभी भी बोलता हूँ इज अ डेफिनेट नहीं. फर्नांडो टोरेस मोमेंट तो नहीं बोलूंगा पुतिन, इट वाजंट एज बैड एज मच एज फर्नांडो टोरेस. मैं खुद फैन था, बट आई नो व्हाट मोमेंट यू आर टॉकिंग अबाउट. इट वाजंट एज बैड इन माय ओपिनियन. गोलकीपर डिड वेल कहीं ना कहीं टू फॉर हिम टू काइंड ऑफ गो लिटिल बिट वाइडर देन यूजुअल, लेकिन वही स्ट्राइक बहुत ही बुरा था, विच ही शुड बी बेटर एट डिस्पाइट बीइंग राइट फुटेड. जैक्सन कितना बेकार. जैक्सन के लिए गालियां कितनी आ रही है भाई. जैक्सन डिडंट डिजर्व टू बी स्टार्ट इन अ टीम लाइक चेल्सी. हाउ मेनी चांसेस ही मिस सो फार. यस, लेकिन प्रणव, अगेन जैक्सन नहीं खेलता है. चेल्सी फैंस नो एग्जैक्टली देयर इज समथिंग मिसिंग द गेम प्ले. हाँ, वी कुड गो विद अ बेटर स्ट्राइकर अगर ट्रांसफर मार्केट में हम जाते हैं पहले ही, लेकिन अब आ गया है तो भाई इन दिस मोमेंट इन टाइम जैक्सन 11 में होना चाहिए. वन वुड एक्सपेक्ट प्लेयर्स प्लेइंग ऑन टॉप लेवल टू हैव अ डिसेंट शॉट एबिलिटी इवन ऑन वीक फुट. बिल्कुल, मैं बोलता हूँ काफी लोग क्लिफर्ड जैक्सन, ऑफ कोर्स बीइंग स्ट्राइकर आप एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखते हो, लेकिन इवन एंजो फर्नांडिस, विद ऑल डू रिस्पेक्ट, इज अ ग्रेट फुटबॉलर, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू इंप्रूव ऑन, एंड दैट्स वन ऑफ द थिंग्स मैं बोल रहा हूँ. गैलेगर आपने देखा ही था इन द कैरेबो कप फाइनल भाई, लेफ्ट फुटेड स्ट्राइक, आई डोंट थिंक दे प्रैक्टिस इनफ. अगेन मैच डे में करना एक अलग चीज होती है. यूनाइटेड टॉप 4 में आएगा, आई डोंट थिंक सो. मार्को रॉयस, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगेन इंजरीज हैवंट हेल्प्ड, आई नो दैट. टैप इन तो नहीं बोलूंगा यार, टैप इन नहीं था मेरा गाइस. इट वाजंट अ टैप इन. द गोलकीपर केम आउट एंड टुक हिम वाइड, बट ही शुड हैव डेफिनेटली स्ट्रक द बॉल फार मोर स्ट्रॉन्गर. Would you consider Antonio Conte a Chelsea legend? भाई anyone who wins the Premier League for Chelsea, मैं तो बोलता हूँ हाँ, लेकिन टॉटनहम जाकर क्यों किया भाई, मैं बोलता हूँ वही क्वेश्चन मार्क है. सिंपल. मैं रेट है मैन. आई एम एन एंटोनियो कॉन्टे फैन एज अ मैनेजर टू बी ऑनेस्ट. मुझे लगता है माइक्रो मैनेजमेंट समटाइम्स वर्क इन बिग टीम, नॉट ऑल, लेकिन चेल्सी में वर्क किया था. फर्स्ट टाइम राइट फुट शॉट लेना था, सौरभ बोल रहा. हाँ, अगेन या तो आप राइट फुट शॉट, आई एम नॉट श्योर सौरभ, ही शुड हैव डिंक्ड इट फ्रॉम द राइट फुट. डिंक करके शॉट लेना था. आई डोंट थिंक राइट फुट शॉट वुड हैव बीन अ गोल, लेकिन शॉट ऑन टारगेट डेफिनेटली होता. अगेन we'll have to look back, but यहाँ पर लेफ्ट विंग में अगेन he had space, लेकिन गोल किक है. I don't think he's reached the ball.
Come on Chelsea भाई, don't give up. Away fans keep singing guys. Again I know very difficult. अभी यार सब लोग की जरूरत है भाई. Chelsea fan base, as much as negativity मुझे खुद भी होती है, but the reality is when your club needs you is when you know they need you. Simple as that. तो तब रहा करिए. As much as you know you can criticize before and after the match. Like during the match, let's support, especially anyone by chance आप लोग सुन रहे हो भाई from GTech Community Stadium. Come on. We need to definitely raise our voices, क्योंकि हम अगर by chance वापस से लड़खड़ा गए ना वापस से लीग में, which is quite possible knowing Chelsea this season, तो भाई लास्ट सीजन वाले वाइब्स आ रहे हैं. We all know that as much as Leicester है in the FA Cup in the quarter final. अगेन वो एनर्जी, एग्जैक्टली टूकल कॉन्टे का जो एनर्जी है ना, वो एक इन्फेक्शियस एनर्जी है. मतलब आई एम दैट मैन यार. कहीं ना कहीं अगेन 200 लाइक्स तो कम से कम चाहिए, लेकिन आई होप एवरीवन इज सब्सक्राइब्ड एज वेल टू बोथ आवर चैनल्स, नॉट जस्ट वन. चेक करिएगा and give us feedback. Again I repeat, we are looking for an editor and a thumbnail maker again, so if anyone is interested please DM us below. आप हम बात कर सकते हैं for sure. Some managers are highly result oriented, leaving aside specific style or tactic, Conte, Jose, etc. एक second, come on, it is Nicholas Jackson in bolty band. Nicholas Jackson with a bolty band. Chelsea, 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 Chelsea. Come on, Chelsea. Come on, Chelsea. Come on, Chelsea. Nicholas Jackson, he knows how to score. Nicholas Jackson, he knows how to score. Arey bhai sahab, when it matters, he has stood up for once again. Or what a cross. Malo gusto OP ho ja bhai. Pinpoint cross from the right hand side between two defenders of Brentford who remind me of Stoke from the old days. Jackson leaps far corner for the goalkeeper on the right hand side. Boom, goal. Get in, man. Get in, Chelsea. Get in, Chelsea. Malo Gusto और वापस से भाई Jackson. Come on, man. Jackson. भाई Jackson should be in the starting 11. अभी बोला था. But again, you all know the answer. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. एक तो पता नहीं क्या होता है, जैसी गोल मारते एक चांस कंसीड करना ही चेल्सी का. दैट हैपेंस विद द यंग टीम. वीसा ऑलमोस्ट स्कोर्ड भाई विद द किक ऑफ अगेन, लेकिन ही वाज क्लियरली फाउल्ड. चालोबा वाज क्लियरली फाउल्ड. अभी बेटर है ना पुदिन. थोड़ा ज्यादा चिल्ला दिया था यार गोल पे, बट कोई नहीं. आई होप आवाज आ रहा था ना. That's important. मैं भाई बाय द वे अभी है ना बहुत इत्तू सा खुशी जो मिलता है ना चेल्सी फैंस स्पेशली के लिए, इवन टू सम एक्सटेंट मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस भी जानते रिसेंटली इन द सेम बोट मैं बोलता हूँ काफी. तो हम लोग को जो थोड़ा बहुत खुशी मिलती है ना, सेलिब्रेट गाइस, इट्स ओके, सेलिब्रेट. मैं वापस से बहुत नेगेटिव सोशल मीडिया हो रही है. एक रिक्वेस्ट है भाई, जो भी लोग देख रहे हैं भाई, स्पेशली अगर आपकी टीम बुरा करती है ना, आई नो यू हैव टू प्रूव अगेन सो मच, लेकिन यू नो व्हाट वी आर. Carefree, wherever we may be, we are the famous CFC. We are the famous CFC, and we will be back, guys. लेकिन अभी के लिए टाइम लगेगा और थोड़ा सा सफर जो कॉन्टे ने बोला ही था. लेकिन कोई नहीं, जितना भी ज्यादा सफर नहीं करेंगे, लेकिन कॉन्टे को थोड़ा सा दे देते हैं भाई. ये एक 3 द बैक सिस्टम इज वर्किंग थैंक्स टू कॉन्टे. वो वापस से रीस्टार्ट किया था चेल्सी में. Expectation to suffer. Yeah, I have this sensation and पेनल्टी यार, कम ऑन. सॉरी गाइस, पेनल्टी होना चाहिए था. गैलेगर क्लियरली फाउल्ड इन द बॉक्स. व्हाट रबिश यार, सीरियसली गाइस. द रेफरी, अगर एक सेकंड देख रहा हूं मैं. नहीं, आई नो व्हाट, पेनल्टी नहीं था. गैलेगर गेट्स बुक्ड. इनफैक्ट भाई रियल टाइम में देखना और रिप्ले में देखना एक चीज होता है. फॉर वंस मैं अपना हाथ खड़ा कर रहा हूं, मैंने गलत बोला. आई थिंक इट वाज नॉट अ पेनल्टी. आई एग्री विद द रेफरी. और येलो कार्ड था. फेयर पॉइंट. फॉर वंस रेफरी गॉट इट राइट ब्रो, फर्स्ट टाइम. हाँ, रेफरीज ओपी, एब्सोल्युटली रेफरीज का बुरा है, स्पेशली इतने बारिश में और भी बुरा हो जाता है मामला इन टर्म्स ऑफ हाउ टू रेफरी इन लंदन डार्बी. बट द रियलिटी इज दैट अगेन ऑपोजिशन फैंस बोल सकते कुछ भी, एंड आई नो फेयर पॉइंट एब्सोल्युटली, लेकिन 50-50 डिसीजंस इतने सारे चेल्सी के अगेंस्ट क्यों जाते हैं. मतलब आई नो वो रीजन नहीं है जिसके कारण हम 11th है, आई नो दैट, लेकिन कम ऑन मैन, इफ आई स्पीक आई विल बी इन ट्रबल.
अब हाँ, ये वाला डेफिनेटली पेनल्टी नहीं था एंड इट वाज द राइट डिसीजन दो, एज मच एज थॉमस फ्रैंक चबा रहा है आराम से। स्ट्रीम इज लैगिंग, मैं वापस से रीस्टार्ट कर देता हूँ भाई। क्या होता है ना कभी कभी, एक सेकेंड गाइस, अगेन जो भी लोग देख रहे हैं हिट दैट लाइक बटन, जो भी देख रहे हैं डू नॉट फॉरगेट वी आर ऑलवेज अ फैन चैनल फॉर ऑल सी। आई बिलीव नहीं, मेरा इंटरनेट तो एब्सोल्युटली फाइन है, आई डोंट थिंक इट्स लैगिंग, इज इट लैगिंग? एक सेकेंड, थोड़ा सा ये विंडोज बंद कर रहा हूँ सो दैट मेकिंग श्योर। मनाज इन द हाउस, क्या हाल है मनाज? बिग चांस फॉर यू टू गो अप द लैडर यार आफ्टर द मैनचेस्टर डर्बी इन द टेबल आर्सेनल फैंस। बेटर है गाइस अभी आई बिलीव, हाँ 1-2 सेकंड्स के लिए होता है कभी कभी यार। अगेन इट इज इंटरनेट ब्रो, समटाइम्स व्हाट हैपेंस, समटाइम्स नॉट ऑल द टाइम दो। डू यू मिस कोटवा एंड बेगोचे? नहीं, कोटवा को मिस नहीं करता हूँ मेरे भाई, एज मच एज क्वालिटी में डेफिनेटली मिस करता हूँ, लेकिन आई डोंट मिस पीपल हु डू नॉट मिस चेल्सी ब्रो, लेट्स बी रियल, दैट्स द रियलिटी। बट आई थिंक Begovic probably in that season proved that he was never a man जो we hoped कि he will be as a second goalkeeper. 2016 season no one can forget ना, जब कोटवा injured था, for people forget, जब हम 10th आए थे। कोटवा के लिए आंसर इज नो, he is a quality goalkeeper but what he did to Chelsea in the last year of the transfer window is not acceptable, simple as that. Gusto has been insane, बिल्कुल with it 100% agreed. Cassidy for Gallagher, गौरव क्यों 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 क्यों? बात करेंगे हाफ टाइम में, बने रहना। लेकिन गाइस हैव मिस्ड द फर्स्ट 40 मिनट्स। ऑफ कोर्स यहां पर थ्रू बॉल, एक सेकंड, एंजो का थ्रू बॉल, लेफ्ट फुट स्ट्राइक, वापस से हाफ चांस, यू कैन आर्ग्यू निकोलस जैक्सन का, बट नो भाई। अभी आई होप इट्स फाइन, आई होप द स्ट्रीम इज बैक, आई नो इट वाज लैगिंग फॉर बाय जस्ट अ कपल ऑफ सेकंड्स, लेकिन बिग अप टू क्लिफर्ड भाई, क्लिफर्ड ने गिफ्ट किया मेंबरशिप, ऑफ कोर्स बिग अप टू ऑल द मेंबर्स, मॉड्स एंड सब्सक्राइबर्स। लेकिन जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए, do consider subscribing to both our channels, always a fan channel for all to see. We should be minimum close to 12k and 5k on both the channels, that is this 112k और वो वाला वो, but otherwise feel free to DM us. Gallagher का name is good, if he isn't yellow he can't be aggressive game, okay मैं बोला name is good, ये क्या हो रहा है? Is it a free kick? No, दिसासी जंप किया लेकिन रेफरी सेज प्ले ऑन। कौन बना यार मेंबर, न्यू मेंबर, प्लीज डीएम अस, वी विल ऐड यू टू आवर सोशल मीडिया ग्रुप्स, वहां पर भी फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज। नाइसली डन, चालोबा ओपी इन द चैट हो जाए यार, स्टेप ओवर नाइसली, स्टेपिंग इन मिडफील्ड, चालोबा क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, अरे यार लेफ्ट विंग नहीं देना था, बट कोई नहीं। अरे गैलेगर के पास आया, रिबाउंड डिडंट फॉल टू अ चेल्सी प्लेयर, गैलेगर विंस द बॉल येट अगेन, कचरा ओपी हो जा भाई, गैलर डॉग ओपी हो जा भाई, नाइसली वन द बॉल सेकंड टाइम यहां पर, लेकिन मिडफील्ड में वापस क्यों डाला यार, वहीं पर वी नीड टू लुक फॉर अ फॉरवर्ड पास, कम ऑन। कौन बना है मेंबर यार, नया मेंबर कौन बने, लेट मी नो। अगेन बिग अप टू क्लिफर्ड, ओवर द टॉप पास बाय एंजो, गैलेगर नहीं, कॉर्नर है नहीं। Thank you, and again congratulations for becoming member. Any new member, please DM us. How can you DM us? Bottom line of the description में हमारे contact information है on Twitter और Instagram. We will add you to the social media groups for activities in the future, as well as there is a member prediction league जिसके लिए प्राइस है guys. People who want to become members at literally no cost अभी के लिए, there's a offer going on. तो भाई अभी भी आप एंटर कर सकते हो for a member prediction league. Winner will get a prize which is promised like last year. वेयर मानव विनर थे, और एफपीएल विनर के लिए भी प्राइज है। एफपीएल लीग कोड मैंने डाला है शायद डिस्क्रिप्शन में, एक सेकंड, यहाँ कॉर्नर आया है, क्रॉस वापस से, लेकिन नहीं यार, ब्रेंटफोर्ड बहुत ही स्ट्रांग है ऑन हेडर्स, बहुत ही स्ट्रांग इन हेडर्स। लेफ्ट विंग में विकी पोजीशन, गुस्तो ऑन द लेफ्ट विंग दो दिस टाइम, गैलेगर को मिला है बॉल, विली प्लेम, गुस्तो अगेन नहीं, एंजो को दिया है, एंजो किसको मार रहा है यार, डायरेक्टली ब्रेंटफोर्ड प्लेयर को मार रहा है, कम ऑन, should do better with that, far post में स्विच करना चाहिए था in my opinion, come on, will Arsenal come back in the second leg? Yes, I think they will. By the way, yes, UCL stream is on guys, Monday or Tuesday, check local listings by hitting the bell icon. यहाँ पर nicely done by
Moses Caicedo. By the way, 2 महीने के परफॉर्मेंस के लिए मोजेस काइसेडो को अपना बेसिकली सॉरी है, क्योंकि मैंने उसको बाकायोको पार्ट 2 बोल दिया था गुस्से में एक बार इन द एंड ऑफ December, but I think last 2 months he's been sensational in my opinion, as much as Chelsea huggy at times. But we have been generally better because Caicedo in midfield is doing what he's supposed to do. Enzo Fernandez though should be better. यहाँ पर lose कर दिया possession, but he gets it back again. Moses Caicedo clearly fouled. रेफरी आया है बटन पहनकर, क्लियरली फाउल, लेट चैलेंज ऑन मोजेस काइसेडो. रेफरी कुछ कर भाई, कुछ कर. Member prediction league, Arit, you have to become a member. I think there are various levels. You can become a member, if I'm not wrong, at around 29 rupees as well, if I'm not wrong. But आप check कर सकते हो. There are other various perks along with that. Or like I said, अगर आप member बनते हो, then you DM us. FPL code इस description में नहीं है, लेकिन आप you check out our previous descriptions. We generally in the preview streams. कल मैंने stream किया था. कल हमने किया था definitely, right, with the panel in the house. आप वो stream check करिए. कल का stream है. ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा. उसी स्ट्रीम के डिस्क्रिप्शन में पहले ही लाइन में FPL कोड भी है. लेकिन हाँ, अभी लेट हो गया उसके लिए, लेकिन यू कैन स्टिल जॉइन एंड हैव फन. अगेन, नॉट फॉलोइंग इट फ्रॉम द लास्ट 1 month, बट वी ऑलवेज ट्राई एंड फॉलो इट एज मच एज पॉसिबल. और प्राइज है फॉर द विनर फॉर देम टू winners. Was Mendy a 1 season wonder? Edward Mendy, yes. There were issues ना उसके गेम प्ले में. परफेक्ट गोलकीपर नहीं था, टू बी ऑनेस्ट. भाई क्यों देगा यार, क्यों देगा? यू ऑल नो इफ आई स्पीक आई विल बी इन ट्रबल. लेकिन कोई नहीं, चेल्सी 1-0, तो इतना भी चिक चिक मत कर यार अंकित, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जा. एज मच एज चेल्सी फैन ऑलरेडी नेगेटिव है. लेकिन गैलेगर रखता है पोजीशन इन मिडफील्ड. काइसेडो एज वेल गिव्स इट टू कॉलविल. Guys, again, 3 at the back is a Chelsea style, you can almost say, coming to half-time close. मतलब Chalobah, he's been there, done that. Won the Super Cup, won the Club World Cup. कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो he was there, और वो crucial है in playing in the system. Maybe in Thiago Silva in second half can come on, क्योंकि Chalobah has not, remember, completed games or played many games this season already. तो हो सकता है that might be a like for like replacement. लेकिन मुझे लगता है very strangely enough that it kind of works, क्योंकि वो 3-4-1-2 खेल रहे हैं. उससे क्या होता है ना, we can have एक extra man in attack as well as an extra man in midfield with Gallagher being around. And हाँ exactly, तो Gallagher does his winning the ball वाला work, और काइसेडो भी कर रहा है आजकल. By the way, Palmer taking the ball on the right hand side, clearly Palmer load किया गया यार by Brentford players. I don't think he was fouled for a penalty. बिल्कुल जेस, एब्सोल्युटली. और अगेन आई थिंक जेस तो मैसेज किया है आज प्रेडिक्शंस. आई थिंक प्रेडिक्शन का टाइम आज के लिए तो चले गया फॉर प्रेडिक्शन लीग, बट कोई नहीं. आई थिंक एक विंगर तो बनता है अब, लेकिन फॉर मी इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कीप अ क्लीन शीट. We don't want to substitute just for the sake of it. Remember that. Bottom line is we have to try to get 3 points first. हाँ, अगर पॉच बॉल वर्क करे then bring it on. Confidence को help करता है, and of course if you can bring on Mudryk, great. ठीक है, नो टू वेज अबाउट इट. लेकिन फर्स्ट चीज फर्स्ट, कि भाई अभी भी इतू सा चांस है ना, लेकिन है, देयर इज अ स्लाइट चांस दैट वी आर स्टिल इन द टॉप 2. Levi Colwill, again, I like this position. Again, left center back, Levi Colwill suits यार. Chalobah in a back 3 suits. हाँ, Disasi लेकिन थोड़ा सा हो सकता है ड्रैग इन अ 3 at the back system in my opinion. Disasi आइडियली नहीं बनाया 3 at the back system के लिए मेरे ख्याल से. ही इज मोर लाइक अ 4 at the back system वाला प्रॉपर ओल्ड स्कूल डिफेंडर. दैट्स माय ओपिनियन. अगेन आप लोग बोल सकते हो, व्हाट डू यू थिंक? If I win the league, I will not get prizes. Of course you will win. Of course you will get the prize. Of course you will. Did I say that way? नहीं. The winner of the prediction league and the FPL अपना घंटा गैंग league definitely gets it. लेकिन guys, it's half time. Poch should follow Klopp बोल रहे अपने नए मेंबर. But for me, भाई साहब, we should have scored more. But should we, मतलब आप क्रिप करना चाहोगे भाई, यही डिफरेंस है. इन अ डे जहां पर आप जीत रहे हो या जीतने वाले हो या जीत रहे हो या जीतोगे, ज्यादा क्रिप नहीं करते चेल्सी फैंस, क्योंकि अभी भी यस बहुत डिसअपॉइंटेड है फॉर श्योर. वी शुड बी डूइंग अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड बेटर. 12 मैचेस हारे इन द लास्ट 15 ब्रेंटफोर्ड, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट, एब्सोल्युटली. बट it's away. Brentford के against, we have just beaten them once in a proper Premier League match in the modern era. Or Brentford have kept 3 clean sheets in the last 3 matches against Chelsea. तो भाई कहीं ना कहीं Chelsea बहुत फुटबॉल खेली in the last 2 weeks, as much as European football नहीं है.
तो आई थिंक ब्रेंटफोर्ड हैड मोर रेस्ट, तो मैं देना चाहूंगा चेल्सी फैन प्लेयर्स को थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट. एंजो स्पेशली द लेग्स थोड़ा सा वेरी लग रहा है इन माय पर्सनल ओपिनियन, लेकिन काइसेडो गैलेगर भाई brilliant in my opinion, they've been brilliant. Nicholas Jackson bhai celebration, why? Because he missed a goal. Let's be real, he missed a goal attempt proper. Left foot strikes. Pochettino, it's time कि भाई आप स्ट्राइक करने के लिए बोलो बस ट्रेनिंग में, प्लीज प्ले लाइक अपने पास है नो काफी लोग इंजर्ड है तो 11 वर्सेस 11 नहीं होता होगा ट्रेनिंग में अभी राइट नाउ, बट विद द यंगस्टर्स आप लेकर खेलो भाई 11 वर्सेस 11, प्रॉपर मैच मोड में खेलने की कोशिश करो एंड ट्राई टू पुट देम इन सिचुएशंस जहां पर उनको लेफ्ट फुट स्ट्राइक्स लेने हैं. Jackson, Enzo, Gallagher, these are people who had those opportunities, in my opinion, half opportunities. हाँ, Gallagher का एक पेनल्टी वाला मोमेंट था, बट वो एक डाइव था. पहले मैं भावनाओं में बह गया था, बट आई थिंक इट्स अ क्लियर डाइव, तो वो मैं अग्री करता हूं द रेफरी. बट गाइज इट्स वर्किंग गाइज. चिलवेल एंड गुस्तो आर वर्किंग. गुस्तो का शानदार क्रॉस फॉर दैट निकोलस जैक्सन गोल ऑफ कोर्स, लेकिन काइसेडो ब्रिलियंट, अगेन अ ब्रिलियंट गेम इन माय ओपिनियन. footmob.com बिग अप टू यू, लेकिन भाई आप काइसेडो को कुछ तो भाई गड़बड़ है. काइसेडो को हमेशा कम रेटिंग देते हो. इन माय ओपिनियन काइसेडो हैज बीन ऑसम. हाँ डेफिनेटली वीसा अगर आप ब्रेंटफोर्ड हो तो भाई कोई भी ब्रेंटफोर्ड फैन अगर सुनेगा बोले मुझे गाली देगा कि भाई तू इतना बोल रहा है ब्रेंटफोर्ड के बारे में बोल रहा नहीं. भाई आप लोग ने मिस किया चांस, डेफिनेटली वीसा ने मिस किया है. ही शुड हैव स्कोर्ड ऑन द फार पोस्ट. एक क्रॉस आया था लेफ्ट हैंड साइड, क्लियरली चिलवेल और कॉलविल वर एट फॉल्ट, और वहां पर टोनी ने मिस किया था. उससे पहले वीसा को एक बॉल मिलता टोनी के द्वारा, बट वहां पर वेरी वेल डन बाय कॉलविल एज वेल. कॉलविल का भी अच्छा लगा मुझे गेम प्ले. काइसेडो, गैलेगर, एंजो, गुस्तो एंड जैक्सन. अगेन जैक्सन का लिंक अप वी ऑलवेज लाइक, but let's be real, he should have finished at least one more chance, if not two. I think Cassidy को love in my opinion because Brentford बहुत physicality. हाँ Cassidy height, I don't know how many of you will agree with this comment. Cassidy है bench पर, yes. हाइट है उसमें, yes, absolutely. वो चैंपियनशिप में खेला है few matches, वो थोड़ा experience helps in terms of physicality, but to tell that Cassidy ज्यादा physical है just because he's tall, I'm not too very sure. हाँ एंजो और काइसेडो बहुत टायर्ड है, लेगी है, लिटरली हर एक मिनट खेल रहे लास्ट कितने महीनों से, बट द रियलिटी इज दैट मतलब कैसेडाई के अभी 1-0 ही है. वी ऑल रिमेंबर दैट गेम भाई, मुझे याद है शेफील्ड यूनाइटेड के अगेंस्ट गेम था. दिस वाज अ गेम इन द लैम्पार्ड फर्स्ट स्टिंट. हाउ मेनी ऑफ यू ऑल रिमेंबर दैट गेम? बिली गिलमोर, अ वेरी वेरी यंग बिली गिलमोर आया था. बिली गिलमोर अलग फुटबॉलर, कैसेडाई अलग फुटबॉलर है, बट बिली गिलमोर आया था व्हेन आई थिंक इफ आई रिमेंबर राइट वी वर 1-0 और 2-0 अहेड, और उस समय बिली गिलमोर आया था और वी लॉस्ट अ बॉल एंड वी लॉस्ट अ गोल, और देन वी ड्रू दैट गेम. और मैं अभी रखना चाहूंगा उनको. अगेन आप लोग बोल सकते हो भाई गैलेगर इज ऑन येलो कार्ड, सो मे बी यू टेक ऑफ गैलेगर, लेकिन गैलेगर रिसेंटली इतना मिनट्स नहीं खेला है. रिसेंट मैच में ही केम ऑफ द बेंच एंड स्कोर्ड, रिमेंबर दैट विनर. एक सेकेंड, द प्लेस फॉर द यूरोपा इज सो टफ. वेस्ट हैम, न्यूकासल यूनाइटेड ऑल एट 40 पॉइंट्स. बाकी मैचेस में क्या हो रहा गाइस, लेट्स जस्ट टेक अ क्विक ग्लांस. I believe Liverpool are 0-0 away to Forest. Fulham are beating Brighton. That's good for us, guys. Brighton are losing as things stand. लेकिन Brighton हम जानते ही है in terms of attack भाई, they play some crazy football in terms of attack बोलो, लेकिन डिफेंस उनका वीक है. मैं बोलते थक गया. Tottenham 0-0 in another derby rather at home against Palace, as Everton and West Ham भी है, but Newcastle 2-0 up against Wolves. That's interesting. So that's not a good result for Chelsea. मुड्री को लाना चाहिए, उसकी पासिंग काम आएगी. इब्राहिम, to be very honest, yes, Brentford will probably hit more, ज्यादा अटैक करेगी हमें, लेकिन 1-0 है ना इब्राहिम, तो I don't think इतना होगा. I can still see Brentford playing mid block, क्योंकि उनके पास है वो 2 फॉरवर्ड्स वो बेटर देन चेल्सी फॉरवर्ड्स ऑन देयर डे. तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हो ब्रेंटफोर्ड माइट नॉट चेंज द गेम प्ले ज्यादा. तो बिकॉज ऑफ दैट मुझे लगता है मुड्रिक को तब लाना बेटर होगा when first they are more tired, second there is opposition, और second when they are coming at you a little bit more. ब्रेंटफोर्ड थोड़ा सा अभी भी सिट बैक करेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि they will be happy with the point in my personal opinion. I feel Caicedo is the most important player for us currently. Again जो भी लोग आ रहे हैं, big up to you, thanks for saying that. जो भी लोग आ रहे हैं, हाँ, most importantly we are not too far from 12k on Almighty Blues, वो तो बनता ही है. बट एक स्पेशल रिक्वेस्ट है भाई, सीजन ऑफ क्रिकेट, बट नॉट जस्ट दैट, वी रीस्टार्टेड गेमिंग ऑन Almighty Sports as well, so check out that with the shorts content coming as well, which has already begun again. Whoever has turned in, yes, do subscribe. जैसे हाँ क्लिफर्ड भी बोल रहे सब गैलेगर बिकॉज येलो भी है, लेकिन वही है गैलेगर का वर्क रेट हैज बीन वेरी क्रूशियल. पुदिन
कहीं ना कहीं उसको ब्लेम लेना चाहिए. व्हाई डिड ही डाइव? एब्सोल्युटली. मैं थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूँ पुदिन. आई नो इट्स वेस्ट लंडन डर्बी आफ्टर ऑल, हो सकता है थोड़ा भावनाओं में बह जाएगा, बट आई नो थका हुआ था लास्ट गेम में, शुरुआत नहीं किया था लीड्स इसलिए, बट लीड्स शुरुआत नहीं किया था ना, तो ही केम ऑन. मैं टाइम देना चाहूंगा कैसेडाई को फॉर अबाउट 35 मिनट्स. आई एम गिविंग कैसेडाई ऑल ऑफ 35 मिनट्स. तो अंटिल इट्स वर्किंग, व्हाई चेंज? तो मैं चेंज नहीं कर रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग राइट नाउ. आप लोग बोलिएगा अगर इफ यू डेफिनेटली लाइक चेंज एनीथिंग एल्स. सम पीपल आर सेइंग कैसेडाई शुड कम ऑन, सम पीपल आर सेइंग मुड्रिक को आना चाहिए. मे बी आप बोल सकते हो क्योंकि जैक्सन इज द ओनली स्ट्राइकर वी हैव. हमें इतना रिस्क नहीं लेना है, लेकिन 1-0 लिया ना, वी वांट द गोल्स एंड जैक्सन हैज स्कोर्ड दैट गोल. But come on, we should get to 200 likes, come se come, if not more. Enzo is looking much more comfortable in the formation. He doesn't need to track back that much. Again, Gallagher is very crucial, Cobra. इसलिए मैं बोलता हूँ getting Cassidy out, I would not say that. Sterling को लाओ. Interestingly, that's I don't think so. Palmer and Sterling up top on counter. Not sure. Palmer का distribution great है, लेकिन I don't think is the guy for the pace. तो मैं बोलता हूँ आपको चाहिए थोड़ा सा ज्यादा हाइट और थोड़ा सा और ज्यादा पेस with a better link up, so that Palmer can come in and take the ball from Jackson. थोड़ा सा link up better करता है Jackson. As much as Sterling on his day is good, on his day is absolutely shit. What happened to Nkunku? Is injured मेरे भाई. It's a hamstring injury, so he's out for about 2 to 3 weeks. Shubham. Poch doesn't sub. Yes. ये तो मिशन Pochettino भाई. Pochettino भाई, Gallagher ओपी हो जाए एक सेकंड. I know as much as गुस्तो ने क्रॉस किया है अपना जैक्सन, माइकल जैक्सन हमारा एक्शन जैक्सन. मैं मरते तब तक किसी के सामने नहीं झुकूंगा. आप लोग मेरा साथ दें या ना दें, मगर कचरा खेलेगा. तो भाई पॉच बोल रहा है गैलेगर को, भाई ये तेरा सेकंड हाफ का चैलेंज है कि तेरे को. अरे भाई मैं स्टॉप वॉच बंद कर दिया, बंद करना भूल गया यार, कोई मुझे रिमाइंड नहीं किया कि मे बी यू रिमाइंडेड एंड आई मिस्ड इट. कोई नहीं, विल रीस्टार्ट इन सेकंड हाफ. ठीक है. चिलवेल क्वाइट सॉलिड. हाँ, लेकिन वही है, गैलेगर इज क्रूशियल यार. मैं सब नहीं करूंगा अभी के लिए. चिलवेल गुस्तो उनका गेम प्ले वर्क कर रहा है. सिंपल एज स्टुअर्ट ले. अगेन आई लाइक योर नेम मेरे भाई. काइसेडो इज इंप्रूविंग बाय डे. बिल्कुल. वाई सिटी विच सिटी स्टेट यू लिव इन, डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई फ्रॉम योर एक्सेंट कुछ नहीं मेरे भाई. एक सेकंड, आई थिंक थोड़ा सा अटक रहा है. आई थिंक इट्स फाइन अभी. आई थिंक आई एम बैक. या तो अपने इंडिया बैंगलोर यार. कार्तिक, दैट्स वेयर वी लिव. वेयर आर यू फ्रॉम? लेट मी नो. अगेन नॉर्थ इंडियन born in South India who's traveled the world, लेकिन who Indian है totally 100% end to end. lived what 30 years of my life यार. मुड्रिक को लाओ for Gallet Dog. I don't care who comes on, but please do not lose the momentum. Bottom line ये हमें चाहिए victory no matter what. Come on, एक नारा हो जाए यार. Come on Chelsea. Come on Chelsea. भाई जो भी हो, will be there no matter what. Chelsea till I die. I'm Chelsea till I die. I know I am. I'm sure I am. I'm Chelsea till I die. Yes, trollers can definitely laugh at us, but the fact is we are there no matter what. I hope players भी सोच रहे हैं and they give their all in second half. मुझे लेकिन ये लग रहा है, I can hear जो लोग बोल रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है there will be some tiredness coming in second half. But do it at a point जहां पर आपके substitutes can make an impact ज्यादा in those 30-35 minutes. तो थोड़ा सा मैं वही करना चाहूंगा. आई वुड लाइक टू गेट मुड्रिक. मैं बोलता हूँ इवन मडवेके, मे बी नॉट इवन स्टर्लिंग इस गेम के लिए. मुझे लगता है मडवेके माइट नॉट बी बैड अगर एक और गोल हम करते हैं. मडवेके, मुड्रिक और मैं बोलता हूँ इवन अ कैसेडाई, लेकिन नॉट राइट नाउ. आई वुड लाइक टू वेट कंसिडरिंग दैट इट्स वर्किंग राइट नाउ. सो व्हाई चेंज इट? Again, yellow card है, but why isn't anyone in the club taking action on Nicholas Jackson's immaturity? Global Scope 360, I don't know if you heard Poch's press conferences recently. तो उसने उसको पूछा गया था that आप कितना डांटते हो निकोलस जैक्सन को, मतलब did he get scoldings from you? Are you angry with Nicholas Jackson? So you know what he said? He said yes, if Nicholas Jackson was 30 or close to 30, if he had played a couple of seasons of Premier League, if he had played say about 5 seasons of senior football, then मैं बोलता हूँ डेफिनेटली मैं उसको डांटता 100%. लेकिन द फैक्ट इज वो अभी भी भाई काफी यंग है, तो ही इज लर्निंग. हाँ, हम बात करते हैं, लेकिन आप ये भी नहीं चाहते हो कि बंदा पैशन नहीं दिखाए, क्योंकि अभी चेल्सी फैंस वुड नो मोर देन एनीथिंग दैट पैशन इज नीडेड. एट द सेम टाइम वी आर लैकिंग लीडर्स, और मैंने बोला निकोलस जैक्सन लीडर है, फार फ्रॉम इट, एब्सोल्युटली फार फ्रॉम इट. लेकिन एट सम पॉइंट आप बोलना चाहोगे दैट समटाइम्स ना आपका जो एक्शन होता है इट स्पीक्स 1000 वर्ड्स. You know, that's what you want from a player like a young player like Nicholas Jackson. Again,
he has to improve on a lot of things. उसका discipline, एक yellow card में he'll miss 2 more games, remember. तो हो सकता है Poch might think about subbing him, लेकिन भाई people who know it, Denzel Washington भाई नहीं खेल रहा. Why? Because अकेडमी के लिए खेल रहा था कल ही, तो दैट्स द रीजन. वुड यू से गोइंग बैक टू मास्टर क्लास फ्रॉम, मास्टर क्लास नहीं यार, कम ऑन, मास्टर क्लास नहीं बोलूंगा. द फैक्ट इज क्लियरली एक प्रॉब्लम थी अबाउट सेट पीसेस एंड गेटिंग काउंटर्ड. अपने जो काउंटर्ड में वी यूज्ड टू गेट बीटन एट टाइम्स, और वी यूज्ड टू हैव पीपल प्लेइंग आउट ऑफ पोजीशन, और अपने लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक है कॉलविल, वैसा बंदा बेसिकली आपके पास है, तो यू हैव टू यूज इट ऑन द बैक थ्री, स्पेशली जब आप हेडिंग एबिलिटी नहीं रखते हो, व्हिच कॉलविल, लेट्स बी ऑनेस्ट, इज वेरी गुड, अ ग्रेट पोटेंशियल सेंटर बैक इन द मेकिंग, लेकिन हेडिंग एबिलिटी में अभी भी इंप्रूव कर सकता है फॉर इंस्टेंस ना. और चालोबा अभी वापस से आ रहा है, थियागो सिल्वा वाज इंजर्ड, और हम डू और डाई सिचुएशन में थे लास्ट एक महीने में, और कहीं ना कहीं रिजल्ट्स हैव बीन बेटर, परफॉर्मेंस हैव बीन स्लाइटली बेटर, मोमेंट्स हैव बीन बेटर, लेकिन अभी भी आइडियल नहीं है. तो डिफेंसिव में बोलूंगा, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि चिलवेल बीइंग अ कैप्टन ऑफ चेल्सी नोज हाउ टू प्ले इन द बैक फाइव सिस्टम, जो उसने आयरॉनिकली कुछ सीखा था अंडर टूकल, आई थिंक मे जस्ट वर्क, क्योंकि मे बी ही इज मोर ज्यादा कॉन्फिडेंट, पुट इट दैट वे. लेकिन हाँ, गुस्तो इज रियली गुड कॉम्पिटिशन, आई एग्री एज वेल. नाइस यार, लखनऊ भाई, जो भी लोग क्रिकेट भी फॉलो करता है, आई डोंट नो इफ यू फॉलो क्रिकेट, भी फॉलो ऑल आईपीएल टीम्स, अब उससे याद आ गया, ऑलमाइटी स्पोर्ट्स भी चेकआउट करिए. कम ऑन चेल्सी, कम ऑन चेल्सी. दक्ष भाई आए का प्लान नहीं था ऋषभ, बिग अप टू दक्ष भाई एज वेल. दक्ष भाई वाज हियर फॉर अबाउट 40 minutes आई बिलीव. Pre-match में he joined us, लेकिन I believe he can join. By Daksh, if you're watching, definitely welcome, you know it. Great numbers turned up today. I hope they're always there, क्योंकि हम हमेशा करते हैं there no matter what, whether we are shit, whether we are watching at 3 a.m, whether we are watching at 4 a.m, or whether we masti mazak in basically fun banter, or be it quizzes. End to end, we try and do as much as possible, क्योंकि at the end of the day हम fan है यार, watching from a lot of low years, लेकिन at the end of the day भाई, football and fun is part and parcel of the game. Colville has better jumping reach than Guardiola, but Guardiola has better heading in my opinion. Totally agree. Great comment, Karthik. Nice comment that. Very to the point. Mudrik should have started today. Of course, if I speak, I'll be in trouble. क्योंकि the reality is that बहुत negative है social media against Poch. उसमें क्या ही तो ऐड करूँ भाई मैं. Reality phase one, it's honest opinion that one winger should have started. लेकिन it has worked. हाँ, chances थे विशा के for sure. कपल ऑफ चांसेस मैं बोलता हूँ, लेकिन सो डिड हैव जैक्सन ना. जैक्सन के 2 चांसेस थे, उसमें से मिस किया, एंड देन फाइनली स्कोर्ड फ्रॉम थर्ड चांस. वी नीड टू स्कोर मोर, लेकिन वो क्लीन शीट भी इंपॉर्टेंट है अवे गेम टू ब्रेंटफोर्ड, जहां पर हम इतना नहीं अच्छा किए जीटेक कम्युनिटी स्टेडियम में. अनपॉपुलर ओपिनियन, गुस्टो विल बी बेटर इन लॉन्ग टर्म देन रीस जेम्स, लेकिन डेथ किलर, अगर हम 5 एट द बैक खेल रहे हैं या 3 एट द बैक खेल रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन डिसासी का मैंने बोला है, बाय द वे बहुत खेला है चेल्सी के लिए. आई नो पॉच के पास पता नहीं, रादर डिसासी के पास पॉच का वीडियो है, और मे बी इज रियली गुड, रूडिगर वाइब्स देता है कभी ना कभी, एज मच एज इतना नहीं है ऑब्वियसली, बट आई थिंक राइट सेंटर बैक में रीस जेम्स इज बेटर देन डिसासी. एवरीवन, आई डोंट नो, इन अ बैक 3 सिस्टम, क्योंकि आप ड्रैग होते हो थोड़ा वाइड, तो लीवाई कॉलेज बीइंग लेफ्ट फुटेड तो फिर भी थोड़ा सा ठीक है, लेकिन डिसासी ऑन द राइट हैंड साइड थोड़ा सा इश्यू है इन माय पर्सनल ओपिनियन. लेकिन सब लोग यहाँ पर जो भी है, सेकंड हाफ प्रेडिक्शंस हो जाए भाई सब लोग. मेरा प्रेडिक्शन था 2-1 जब हमने लाइनअप को देखा था ऑफ बोथ द टीम्स. आप लोग बोलेगा मैं सेकंड हाफ को वापस से रीस्टार्ट करूंगा टाइम गाइस. यहाँ पर हम हॉटस्टार में देख रहे हैं, फॉर पीपल वाचिंग ऑन टीवी गौर करिएगा, लेकिन सेकंड हाफ प्रेडिक्शन सब लोग ये बोलेगा, सब लोग हु विल स्कोर इफ अ गोल इज कमिंग, और विल वी कीप अ क्लीन शीट फॉर द सेकंड हाफ लाइक द फर्स्ट शीट एज वेल एज ब्रेंटफोर्ड, एंड इट्स गोइंग टू बी 1-0. मैं बोल रहा हूँ, you know what, मैं स्टिक करूंगा अपने प्रेडिक्शन को. as much as I would not like to say it, I can see unfortunately Brentford का थोड़ा सा energy going high, because इतने सारे गेम्स हारे. I know they're not in a good moment form, लेकिन it's almost desperate measures, नहीं तो relegation में शक हो जाएगी यार. चलो भाई, सेकंड हाफ शुरू हो गया. प्रेडिक्शंस इन द चैट हो जाए. डग इन द हाउस 2-1, चलो 2-1 बोला था देवेश ने भी. यहाँ पर पहले ही यार अटैक आ रहा है ब्रेंटफोर्ड का. नाइस डन, चलो बा ओपी यार अगेन. Lucky enough to meet him. I remember asking him, भाई, given a choice, would you like to be contribute more in goals? लेकिन बंदा एक proper defender है. See, old school defending ना काफी underrated है, and I think Chalobah is that old school defender. I think I like that. Chalobah right center back, Disasi center back. You know what? I would have agreed with this comment. I predicted that way, लेकिन क्योंकि हमने लास्ट गेम में खेला नहीं था वैसा, इसलिए शायद कंटिन्यू किया हम लोग. लेकिन चालोबा मच एज यंग है और
कितना 7 महीना मिस किया है. I kind of miss that kind of a squad player. Yeah, sometimes it's needed. और वही टुकुल को चाहिए था in Bayern Munich. Someone who's just defending, pace है, header में not too bad, और can step into midfield, और उसका drilled pass जो होता है, Chelsea Academy boys would know it exactly. 2-0 or 2-1 is the most common scoreline I see. Again, मैं बोल रहा हूँ 2-1 with one winning goal coming from Chelsea from the bench. I hope I'm wrong and we actually win convincingly for a change. नहीं यार, that ship has sailed मेरे ख्याल से. Lucky enough to be called by Chelsea TV यार, and they surprised me last Diwali by you can check out यार, कार्तिक on home page है, वीडियो भी है. Chelsea TV featured us on their website Chelsea Football Club, and again pleasant surprise. मुझे याद है 3 बजे सुबह फोन आया था भाई कि आपको आना है, ली पाकर आने वाले. तो बोला चलो ठीक है, आ जाते. दैट्स एन अपॉर्चुनिटी. ली पाकर हिमसेल्फ इज गुड, बट Havertz and Chalobah surprised us. One of the moments of my life, man. I have to say. Again, check out our Instagram posts for people who are interested. Lekin let's focus on the game now. Again, guys, आपको पता ही है लाइक टारगेट. लेट्स फर्स्ट हाफ के लिए 200 था. लेट्स गो विद 250 लाइक. क्या बोलती जनता? अरे थ्रो इन आता तो डर लगता है भाई. थ्रो सेट पीसेस मैन. शॉट आया. पेट्रोविच ओपी भाई, इजी था. दो इस बार ज्यादा पेट्रोविच को ज्यादा ही हाइप कर रहा हो क्या? आई थिंक इज रियली गिविंग मी गुड वाइब्स यार, ऑनेस्टली. देयर आर सर्टेन थिंग्स वो इंप्रूव करना है, लेकिन पेट्रोविच भाई, गाइस लेट मी नो एवरीवन, पेट्रोविच या केपा? डेफिनेटली पेट्रोविच ना. मतलब केपा फॉर द एक्सपीरियंस, सैंचेज obviously distribution gives me Mendy vibes, लेकिन मुझे लगता है केपा का डिस्ट्रीब्यूशन फिर भी थोड़ा सा बेटर है पेट्रोविच से. बट ऑल दी अदर एस्पेक्ट्स में बोलता हूँ पेट्रोविच यार, कम ऑन, पेट्रोविच यार. तो केपा को अनफॉर्चुनेटली हमें कॉन्ट्रैक्ट एंड करना पड़ेगा. आई थिंक यू नो व्हाट, एंड में हम जस्ट एंड कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट. मुझे ऐसे ही लगता है. डिफिकल्ट है, विल टेक द एल, लाइक लुकाकू का भी करना चाहिए था. यहाँ पर चेल्सी भाई, काइसेडो इज टारगेटेड. काइसेडो इज टारगेटेड. रेफरी बटन निकाल के आंख को खोल यार. तू अपना अनिल कपूर के गॉगल्स पहना के क्या पहना है भाई तू, वेलकम वाला? रेफरी को बोल यार, काइसेडो इज लिटरली बीइंग टारगेटेड. हाउ हैज एनी ब्रेंटफोर्ड प्लेयर मिडफील्डर नॉट? अगेन गैलेगर क्लियरली लेट चैलेंज बाय कॉलिंस यार, कम ऑन मैन. आदित्य, दैट्स अ ऑनेस्ट ट्रुथ, रियलिटी. आदित्य, आई नो रीस एक डिफेंडर है, आई नो वो बल्कि है, बट ओजीज ऑफ द फैन क्लब विल नो. वन ऑफ द मोस्ट पेन्सटेकिंग मोमेंट्स मेरे लिए था एज अ चेल्सी फैन, along with when Mourinho went both times from Chelsea, or when Tuchel second time went, first time उसके लिए तो था went, was when Robin, ट्रांसफर्स की बात हो रही, रॉबिन लेफ्ट चेल्सी. व्हाई? बिकॉज ही वाज वर्ल्ड क्लास, इंपैक्टफुल इवन इन चेल्सी. ग्रेट इम्पैक्ट, वन ऑफ द बेस्ट इम्पैक्ट्स इंक्लूडिंग द लेजेंड्स ऑफ चेल्सी. मैं बोलता हूं ही वाज द बिगेस्ट इम्पैक्ट प्लेयर ऑन द पिच. लेकिन मतलब समथिंग और नथिंग वाला मामला जो बोलते थे हम हजार्ड के लिए ना, दैट वाज रॉबिन. सो बट इंजरी, अब वही है. रीस जेम्स फ्रॉम डिफेंस, एक सेकंड गोल आने वाला उनका. नहीं बचा नहीं. शिट मैन, शिट, कम ऑन यार, दिसासी. Why are you waiting for the other defender to clear it? मैंने बोला था इक्वलाइजर आएगा और हम विनर मारेंगे, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है भाई. अर्ली इन द सेकंड हाफ आ गया. दैट इज इवन रबिश मैन, रबिश. वन हाफ एफसी, इंजरी एफसी, हार्ट अटैक एफसी इज बैड ब्रो. राइट साइड से ओपन अप कर दिया, क्रॉस आया. क्रॉस हम अलाउ क्यों करते वापस से? यू कैन आर्ग्यू चालोबा की मिस्टेक थी. डेफिनेटली काइसेडो, दिसासी, वन ऑफ देम टू शुड हैव क्लियर्ड इट. Definitely cleared it. आप लोग बोलिए whether you agree. Colwill out of position. Firstly for the high ball जो हमेशा मिस करते, क्रॉस को हमेशा हम अलाउ करते. चालोबा ने अलाउ किया. अगेन चालोबा को हम प्रशंसा करते हैं, but the reality is that there is a defense issue. There is a defense issue, in especially when crosses over the top balls. Come on yaar, Disasi does not work in a back three. Yes, रिएक्शनरी, यस, काफी अच्छा गया उसका 1.5 महीना, बट अ कपल ऑफ मोमेंट्स he's had in the back three. लास्ट गेम में अगेंस्ट लीड्स क्लियरली दिखा था. फॉर मी, आई एम नॉट सेइंग इज हॉरिबल एटसेट्रा, बट ही हैज टू डू बेटर यार. आपको ज्यादा एग्रेसिव रहना पड़ेगा उस मोमेंट में. यू कैन नॉट वेट फॉर थिंग्स टू हैपन. दिसासी हैज टू बी ब्लेम्ड मेनली, बट मैं तो उससे ही बोलता हूं, मिकाइल ओपी भाई, मिकाइल अपने ओजी जानते ही. आई वुड से
फर्स्ट पॉइंट पर गो बैक टू वेयर द अपॉर्चुनिटी स्टार्टेड. हाँ, दिसासी डेफिनेटली एट फॉल्ट. ठीक है, चालोबा दिसासी शुड हैव डन बेटर, स्पेशली दिसासी. लेकिन यहां पर एक लिवाई कॉलिल पर अटैक आया है भाई, इंजरी नहीं हो जाए. आई फील दैट लिवाई कॉलिल इज आउट ऑफ पोजीशन. ओवर द टॉप बॉल आया, जहां पर आप जानते हो रियल मैड्रिड अगेंस्ट चेल्सी लास्ट सीजन, इफ यू रिमेंबर, गिविंग यू द एग्जांपल, दैट इज द मोमेंट दैट ब्रेंटफोर्ड हैज रेड, वो जो हम हकते हैं वापस से, और उस मोमेंट में चालोबा ने क्रॉस अलाउ किया. Those two instances are also at fault. I know perfect नहीं होंगे, young defenders are, but come on man, 3 the back खेल रहे हो, you need to protect each other. आप एक दूसरे को वेट मत करो कि भाई वो रहेगा अपने पोजीशन में, वो क्लियर करेगा. That is what happened between Levi Collins and Chalobah first and Chalobah and Disasi second. That is a problem. लेकिन हम जानते हैं भाई, चेल्सी वही है. 90 मिनट्स के लिए we cannot expect us to be consistent. Very rare होता है वो. मतलब अगेन वी हैव लॉस्ट द बॉल. नो वे दिसासी नहीं, शॉट, अरे पोस्ट लगा यार, लेफ्ट फुट स्ट्राइक फ्रॉम जानेल्ट आई बिलीव, लेकिन पोस्ट लगा है. और पेट्रोविच जिसका इतना प्रशंसा कर रहे थे वाज टोटली बीटन. दिसासी नीड्स टू बी टेकन ऑफ. गेट ऑन थियागो सिल्वा राइट नाउ. यार आई डोंट नो, आप लोग बोलोगे गो फॉर द बैक. आई वुड से डू नॉट चेंज द सिस्टम अभी के लिए. यस, पैनिक एफसी इज इन साइट. Get Thiago Silva center back. Get Chalobah as a right center back, although ज्यादा खेला नहीं है. Get off Disasi. 3 the back अगर खेलना तो Disasi को मत रखो, वो थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है in terms of his footing. लेकिन शॉट है वापस है पेट्रोविच के लिए, इजी कैच इस बार. कोई नहीं. अगेन यहां पर नाइस डिस्ट्रीब्यूशन. गुस्तो trying to play in Jackson. I think he might be offside. Jackson tries to play a 1-2, लेकिन गुस्तो लेट हो गया राइड करने पे, and it's a throw in to Chelsea. Come on Chelsea, come on Chelsea. Away fans, bhai, get in your voice, bhai, everyone. Come on Chelsea, come on Chelsea. Gallagher with the ball. Gusto का throw in से giving it back to Gusto. Gusto back to Gallagher. भाई कोई बॉल मांगो यार, make a run. Caicedo helps us out a little bit. Enzo थोड़ा सा फॉरवर्ड खेल रहा है, लेकिन पामर ड्रॉपिंग बैक. अब एंजो स्विच ऑफ प्ले राइट साइड में किया है टू गुस्तो. गुस्तो क्रॉस आएगा, गुस्तो नाइस क्रॉस, नाइस हेडर, लेकिन ब्रेंटफोर्ड द्वारा. और यहां पर एक गोल किक है, पामर का हेडर. कोई नहीं आएगा गाइस, आएगा, कोई नहीं, टेंशन नहीं है, इट विल कम. कितने लोग के चेल्सी प्लेयर्स है टीम में बोलेगा. वुड यू टेक आइवन टोनी? आई वुड टेक, लेकिन व्हाट प्राइस कार्तिक? अगर हमको बेचना पड़ रहा है, यस, गोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई वुड नॉट सेल अ गैलेगर. इफ आई एम ऑनेस्ट, आई वुड नॉट सेल अ गैलेगर. इफ इट कम्स डाउन टू बेसिकली अपना, अगर केपा, लुकाकू एक्सेट्रा को हम बेच सकते हैं, हम बना सकते हैं पैसे, और हमारा एफएफपी इशू नहीं है, देन एब्सोल्युटली ब्रिंग हिम अप. क्योंकि प्रीमियर लीग है, नंबर 9 है, एक्सपीरियंस है. आई थिंक he knows England, Englishman be that helps the quota etc. But at the end of the day, let's be real, ideally Chelsea के लिए मैनिफेस्ट हम कर रहे हैं विक्टर ऑसिमेन, जो एक इतना सा चांस है, एक 1%. अब तो शायद पीएसजी का ज्यादा चांस है, बट लेट्स सी. कोई नहीं आएगा गाइस, आएगा. हैव द फेथ. कम ऑन चेल्सी, कम ऑन चेल्सी, कम ऑन चेल्सी. अभिषेक ने सही बोला. अच्छा मैकाइल, आपने डीएम किया यार, सॉरी यार. आपको आना है तो आ सकते हो, बट डेफिनेटली मैकाइल, उस समय जब आपने डीएम किया था, मैं, अरे गैलेगर को थ्रू बॉल मिला, एक सेकंड. आई थिंक मेरा सिस्टम थोड़ा सा अटक गया था, तो आई थिंक आई कॉल्ड दक्षॉन on emergency basis, and I did see your DM when the match started. But if you want to know, come, definitely you're welcome bro, let me know. लेकिन यहाँ पर येलो कार्ड, नो वे. रेफरी घंटे, साले रेफरी घंटे. एक फ्री किक हमने दिया, एब्सोल्युटली यस, यू कैन क्वेश्चन काइसेडो एट फॉल्ट. ही गॉट द बॉल, ही गॉट द बॉल. फॉलो अप से थोड़ा बहुत टच हुआ भाई ईसा. Caicedo has been fucking targeted the entire match. Seriously, my referee pisses me off. This referee, man, pisses me off. Any referee in the FA, but हम सब जानते हैं, हम सब. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble, and I don't want to be in big trouble. Seriously, man, bad. बट कोई नहीं. Mikael, internet issues थोड़ा बहुत at my end bro, so I don't know if you can accommodate you. I just tried to see the load. एक second, let me anyway send you the link. अगर आपको आना है on full time, more than welcome. और एक second, हाँ, मतलब again it's a busy time probably for you, but मैं लिंक भेज रहा हूँ आपको. अगर आना है तो definitely welcome मेरे भाई.
I'm just sending Mikhail the link in case he wants to join in. We'll try if possible. भाई गुस्सा आता है यार हर्षित भाई, दैट इज द थिंग ना. देखो यार, आई एग्री, वी आर शिट, आई नो दैट एब्सोल्युटली भाई. जो भी बिलियन पाउंड और घंटे बेसिकली जो भी बोलना है बोलिए यार. द रियलिटी इज दैट वी हैव टू डेफिनेटली लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड हमने बहुत गलतियां की एज अ टीम. बट लिटरली भाई, he got the ball and follow up and he bloody gets a yellow card. जब पूरे मैच में साले को भाई ऑल द मिडफील्ड ऑफ ब्रेंटफोर्ड को मिलना चाहिए भाई येलो कार्ड, टू बी ऑनेस्ट. बट यहाँ पर काउंटर हो सकता था चेल्सी का फ्री किक, बट नहीं मिला. गुस्तो विंस द बैक बॉल दो. लुक एट दैट चैलेंज नाउ, लुक एट दैट चैलेंज. 3 people jumping on Gusto, अपना only right back available. It's a bloody derby and referee, you have the audacity to give अपने players को yellow card, and finally I think he books them, I guess. Finally. Look at that यार. भाई derby vibes coming in 55 minutes into the match यार. Derby vibes coming in. Absolutely. चलो भाई, तालियां हो जाए रेफरी के लिए. तालियां हो जाए. Slow clap for the referee, man. भाई 65 मिनट्स का अलार्म बजा नहीं है पहुंच का ऋषभ. इफ यू नो सिंपल एज दैट. लेकिन हाँ, वी नीड अ गोल एब्सोल्युटली अभी, एंड आई थिंक इट्स बनता है अभी, क्योंकि दे हैव स्कोर्ड अ गोल फॉर अस टू गो बैक 4. या जस्ट इफ यू वांट टू स्टिक द सेम, क्योंकि आपको लग रहा है कि अभी ब्रेंटफोर्ड आर ऑन द हाई, तो मे बी जस्ट गेट ऑन थियागो सिल्वा, प्ले चालोबा द राइट सेंटर बैक, टेक ऑफ दिसासी जो एज इट इज बहुत खिला है सीजन में यार, कम ऑन. लेकिन हाँ, काइसेडो अकेले बहुत किया है, इन माय ओपिनियन ही इज मोर हेल्प. यहाँ पर अगेन चालोबा apparently he's fouled the Brentford player. घंटा उड़ जा भाई Brentford player. कौन है, वीसा या टोनी होगा. Everyone ball watching even in midfield. Caicedo children misunderstand leads to rash recovery lunge and free kick for Brentford. भाई होते रहता भाई सूरज, पार्डन पार्सल, बिग अप टू यू. लेकिन यहाँ पर राइट साइड में गुस्तो है. गुस्तो प्लेइंग इट टू गैलेगर. एंजो बी केयरफुल. हाँ, एंजो रेजिस्ट करता है प्रेस को. पामर को मिलता है ऑन द लेफ्ट हाफ स्पेस in the attack, but I think वापस से build up from the back होगा from the left channel. Chilwell getting it. Enzo छक्का मार दिया भाई. Enzo needs to practice shooting as much as बहुत difficult chance था. Of course, it's he wanted to create something out of nothing, but come on यार, I think we gave the ball simply. और लेकिन it's nice to see someone taking shots if it's a proper shot. अगेन मैंने बोला था बेंच से ही दिखेगा, वन ऑफ द विंगर्स विल कम ऑन एंड स्कोर, बट लेट्स सी. आई जस्ट होप दैट वी कम इन. कैसे खेल रहे हैं अपनी टीम चिराग? वी आर प्लेइंग डेफिनेटली, मैं बोलता हूँ अप एंड डाउन. ओवरऑल आई एम हैप्पी. द फैक्ट इज कि यार हमने रखा क्लीन शीट फॉर अबाउट ऑल ऑफ 50 मिनट्स. लेकिन द रियलिटी इज दैट जब क्रॉसेस आते हैं हम अलाउ क्यों करते क्रॉसेस, एंड दिसासी जब हमको दिख रहा है इज नॉट वर्किंग, व्हाई इज पॉच वेटिंग फॉर क्रिसमस? क्यों वेट करता हूँ 65 मिनट्स का? मतलब स्पेशली जब हम येलो कार्ड्स पर है. एंड आई नो द रेफरी हैजंट हेल्प्ड, फॉर श्योर हैजंट हेल्प्ड, बट वो रीजन नहीं है जिसके कारण ब्रेंटफोर्ड आए. और कहीं ना कहीं ब्रेंटफोर्ड हैज क्रिएट चांसेस ओवर द एंटायर गेम. 1-1 इज नॉट, आई वुड से, टोटली अनफेयर एज वेल, बट अगेन गोइंग बैक टू द सेम थिंग, हमने मिस किया था चांसेस थैंक्स टू निकोलस जैक्सन हु स्कोर्ड फाइनली एज वेल इन द 35th मिनट. अगेन बॉल पोजीशन रखना एक चीज होता है, बट उससे आप क्या कर रहे हो? वी ऑल नो दैट बीटिंग दैट लो टू मिड ब्लॉक इज डिफिकल्ट फॉर चेल्सी. वो एक प्रॉब्लम रही है फ्रॉम ईयर्स टुगेदर, नॉट जस्ट दिस टीम. यहाँ पर लेकिन गैलेगर बहुत सारा वर्क रेट डालते हुए, एंड आई लाइक दैट फॉर वंस फॉर द सेकंड हाफ. बिल्कुल, whenever possible bro. I think I prefer if you can join the full time to kind of do a quick analysis if you're free that time. नहीं तो watching the heart attack FC the time which is now. काइसेडो चाहिए नहीं, दिस इज नॉट द टाइम यार. आई नो वेरी टायर्ड है, लगी है मिडफील्ड में. गैलेगर इज ऑन येलो, काइसेडो इज ऑन येलो, लेकिन बिकॉज 1-1 हो गया है. आई नो अनफेयर ऑन कैसेडाई जो कप टाइड है, ही हैज ओनली प्रीमियर लीग टू प्रूव, बट आई थिंक आई वुड नॉट गेट हिम ऑन राइट नाउ. क्रॉस आया नहीं, शिट, वी लेट इन येट अगेन भाई. दिस सासी एंड चालोबा, व्हाट आर यू डूइंग? कम्युनिकेशन दिख रहा है कि वो लोग खेले नहीं है साथ में. नो कम्युनिकेशन. फार पोस्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड टोटली ओपन हो गए, लेकिन यहां पर काउंटर. गुस्तो पहले बॉल खेल यार, क्रॉस, कम ऑन, प्ले, गोल करना चाहिए. कम ऑन, नो, Cole Palmer is cold as fuck, but not at this time. Come on yaar, it was a nailed on goal, I would say yaar. Come on,
What a counter by Chelsea on Gusto Pioja in the chat, but Palmer misses it. Left foot strike just wide of the left post in front of him. Whew. होता है आएगा गाइस. फर्स्ट हाफ में ये हुआ था. आई नो कप गेम्स याद आते हैं बुरे वाले, लेकिन आई एम सो मेनी गेम्स दैट वी ड्रॉप पॉइंट्स ऑन. लेकिन फर्स्ट हाफ में 2 चांसेस मिस किया था निकोलस जैक्सन में. Definitely that was a proper goal scoring opportunity and I think we should have scored at least the target minimum और शायद गोल भी होता अगर हिट करता. बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है दिसासी जैसे काइसेडो टारगेट किया जा रहा था is clearly targeted as a plan by Brentford. या सिटर देखो it's easier said than done, लेकिन he should have done better knowing his quality for sure. मैं क्या अच्छा लगा कमेंट. पामर जब वो बॉल कंट्रोल नहीं कर पाया पहले जो ओवर द टॉप आई थी तब से ही तो थोड़ा ऑफ लग रहा है. यहाँ पर क्रॉस वापस से किया चेल्सी ने, स्विच ऑफ प्ले बट नो अवेल. भाई दिसासी इज बीइंग टेस्टेड ब्रो, टोटली बीइंग टेस्टेड. ऑल्दो अच्छा किया सेकंड में, काउंटर में हम गोल खाएंगे मुझे लग रहा है. गंदी वाली फीलिंग आ रही है यार. आई थिंक इट्स टाइम बैक 4 तो शायद मैं नहीं जाऊंगा. आई थिंक आई विल जस्ट ब्रिंग ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ थियागो सिल्वा. थियागो सिल्वा को लाओ भाई, कम ऑन. मतलब 30 मिनट तो खेल सकता है यार. 62 मिनट हो गए. पोचेटिनो वेक अप भाई. भाई कोई सुंगाओ यार अपने थके हुए प्लेयर्स, सुंगाओ अपने सॉक्स सुंगाओ यार पोचेटिनो को. बोलो भाई 5 सब्स्टिट्यूशंस होते हैं और हमें जीतना है मैच. हम 11th है. प्लीज टेल हिम एज मच एज आई डोंट वांट टू साउंड वेरी नेगेटिव बट द रियलिटी इज दैट ही नीड्स टू सब राइट नाउ. वी आर क्लियरली बीइंग टारगेटेड. एक बॉल आता है ऑन द टर्न एंड दैट्स इट. झोल पामर कम ऑन मैन, बंदा काफी अच्छा किया है मतलब, लेकिन आई गेट इट. लेट्स सी आदित्य भाई, let's get to 250 likes and I hope everyone is subscribed to both our channels as well as the panel. Barcelona terminating contract of Nike to generate more revenue jersey sales. Yes, उसका देखा था article, will come to that as well. By the way, Monday Tuesday we are expecting a Barca fan on the channel. We'll try and get him on and let's see if we can discuss that as well. लेकिन of course UCL stream के लिए. But right wing में भाई Enzo has lost the ball. No cross आया वापस से. No free header. No way. 3 center backs. What are you doing? साफ सुन लिया क्या आप लोग को? First of all, why do we allow crosses? Where is Ben Chilwell? Why is Enzo defending that left wing? Why allow those crosses? बोल के थक गए यार. Why do we allow crosses firstly and then 3 center backs, no communication. अगर है नहीं तो भाई एक सेंटर बैक को हटा और एक अटैकर को डाल यार, एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर को डाल यार कैसेडो को. या तो तू ला प्रॉपर कम्युनिकेटर ऑफ अ कैप्टन जो है थियागो सिल्वा, जो बेंच पर है यार. 65 मिनट्स का क्या यार ये 65 मिनट्स का पॉच को सीरियसली गुस्सा आता यार. हाँ, I agree. I would rather agree with what Rishabh is saying. I would go with Thiago Silva right now because clearly लग रहा है we might concede a goal as much as हमने सेटर मिस किया था अभी. नाइविट चाहिए पुदिन. स्टर्लिंग मुड्रिक ओके नाउ आई गेट इट. तो आप बोल रहे हो हाँ ये भी हो सकता है. वेरी गुड पॉइंट पुदिन एज अ पॉइंट यहाँ पर, क्योंकि आपके चिलवेल अगर लग रहे थके हुए और अगर वो लेफ्ट विंग डिफेंड नहीं कर रहे, बिग अप टू पुदिन यार. आई अग्री ऑन सेकंड थॉट्स. आई अग्री. आई वुड राइट नाउ एज मच एज मुड्रिक हैज द पेस, क्योंकि आई वुड रादर ब्रिंग ऑन टू एक्सपीरियंस प्लेयर्स और दे हैव टू प्रूव देमसेल्व्स. मुड्रिक के लिए अनफेयर है. मैं बोलूंगा स्टर्लिंग एंड थियागो सिल्वा दोनों को लाऊंगा. राइट विंग से गुस्तो ने क्रॉस किया है, इज वन इट बैक लकीली, लेकिन रेफरी मौका मिल गया, एक फ्री किक देता जल्दी से. मे बी आई एम वेयरिंग ब्लू टिंटेड ग्लासेस, लेकिन कोई नहीं. डू यू थिंक पोचेटिनो विल बी अ मैनेजर नेक्स्ट सीजन? नहीं, मैंने ऑलरेडी बोल दिया. मिस्टर पीसी टेक, वॉच माय वीडियोस ब्रो अगेन, हिट दैट बेल आइकन सो दैट वी कैन वॉच आवर वीडियोस. आई थिंक इट वाज दिसंबर एंड और जनवरी बिगिनिंग जब हमने बोला था दैट इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन एंड नॉट इफ. लेकिन नाउ दैट जनवरी विंडो हो गया, कोई फायदा नहीं अभी वापस से स्टार्ट करने का. हाँ, समर में आई थिंक इज गोइंग इफ यू आर नॉट गेटिंग यूरोप, वो क्लियर है. Palmer has been very underwhelming today. Not much creativity, no calmness in front of goal, and would want Mudryk in his place. नहीं Mudryk, देखो सब लोग बोल रहे गोल मारा है, and I know his performances have been better in terms of numbers as well. लेकिन क्रॉस आया नहीं फार पोस्ट में और ये छक्का मार दिया लकीली फार पोस्ट में ब्रेंटफोर्ड के प्लेयर से. रेगुलर नेल फ्रॉम लेफ्ट विंग बैक. बट कम ऑन यार, in my opinion to tell that Mudryk has been better in terms of finishing than even today's Palmer is a little bit unfair on Palmer in my opinion. Honest opinion है स्वरूप. अभी के लिए मुझे लगता है little bit more experience is required there, as much as pace is definitely required.
100%, लेकिन मैं लाना चाहूंगा पहले थोड़ा काम चाहिए। एंड आई नो स्टर्लिंग वो देता नहीं है, एकदम उल्टा ही देता है, बट कंपेयर टू मुड्रिक ही विल लूज द बॉल्स लेस इज व्हाट आई एम अस्यूमिंग। इतना तो कर सकता है भाई आधी घंटा के लिए। तो मैं लाऊंगा स्टर्लिंग ऑन द विंग, जो पुदिन ने सजेस्ट भी किया था। आई वुड रादर अनफेयर ऑन मुड्रिक एंड मडवे मे बी, बट मैं वो करूंगा विद थियागो सिल्वा कमिंग इन लाइक फॉर दिसासी। आई थिंक बारसा प्रोड्यूसिंग द ओन किट्स इज गुड आइडिया। चलो उस पर स्टार करके रखते हैं फुर्सा बारसा। कम बैक टू इट। फिजिकल टीम्स, देखिए वन ऑफ द रीजंस पीपल बोल रहे हैं दैट कैसेडाई शुड बी ट्राइड इन मिडफील्ड इन दिस गेम इवन, क्योंकि लंबा है बंदा। द रियलिटी इज दैट वी यूज्ड टू बी ऑलवेज दैट फिजिकल टीम एंड वी आर नो लॉन्गर दैट, एंड दैट्स द रियलिटी। तो एक सेकंड, लेफ्ट विंग में भाई फर्नांडिस का थोड़ा वाइड खेल रहा है, ही इज ट्राइंग टू हेल्प आउट चिलवेल इन अटैक फॉर 1-2s, लेकिन इज लूजिंग द बॉल। एंजो फर्नांडिस भी काफी थक गया यार। Guys, is it time? मतलब I know it's 1-1 and we want to win. By nice pressing by Chelsea on the counter, लेकिन हमें थ्रो ही नहीं मिला है राइट साइड में। बट आई थिंक probably Enzo is too tired, लेकिन वही है राइट नाउ टेकिंग ऑफ Enzo and Palmer, क्योंकि वो दो क्रिएटिव एलिमेंट है यार। मैं चाहता हूँ अपना विट बने रहे और अपना मिडफील्ड में ना पामर जो ड्रॉप करते हैं दोनों, Enzo और Palmer, आई थिंक दे रादर बी देयर। Martinelli's debut goal यार, again ownership needs to look at that. अब तो भाई 67 मिनट्स हो गए, क्या ही तो बोले। आई डोंट नो व्हाट इज द चैलेंज यार, येलो कार्ड्स भी है, थके हुए भी है बंदे, पता नहीं भूल गया क्या 5 सब्स्टिट्यूशंस, पता नहीं पहले टाइम ट्रैवल में चले गया। आई डोंट नो व्हाट टू से ब्रो, आई रियली डोंट नो व्हाट टू से। दैट्स व्हाट वी गेट समटाइम्स फ्रॉम पॉच। बहुत ही ज्यादा वेट करता है एंड दैट्स इरिटेटिंग एज फक, बट क्या कर सकते हैं यार, दैट्स अ रियलिटी। कलयुग है भाई चेल्सी, एज अ चेल्सी फैन। आई नो 2 ही साल पहले हम जीते थे क्लब वर्ल्ड कप एंड ऑल दैट, लेकिन कम ऑन, वी आर फार फ्रॉम इट फॉर फ्रॉम लास्ट 5 years रियली, इफ यू आस्क मी। लीग फुटबॉल में और वही चीज मैं देख रहा हूँ फिर येट एंड अगेन हैपनिंग। बट कोई नहीं, वो एक लार्जर पिक्चर है जो हम बात करेंगे मार्च ब्रेक में। दैट विल बी द राइट टाइम टू डिस्कस ऑल दोस थिंग्स। अमन बोल रहे हैं इनवाइटिंग अननेसेसरी प्रेशर विल ओनली रिजल्ट इन अनदर गोल। या दैट्स अ फेयर पॉइंट। तो आप बोल रहे हो मे बी इट्स बेटर टू गो एन अटैकिंग सब्स्टिट्यूशन अगेन। हाँ, ये मैं अग्री करता हूँ। मैं खुद बोल रहा था आई वुड बी हेजिटेंट टू प्ले कैसेडाई फॉर एनीथिंग मोर देन 40 minutes, लेकिन नाउ अभी 22 minutes प्लस स्टॉपेज टाइम तो खेल ही सकता है बंदा यार, एज मच एज बेसिकली इन एक्सपीरियंस है, बट भाई है यार स्पार्क बंदे में। Mudryk or Sterling at left wing back. I would rather have Sterling because of experience. I hope वो यूज करे experience for a change. एक शॉर्ट क्रॉस है नहीं, अरे नहीं बचा लिया लिवाई कॉलिन ने, आई थिंक गोल। शिट मैन, व्हाट अ फैंटास्टिक गोल, एंड वीसा कहीं ना कहीं डिजर्व्स दिस गोल। व्हाट अ फैंटास्टिक गोल, सेकंड बॉल, चिलवेल एंड लिवाई कॉलिन क्लियर इट, एंड चेल्सी आर इन द मड येट अगेन ब्रो। Chelsea are yet again in the mud. What a fantastic goal यार, यहाँ पर Chelsea winner not coming looks like when Brentford winner coming. Can't argue with that goal much. हाँ, वापस से क्रॉस अलाउ किया, लेकिन वो क्लियरेंस अच्छा नहीं था। But you can also argue that was unstoppable, that bicycle. एक second, Mikhail is in the house. I'll just add him. I just want to watch the replay. Seriously, frustrating as Reguilon cross not dealt with properly. Or again, what a goal, yaar. I think as much as our cross defending is horrible, sometimes you have to just stand up and applaud. I don't know. लेकिन 2-1 हो गया यार, मतलब I don't know how to feel अभी, मतलब it's so bad यार। एक सेकंड में मैकाइल को ऐड कर रहा हूँ गाइस, सब लोग मैकाइल ओपी हो जाए इन द चैट as much as they are losing, and अब तो भाई 2-3 अटैकिंग सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ेगा। अब तो आज तो लगनी वाली पॉच को सोशल मीडिया की यार, सब चीज बोलो। मैकाइल, वर्स्ट केस सिनेरियो ब्रो। यार एक मिनट ठहर जा, मेरा ऑडियो इशू चल रहा है यहाँ पे, लेट मी जस्ट फिक्स दिस। नो प्रॉब्लम, मैकाइल इज फिक्सिंग इट। बिल्कुल आई एग्री विद ऑल द कमेंट्स कमिंग इन। मैं देख रहा हूँ कमेंट्स को। अगेन हमने बोला था गोल आने वाला, आई डिड कॉल इट ब्रो, ऑल्दो हमारी प्रेडिक्शन अलग थी, लेकिन जैसे हमने शुरू किया था सेकंड हाफ में, क्लियरली डिस्पाइट अस मिसिंग अ सिटर, दिख रहा था वो क्या होने वाला है वो। क्योंकि व्हेन यू डोंट हैव इन अ सिचुएशन जहां पर ब्रेंटफोर्ड आर नोन टू क्रॉस एंड अटैक ऑन द हेडर्स, आपके पास थियागो सिल्वा है बेंच पर, आप यूज नहीं कर रहे हो, और आप दिसासी को यूज कर रहे हो, ऑल्दो ही वाज क्लियरली टारगेटेड। बट अब अभी मतलब एट बेस्ट गोल होगा, और वो भी आएगा क्या, आई डोंट नो।
I don't know, bro. मतलब Mikhail, let me know whenever your audio fixes, bro. I'm ready. But I think Mikhail is rejoining. चलो भाई, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है. मुड्रिक इन, एंजो आउट. क्या बोलेंगे यार, मतलब इतना इतना ज्यादा हॉरिबल सब्स्टिट्यूशंस होते हैं ना, मतलब. एंड दैट इज द रीजन व्हाई ही डजंट गिव अस दोस वाइब्स. दैट इज द रीजन. अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं, देयर इज नो पॉइंट ऑफ पॉच आउट राइट नाउ, बिकॉज द पॉइंट इज वी ऑल नो कि लीग में बेस्ट केस सिनेरियो 7 था. वी ऑल नो दैट रियलिटी वो है. ठीक है. और यस, एज चेल्सी फुटबॉल क्लब हमारे मीडियोक्रिटी स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए. एब्सोल्युटली हमारे एक्सपेक्टेशंस हाई रखने चाहिए डिस्पाइट ऑल द यंग प्लेयर्स. लेकिन हमने स्पेंड किया है, एंड आई गेट दैट. बट अभी भी एफए कप का 1% चांस है. मैं तो बोलता हूँ दीज गाइज प्ले बेटर इन द कप कॉम्पिटिशंस, एंड दैट इज क्लियर. एंड प्लेयर्स आर आल्सो टू बी ब्लेम्ड as much as the coach is to be blamed more, for sure, especially waiting till the 67th 68th minute yet again. I don't know, man. Mikhail, दुख Hey दर्द bro, पीड़ा sorry, यार खत्म होगा. technical difficulties today. I'm just trying a setup without my regular setup, so I apologize. Okay, okay. Thanks for having me on. Sorry to join on a down note. I just saw the bicycle kick goal. सीरियसली यार, लेकिन मिकाइल, मतलब हम तो बात ही कर रहे हैं काफी हफ्तों से, बट द वे पॉच इज इन दिस गेम, इट इज अ क्लियर केस ऑफ, मतलब वी वर इन दैट प्रेशर सिचुएशन और आप क्लियरली टारगेट किए जा रहे थे, स्पेशली दिसासी इन डिफेंस एंड काइसेडो इन मिडफील्ड. वो क्लियरली टारगेटेड बाय द ऑपोजिशन स्ट्रेंथ, वो जो है फिजिकल स्ट्रेंथ वाला जो ब्रेंटफोर्ड रखती है. एंड येलो कार्ड मिला है उनको फॉर अ चेंज अगेन. बट उस मोमेंट में don't you think Poch should have made a substitution for once, especially जब आप 1-1 है, to get on some experience on the pitch? यार वो बात ये है कि आप फुटबॉल टर्म्स में डाइसेक्ट कर लो उसको, लेकिन आई थिंक इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन. वो थियागो सिल्वा की वाइफ was in social media criticizing Pochettino, and now Thiago Silva is not playing. I mean, 1+1 is 5. या 2+2 is 5. इस वक्त तो मेरे ज़हन में वही चल रहा है. Like बात ये है कि Pochettino की जो The vibe is choices not होती the हैं. same when it comes to Thiago Silva for the club and the club to Thiago Silva. Put it that way. हाँ, so वो है, there is a disconnect there, and writing's on the wall. He's probably on the way out. तो वो इसलिए उसको नहीं खिलाना चाह रहे. But ठीक है, that aside, I think Thiago Silva, they cannot take anything away from him in the fans' eyes. And उसने जो contribution करनी थी to the club, वो कर चुका है वो already. Like we won the Champions League with him. We won many trophies with him. 3 trophies I think we won with him. So he has nothing to more to give. वो ये है कि experienced player है. But I think tactically back three हमें भूल गई है खेलना, किस तरह खेलनी है, क्योंकि वो जो गोल हुआ है उसमें in the box around the guy that took the bicycle kick 5-6 yards there is nobody. He's standing alone. So that tells you कि defensive organization in a back three. Anticipating that, right? Basically. It's not just कि आपने back three pick कर ली है starting lineup में and now everything will be hunky dory, right? You have to know positional awareness होनी चाहिए टीम में, कैसे खेलना है. आपकी हर गेम में बैक लाइन आपकी डिफरेंट होती है. आपकी give me more than 2-3 games in the season जहां पे we have played with the same back line 2 games in a row, right? It will be maybe once, maybe twice in the whole season so far. So I'm not surprised that we make mistakes like this. However, मेरा तो like I'm a little bit of I watched the game with my emotions on my sleeve. तो वो जो हमने दूसरे एंड पे जो चांसेस मिस किए, मैं तो उनको देख के सर पकड़ के बैठा हुआ हूँ कि वो ओपन गोल चांस था where we were 2-on-1 था या 2-on-2 था, whatever, and we couldn't convert that. Like what was that? Like that to me was worse than this goal, क्योंकि ये तो चलो बाइसिकल किक मार के अगले ने किया, वहां पे क्या हमने गंद मारा है जो we had the whole goal and we found a way not to score. So this score line is our own fault, yes, but we gave away so many chances to score ourselves. तो बात वहीं पे आ जाती है कि as a serious team, if we cannot convert our chances, then how can we seriously expect results? तो मेरा ये मतलब आज भी 3 चांस मैं बोलूंगा. जैक्सन बिफोर ही स्कोर्ड द गोल ही हैड 2, एंड ऑफ कोर्स पामर का तो मतलब फॉर पामर स्टैंडर्ड्स दैट शुड हैव बीन अ गोल, एंड लेट्स बी रियल. और वो शॉट ऑन टारगेट होना ही था और वो गोलकीपर वाज क्लियरली ऑफ द पोजीशन. तो मैं I don't get it. Like to me, मैं वहां पे ना, मेरा मेल्टडाउन वहां उन पॉइंट्स पे होता है जब वी मिस ओपन चांसेस टू स्कोर. इससे पहले भी था एक क्रॉस मारा था, चिलवेल मेड अ लेट रन फ्रॉम द फार साइड एंड हक दिया, पता नहीं पहले फर्स्ट मैन को हिट कर दिया. I was like, what the hell, man? This would be like
Like, if you go back 10 years ago, this was a goal every single time, 10 out of 10 times. अब हमारे पर 10 out of 10 times we miss it. So, like, I lose my shit when I see nonsense like that, because to me, that indicates these players are not serious. And ठीक है, I know कि, and I admit कि Chelsea as a club, we are supporters, we have to support. But मुझे जब bullshit नजर आती है, तो I lose my shit too. And this is See, bullshit. When as you as get a winger, chances I like cannot be that, positive. I cannot be positive. You're right. You're right. when we get chances like that, defensive organization we can talk to deaths about, because the point is that we have no consistent back line. So how can we be consistent? But front line, we are like, these players you cannot say are short of game time. Plus, one-on-one situations, you're a one-on-one with the goalie. You're one-on-one with one defender. That's not team dynamics. That's individual football acumen. Okay, how can you beat your first guy and get a shot on goal? It's not hard. I mean, it is hard. Obviously, ये professional players हैं. Who am I to say this? But I'm just saying that, like, the results we expect, and then the game level that we see in those situations, it's all about scoring goals. Football is not about defending. Football is not about off the ball. Football is only about one thing: putting the ball in the back of the net. End of the day, that's the only thing football is about. And if we fail in that one metric, it doesn't matter how much good we do in the Okay, I rest got of it. the pitch. Chalo bhai, or a post. Luckily, Petrovic, I don't know, Regulon playing like a prime Chilwell and Chilwell playing like a worst Regulon, bro. आपका मैच सही थे क्लॉक क्या है यार? 7709, 7710, 7711, 7712. मैं ज्यादा पीछे चला गया हूं आपसे. रिफ्रेश कर दो एक बार, हो जाएगा, कोई नहीं. लेकिन गाइस, मतलब अगेन क्रॉस मिकाइल, मतलब आई एम टायर्ड मिकाइल, लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड. अगेन आप विंग बैक सिस्टम खेल, यू आर राइट, विंग बैक सिस्टम आपने खेला ही नहीं पूरा सीजन, विच आई नो इट काइंड ऑफ वर्कड इन द पास्ट, पर आपने खेला ही नहीं है. एक लीड्स के साथ खेल लिया, चल लिया, ठीक है, वहां पर भी आपने कंसीड किया ना, और यहां पर भी आपको दिख रहा है. मैंने एक चीज बोली थी प्री मैच में, मिकाइल, आई डोंट नो इफ यू एग्री, for this Chelsea, considering a workhorse ability apart from Gallagher और मे बी रिसेंटली काइसेडो, वर्कहॉर्स एबिलिटी ज्यादा दिखता नहीं इन टर्म्स ऑफ जब प्रॉपर वर्कहॉर्स वाला चीज ना, जहां पर आपको चाहिए जस्ट टू डिफेंड एट फर्स्ट क्रॉस. It's better to for this Chelsea to play a fullback with a winger so that you have a double protection almost, कि भाई आप एटलीस्ट देयर आर टू चांसेस फॉर अ क्रॉस टू बी सेव्ड. यहां पर क्लियरली गिविंग एवरीथिंग टू दैट विंग बैक, जो एज इट इज विंग बैक खेला नहीं सीजन. आप रॉन्ग करोगे. लीवाई कॉल गेटिंग सब्ड ऑफ गाइस विद 12 मिनट्स लेफ्ट टू द क्लॉक, और एक अटैकिंग सब्स्टिट्यूशन हो रही है. स्टर्लिंग कमिंग ऑन लास्ट 12 मिनट के लिए. तो अब क्या खेलो, बैक फोर हो गया, बैक फोर जा रहे हैं. Anyway, sorry for my rant there, but वो आपने मुझे बुला लिया, मुझे आना पड़ा. मैं पहले ही खोल रहा था. लेजेट है भाई. अब तो मैं कहा, यू नो मोर देन एनीथिंग भाई. हमने खुद बोला था, रिमेंबर एक चीज हमने बोला था जब इन पॉच फर्स्ट लिंक हुआ था, द मोमेंट थिंग्स गो बैड अगेंस्ट पॉच, एफ ऑफ पॉच हो रहा है इन द स्टेडियम और अवे स्टेडियम में हो रहा है, वो होने वाला ही था. एंड वी ऑल न्यू दैट वुड हैपन. वी ऑल न्यू, डिडंट वी? एंड दैट वुड हैपन बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, एंड यहाँ पर फोर्सा बारसा ने रिमाइंड भी किया, एज मच एज बेसिकली ही हैज डन मोर विद लिटिल रिसोर्स, आप यंग प्लेयर्स को बनाए हो, उतना टाइम एट चेल्सी वन यू विल नॉट गेट, वन विद द फैन बेस, एंड सेकंड हैव दे साइंड द प्लेयर्स to be invested and committed to the project as much, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज में दिख नहीं रहा है. ठीक है, वो क्लियर है. आपने थियागो सिल्वा वाला ऑफ द पिच वाला मोमेंट बताया था फॉर एग्जांपल, एंड स्टर्लिंग का हमें पता ही है, वर्क रेट हैज बीन सो बैड. अगेन मतलब इन गेम मैनेजमेंट, that is what you need balls, right? And that is what, sorry, pardon my language, the reality is that Pochettino, I cannot be positive Mikhail right now, और मुझे पता है that कहीं ना कहीं सारी एटलीस्ट फुटबॉल खिलाता था और रिजल्ट देता था और टॉप 4 ले आया था हमें, लेकिन सारी का हमें पता था फिक्स एवरी मैच में 65 मिनट्स में बार्कली टू कोवाचिच, कोवाचिच टू बार्कली सब्स्टिट्यूशन. यहाँ पर उससे भी वर्स हो रहा है. तो यू एग्जैक्टली नो व्हाट आई नो. इन अ गेम जहां पर आप 11th हो, how can you not make substitutions to change something, especially when you have 3 yellow cards on the pitch and you have 3 wingers on the bench sitting, and you have to say that भाई आप जो बोल रहे थे ना ऑफ पिच, is it a reason of Pochettino having just a short-term contract, you think? 100%. And it's not just Pochettino. I would argue this for some of the names, some of the bigger names of the bigger managers that we have hired in the past. They don't fucking care about the club. They just care about the fact that they are there for their contract. Business. और उसमें whatever suits them, they do. Club बाहर में जाए,
And इसका prime example, I'm sorry, it's a hot take, but is that we let Salah and De Bruyne go back in the day. It was the भाई same thing because exactly. it did not suit the that moment, and they said to hell with the next 10 years of the club, we don't care, let them go, right? And as fans, that's where little part of me died. Okay, yes, club legend, but selfish move right there, because that's where you have to show that you're a legend, and hang on to those kind of talents, because okay, this will decide the next 10 years of the club even after I'm gone. Even if the writing's on the wall that I'm on the way out, you have to have that love for your club to do the things that afterwards your club thanks you for even years after, right? तो वो वहां पे मुझे ठीक है, I love the guy too, लेकिन I think वो एक disappointing run थी, and वो तो जोजे था, ये तो पोचेटिनो है. इससे पहले वो पॉटर था, इससे पहले जो लैम्प्स है वो एक और ही कहानी है. But even Tuchel for that matter made some decisions that we would scratch our heads कि यार ये क्यों कर रहा है इस तरह. So there were many things, but अब तो ये situation है कि we don't know what side is up anymore as fans. स्टर्लिंग क्रॉस भाई, कॉर्नर मिला Everybody ball watching. चलो भाई. कॉर्नर हो कॉर्नर गया. से कुछ नहीं होने वाला भाइयों, कॉर्नर से कुछ नहीं होने वाला भाई. यू हैव टू बेसिकली फॉर्म दोस टू ट्रायंगल्स एंड गेट इन. बट अगेन इसमें बेस्ट केस ड्रॉ ही लग रहा है मुझे. रियलिटी वो भी यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक होने की कोशिश कर रहा हूँ. बट गाइज अगेन वी हैव अ चेल्सी न्यूकासल गेम कमिंग अप प्रीमियर लीग में, एंड देन वी हैव ऑफ कोर्स आर्सेनल गेम तो पोस्टपोन हो गया, तो लेस्टर गेम. आई थिंक these are the 3 games and then March break and Poch is gone. I think यहाँ पर let's see. Gallagher in the box, लेकिन I think did he take a challenge? नहीं, I don't think it's a penalty. I don't think it's a penalty for sure. लेकिन भाई आज ऑनेस्टली मैं जितना पॉजिटिव बोल रहा था दैट अभी मार्च में सैक करने फायदा नहीं है एक्सेट्रा, मतलब पीपल प्लेयर्स आल्सो, मतलब बोलना पड़ेगा आफ्टर दैट कैराबो का फाइनल. यंग टीम है बट आई नो एक पामर का चांस, लेकिन और एक गोलकीपर ऑलमोस्ट स्पेल्ड इट. कॉर्नर है, third corner in 3 minutes. What's the point? यार try and basically get an extra man and attack. क्लब स्टेटमेंट ना जानी चाहिए तो वी हैव पार्टी. अरे भाई देखते हैं चिराग अगेन. FA Cup is the only thing which is keeping FR पर बोला गया भाई. Disaster who? Disaster who? Far post में nice cross on the left hand side by the way, किसका cross का, लेकिन I don't know किसका cross था भाई. I totally missed it, but यहाँ पर 221 कर दिया मैंने स्कोर लाइन. इट इज डेफिनेटली ऑफसाइड तो नहीं था, मैं ऑफसाइड चेक का वेट कर रहा हूँ. हाँ, चेल्सी का तो एक्स्ट्रा चेक भी होगा, वी नो दैट. लेकिन अगेन पामर ही था. पामर विद एन असिस्ट. ओह लवली मैन, इट्स ऑनसाइड. गोल भाई, गोल है. या चलो अगेन Disasi makes up for his horror show on the other end. बट कोई नहीं भाई. आई डोंट नो, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड पीपल बोलोगे यार मैं भी अभी डेल्यू आई नो अभी भी विक्ट्री आ गई तो कहीं ना कहीं वी आर पेपरिंग ऑफ द क्रैक्स येट अगेन. बट आई होप अवे फैंस, आई नो बहुत डिफिकल्ट बोलने वाला, लेकिन एनी अवे फैंस बाय चांस सुन रहे फ्रॉम GTech कम्युनिटी स्टेडियम, प्लीज सिंग योर हार्ट आउट. इट्स वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ. आई नो एफ ऑफ पॉच होता था 3 मिनट पहले, हमने खुद गाली दिया था, बट आई थिंक दिस मैच इज देयर ब्रो. This match is there for the taking. We have a lot of forwards on pitch. To be honest, हमारा जो actual Chelsea का जो crowd है ना, जो supporters in ओए what a through pass, come on Sterling, नहीं यार, Sterling भाई taking so much time भाई क्रिसमस से, और दे दिया. कोई नहीं गोलकीपर पैरों में उसके फंस गया, उसके पैरों में रह गया वो, वरना he should have gotten it out to the guy making the run on the left. I don't know पावन था कौन था. वो तो गोल था डेफिनेटली. 2-2 है. आई थिंक मैं थोड़ा 1-2 सेकंड आगे हूँ आपसे, अपॉलॉजीज. मैंने रिफ्रेश किया तो मैं 1-2 सेकंड आगे. ये क्या हो गया, ये क्या भैया, तो प्रॉपर कलियुग आ गया भाई. ये क्या, ये कैसे हो गया. लेकिन भाई स्टर्लिंग आई डोंट नो भाई, हेवी टच 1 सेकंड के लिए आप बोलोगे, बट एट द सेम टाइम गोलकीपर केम आउट ऑफ द ब्लॉक्स क्वाइट अर्ली. चलो Spurs come back. To be very honest, Vikrant, big up to Spurs, and I know we are a fan channel for all to see. At this point in time, I don't fucking care, bro. Sorry, bro. I don't care right now. All I want is right now. Yes, of course, we'll discuss about Poch and the future, etc. But right now, it's important to kind of stay. Come on, drive into goal. Come on. Nice ball. अरे भाई रुकना नहीं है यहाँ पे. Caicedo should be doing better, but Chalobah not doing too badly, saying that I do not foul, और Chilwell distribute करता है. पामर यार अर्ली बॉल देना था ना गुस्टो को. क्या कर रहा है पामर यार, गिव द बॉल टू गुस्टो. अर्ली बॉल देना चाहिए, मतलब वी आर वेटिंग फॉर सो मच टाइम ना, तब तक वो एक और. मैं वही तो, अब देखो फिर पामर इज डूइंग द सेम थिंग, ही इज जस्ट हैंगिंग ऑन टू द बॉल. क्या कर रहा है यार. हां, अभी कुछ चेंजेस आई डोंट थिंक आई विल डू ब्रो, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई थिंक वी आर गुड
because we can also मतलब खा भी सकते goal. I know it's negative, but we have enough forwards यार. मतलब shape है. I can see a shape there for a change. Again, Mudryk, Palmer, Sterling been behind Jackson, right? So I think it's good. मतलब हाँ, again, why don't we go 4-1-4-1? अरे आया है क्रॉस, लेकिन I believe फ्री किक दे दिया हमने. चलो कोई नहीं विक्रांत भाई, सब लोग जो भी यहाँ पर बिग अप, थैंक्स फॉर द अपडेट. मिकाइल, would you go nuts and just go one more forward, have a proper Mourinho Chelsea versus PSG at Stamford Bridge wala vibes, where we had Dembaba, Fernando Torres, and God knows भाई कितने लोग थे, Samuel Eto'o on the pitch with Aspilicueta playing as a forward and with Cahill putting that ball. I don't know, मतलब भाईजान वो Poch is not made like that. लेकिन I think there is a goal in the game still. The way both teams are playing, so इसलिए we मुझे have भी to hesitant हो रही है. But Visa is going off. be careful. Visa is going off. I think this can be the moment where Poch should make the change. I think थोड़ा सा मोपे आ रहा है क्या? कौन आ रहा है ब्रेंटफोर्ड के लिए? मोपे again is good, but Visa is a different beast on the counter ना. तो I think यहाँ पर उन्होंने भी खाली एक ही substitution किया है ना अभी तक, surprisingly, which is actually a little bit surprising. नहीं यार, मोपे नहीं आ रहा, तो they have gone defensive, guys. They have got ultra defensive, looks like it, extra man coming in for them. लेकिन हमने, अगर आप लोग देख सकते हो, मतलब मिखाइलो मुड्रिक, रहीम स्टर्लिंग is all what they've come. We have a lot of players on the bench though. Again, Madueke, Caceres, what I know it's a very crucial situation. You don't want to take off your experienced so-called players as much as Caceres compared to ज़्यादा है बस Enzo and Caicedo, but Caceres probably is a better off option right now rather than getting a forward like Madueke. एक वो लड़के को डेब्यू दिया था इसने लास्ट गेम में, वो इंटरेस्टिंग था. Madueke actually, yeah, the 3-2 role, Madueke did not do too badly. Chilwell over the top, छक्का मार दिया मेरे भाई. कोई नहीं. The best way is again, I think Mudryk is not playing off the byline. Is it a reason क्योंकि Brentford counter करती है? That might be the only reason. लेकिन attacking wise में, why don't we have Mudryk on the wide as much as last match में चला था as a number 10? Well, what would you prefer, Mikhail? Mudryk right now, you would have him playing wide or playing him centrally? Sterling को ball मिला, Palmer. Oh, there's a break going on. Giving to Gusto को दे यार, right side से overlap कर रहा था. Caicedo giving it back to Palmer. In between the legs, Palmer nahi yaar, not a great shot, and gives it directly to the goalkeeper easily. And यहाँ पर लग रहा है last 2 minutes and stoppage time. It's looking like a draw as things stand, but come on Chelsea, come on Chelsea, come on Chelsea, come on Chelsea. Yes, बहुत negativity है. 2-all मेरा prediction था in the preview show, लेकिन the way that we play नेगेटिविटी नहीं लेके मैं उसमें ऐड नहीं करना चाह रहा, लेकिन फ्रस्ट्रेशन जरूर है, बिकॉज एंड इट्स नॉट बिकॉज, मेरे हिसाब से इट्स नॉट बिकॉज ऑफ आवर डिफेंसिव परफॉर्मेंस, इट्स बिकॉज ऑफ ऑफेंसिव चांसेस मिस्ड. वही हर गेम में वही रोना है. लेकिन जब आप चांसेस क्रिएट कर रहे हो, फिर आप मैनेजर को किस तरह, हाउ कैन यू ब्लेम द मैनेजर फॉर यू नो द स्कोर लाइन, अगर आपने चांसेस क्रिएट कर दिए विद योर सिस्टम एंड यू डिडंट टेक देम. अब वो आई डोंट नो कि वो लाइक हाउ डू यू डू दैट, हाउ डू यू फिक्स दिस, बिकॉज इन प्लेयर्स में तो यही नजर आ रहा है हमें कि यार one minute we are brilliant, the next minute we're मैं सिंपल सा एग्जांपल बोलूं मिकाइल, इट इज नॉट अ न्यू थिंग. लेफ्ट फुटेड शॉट्स इन दिस, मतलब, और रॉन्ग फुट से शॉट लेना कौन ले सकता है? मतलब वी ऑल नो दैट द ग्रेट्स ऑफ द ग्रेट्स ऑलवेज कुड यू नो हैव दैट एबिलिटी टू काइंड ऑफ जस्ट स्ट्राइक. हम कंपेयर नहीं कर चाहते विद द नेम्स, बट वो दिख रहा है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सीजन. अ लॉट ऑफ देम, जैक्सन, एंजो, गैलेगर इवन, मतलब in the from the wrong foot, Palmer from the right foot. But these are issues, proper issues that we have to discuss. मतलब what are we doing in the training pitch? If you think about the project के भी there are young players, तो उनके साथ basically यही this is the vision, right, कि you will develop these players to be whatever they can be, right? जब आप एक mature player लेके आते हो, you cannot expect them to change you know their game or improve their game that much. 5 minutes of stoppage time, by the way.
भाई मुझे गंदी वाली फीलिंग आ रही है. Brentford on the attack, although it's 4 versus 4. Oh no, oh no. They are kind of cornering us, and nice tackle by Caicedo. भाई brilliant tackle considering वो yellow card में, and of course वो yellow card was very debatable. Gusto on the right hand side counters back, through ball. यहाँ पर Mudrik, come on, Mudrik, come on, clearly on foul, and he was the last man. Salah, but yellow card ही मिलेगा शायद because he was not directly on goal. Pretty sure he was in yellow card, but Mudrik space for once. भाई पॉच ने यूज किया मुड्रिक इन द सेंटर एंड नाइस थ्रू बॉल. डेफिनेटली गुस्तो, नाइस पेस, क्लियरली लास्ट वन था बट डायरेक्टली ऑन गोल नहीं था, एंड दैट इज व्हाई probably he'll get a yellow card. Again Poch is asking for red, but either ways that is, yeah, he did not get the go for the ball at all. He got the man only. Yeah, it's a blatant foul. Yellow card all day. लेकिन red card if he was directly on goal, yes. लेकिन थोड़ा सा wide. Who do you want to take it? I want Marcus Alonso, Ziyech. और जिरू भाई कल क्या मैच था भाई. मिकाइल वॉच द हाइलाइट्स ऑफ लास्ट नाइट. मुड्रिक इंजर्ड है क्या? साला नहीं ना. स्टर्लिंग लेफ्ट फुट से नहीं लेगा यार, ये लेफ्ट फुटर का है. आई थिंक चिलवेल या पामर ही बनता है. राइट, व्हाई वुड यू टेक अ राइट फुटर भाई? ब्रेंटफोर्ड का इतना हाइट है. कम ऑन, व्हाई वुड यू टेक अ राइट फुटर मैन? You want a left footer to take it. Definitely should be. Really? Why? It should be Palmer and Chilwell, bro. Why is Gallagher standing there? अरे यार कर दो, जो भी ले कर दे गोल. Come on you Blues, come on Chelsea. इतने बार इतना टाइम वेस्ट करके भाई, because we don't get extra. चिलवेल को थ्रू बॉल, ये क्या गुस्टो को थ्रू बॉल दे दो भाई कम से कम. अरे यार कुछ तो खेले भाई. पामर शॉट इजीली ब्लॉक्ड येट मैन. साला 5 मिनट लेकर घटिया मैन. आई नो इट्स अ ट्रेनिंग ग्राउंड रूटीन एंड ऑल दैट रबिश, एंड ब्रेंटफोर्ड को क्रेडिट देना चाहिए फॉर दैट प्रेसिंग, फॉर दैट सेट पीस, बट कम ऑन ब्रो, टोटली कंफ्यूज्ड एंड कोई जज्बा ही नहीं था यार. वी हैव टू बी 3-on-2 situation boys. Oh major, oh Caicedo, come on get the ball. Caicedo doing well but no. Sterling ball watching, coming back to help out finally, but not enough. Still Brentford ball. यार प्रेशर अपने पे ले लिया, फजूल हरकत की है. ये सारा उस सेट पीस से ये प्रेशर निकला एकदम. चलो बा, क्लियरली हैंडलिंग द मैन बाय द वे. लकीली फ्री किक नहीं मिला यहाँ पर क्लियरली. अरे ये अरे नहीं यार पामर. Come on, man! As much as you've been brilliant this season, man, there are certain things you've done this in match which is totally not on. He's just winded now. Oh, chalo, the ball is still in play. No, last के 2 मिनट है. 2-2 is again Brentford के साथ हम एक प्रीमियर लीग मैच जीते guys. I will take a draw because this वक्त the game is poised. Anything can happen right now, but yeah, and the fact is best case scenario in the league is anyway 7th, but मैं वो ये hope against hope वाला चीज मिकाइल, that क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव मोर इंजरीज. ब्राइटन आई बिलीव आज, if I'm not wrong, they were losing the last when I saw. I don't know if they've come back. So yes, Brighton losing 3-0. So for all we know, there is a slight chance that we can still get Europe by league. But आज का ड्रॉप करेंगे तो भाई और भी मुश्किल है. We all know that. Regular every point drop, doesn't help 100%. लेकिन इतने chances जो मिस किए हैं तो I don't know. I'll from the jaws of defeat, we are at least going to share the spoils. But let's go for a goal. Let's go for a goal. Let's go for a goal. कोई नहीं. I'm not saying let's not. Shit. No, get that header. चलो बा OP यार, very important header. But second ball वो जीतते हैं वापस से. लेकिन Sterling clearly fouled. भाई last 40 seconds. I hope referee adds on 2 more minutes. I hope and pray. 2 मिनट कम से कम स्टॉपेज टाइम में लिटरली स्टॉप हुआ था गेम प्ले. भाई सेम ही रहेगी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कंसिडरिंग दैट अदर टीम्स हैव आल्सो काइंड ऑफ हैड मिक्स्ड रिजल्ट्स. आई डोंट थिंक इट्स चेंजिंग एज थिंग्स एंड 11th ही दिख रहा है मुझे फोर्सा बारसा, व्हिच इज टेरिबल. आई नो, नॉट टू बी प्राउड ऑफ एनीवे. टोनी को रेड कार्ड दे दो कोई, पुनिन बोल रहे. लेकिन यहाँ पर गुस्तो keeping the ball, Gusto clearly fouled. Nice played when Palmer just about almost tackled, लेकिन keeps the ball. Last के few seconds guys, come on. Referee whistle मत करता. Sterling ने अभी भागा जाकर.
No way, no way, man. Sterling, what are you doing, man? What are you doing, bro? अब कॉर्नर जीता है, स्टर्लिंग कॉर्नर जीता है. Come on, man, that's a corner, यार. कॉर्नर नहीं था क्या? Come on, यार. Sterling, seriously, man. Seriously, man. No way. No way. भाई लेकिन एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए था रेफरी को यार, और एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए था रेफरी को इन माय ओपिनियन. लेकिन हाँ, उसके लिए रोऊंगा नहीं. द फैक्ट बीइंग दैट देयर वर चांसेस क्रिएटेड बाय बोथ द टीम्स, स्पेशली सेकंड हाफ में. तो भाई ब्रेंटफोर्ड बहुत ही धावा बोल दी थी और वी काइंड ऑफ रिएक्टेड सो लेट. ऑफ कोर्स डिजास्टर करेक्टिंग हिज मिस्टेक, नॉट बीइंग अ डिजास्टर फॉर वन व्हिच ही हैज शोन इन रीसेंट मंथ्स. बट इट इज ओवर गाइस, खत्म. आई डोंट नो गाइस, यूरोपियन फुटबॉल को एक बार दे देते गाइस. कम ऑन. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. Yeah, I don't know if it was, I know these are important things. Like on the day, we're lucky to get a draw because काफी वो जो header मारा था जो post को लग के बाहर आ गया था, that could have been a goal. We could have been 2 goals behind. So we kind of escaped. यूरोप जो है वो ठीक है. आई अंडरस्टैंड कि फैन होता है and we want our team to be in Europe, लेकिन performances की basis पे तुक्का ही होगा वो. Like I don't know, maybe that's the true supporter would support तुक्का as well. लेकिन इस वक्त मुझे like मेरा तो ये खून खोल रहा है कि as a football team this is what you do, right? So if you cannot finish your dinner, then like यूरोप जाके क्या कर लेंगे? I don't know. नहीं, मुझे but थोड़ा सा मेरा यही है. देखो, आई नो दैट पीपल हैव बीन सेइंग रिसेंटली, जब मैं ट्राइंग टू बी पॉजिटिव और मैं खुद नेगेटिव हो रहा था प्रीवियसली, लेकिन अभी क्यों हो रहा हूं ना, तो ओनली रीजन व्हाई आई स्टिल नीड दैट यूरोपियन फुटबॉल ऑनेस्टली मिकाइल. फर्स्टली, हाँ, यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग इतना पुल नहीं करते प्लेयर्स को, आई गेट दैट. बट ये लोग जो है ना, स्पेशली द मुड्रिक्स ऑफ द वर्ल्ड, द एंजोस ऑफ द वर्ल्ड, for me they are playing well in certain cup competitions, in certain clutch moments at best. वो भी अगर हम बहुत ही ज्यादा soft voice पे बोले, soft words बोले, they have to learn how to kind of take the game by the scruff of the neck by playing multiple competitions, by having that responsibility. एक owner से एक चीज होती है, and I think that's the problem even with Poch. मतलब is he really feeling that ये एक टीम है जो मुझे, आई एम नॉट गोइंग टू वेट, जो पॉटर वाइब्स दे रहा था कहीं ना कहीं, दैट आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर लाइक 2 3 4 सीजंस, बट आई एम गोइंग टू मेक इट इन रादर 1 or 2 सीजंस व्हाट आई वांट टू मेक, राइट? बिकॉज आप एक्सेप्ट करते हो ना, एंड दैट इज व्हाट समटाइम्स वही है, दैट द बैलेंस यू हैव टू बी पेशेंट, बट एट द सेम टाइम यू कैन नॉट बी एक्सेप्टिंग. मे बी द प्लेयर एट सम पॉइंट वो एक्सेप्ट कर रहे हैं सबकॉन्शियसली, बाय कप इज वेयर वी आर प्लेइंग आवर फुटबॉल फॉर दिस सीजन, और हम व्हेन वी आर गोइंग इन द लीड, हम थोड़ा सा वही है, वी आर सबकॉन्शियसली टेकिंग ऑफ द गियर. Watch on the sidelines subconsciously बहुत ही ज्यादा वेट कर रहा है. अब आई डोंट नो, आज तो एक टिपिकल रीजन था, वी नीड व्हेन वी आर सेइंग व्हाई वी नीड यूरोपियन फुटबॉल, क्योंकि प्लेयर्स लाइक मुड्रिक, विद मडवेके, आप जो साइनिंग किए ना इतने सारे, आप उनको मिनट देना चाहते हो. दे वांट देम टू काइंड ऑफ मैच्योर मोर. आप उनको इन मोमेंट्स लाइक टुडे आप नहीं लाओगे थोड़ा जल्दी. Did everyone, do you all agree? Mudryk and Sterling, although Sterling हगा था in the end, डेफिनेटली एक पॉजिटिव तो लग रहा था ज्यादा. वी वर बेटर गोइंग फॉरवर्ड मिकाइल व्हेन देम बोथ केम ऑन, करेक्ट? they were. Yeah, ठीक है, मैं hypercritical नहीं हूँगा. I still think it's a slow burn project. I still think Pochettino is lacking that awareness जो आप जिस तरह शो कर रहे हो ना, कि this is a critical game. This is not a regular game. This game has repercussions outside this game. Those 3 points it feels like now after the game is over, all said and done, it feels like 2 points lost, right? So that kind of mentality. Lekin to be fair, draw is a fair result if you are being a neutral. In the 90, from the starting whistle to the final whistle, draw is a fair result. After the draw, you look back at the situation, like you're saying, European football hangs in the balance, and did we just make our lives so much harder in that conversation? To just be in the conversation, I'm surprised. मुझे तो पता ही नहीं था. So thank you always for bringing the thinking footballers perspective. But ये चीज आप एक जोजे से एक्सपेक्ट करते हो, to have that kind of awareness. ये चीज आप एक Pochettino से unfortunately एक्सपेक्ट नहीं करते. करते हैं लेकिन दिखती नहीं है Pochettino में इस टाइप की अवेयरनेस के यार ये हमारा आज का सीजन का फाइनल है, this game, right? That ability to create that
buy-in, yeah, that get the team up for the game, वो नहीं है उसमें. और फिर जो चेंजेस होते हैं वो दे आर हेड स्क्रैचर्स, द स्टार्टिंग लाइनअप्स आर हेड स्क्रैचर्स, तो वो कंफ्यूजन ही रहती है. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यही है फिर भी कि वी हैड द चांसेस टू विन दिस गेम. Are we going to blame Potter for those? Sorry, Pochettino for those missed chances? That's where it ends for me. No, you cannot blame the manager for the players not doing what the players are supposed to do. The manager has to do what the manager has to do. You blame him for those things, right? But right today in this game, we had 2, maybe 3 chances that were on platters. And if we are a serious team, if we want to play in Europe, correct. And second half, you pointed out one was Chilwell and one was absolutely Palmer, right? 4 chances proper. yeah. So if you are serious about playing in Europe, then why aren't they serious about taking those chances? Because to me, that's where we commit murder. That's where we do ourselves in. It's not at the planning table before the game. It's not at the sideline during the game. It's on the ball in those moments where we take those moments like training ground moments. कि ठीक है नहीं हुआ तो नहीं हुआ. मेरे हिसाब से that's criminal. That's what the difference is between a mature team and a young team, a team that does not understand the moment in the match when you're supposed to take the game by the neck and do what needs to be done. It comes and goes and they're just laughing with each other and walking away and you're just like, what the hell just happened? Because that's the moment where you let the game get away from you. So मेरे हिसाब से आप watch out team agenda will be out again. Lekin I think it's on the players. The manager set out with a team and a system that created dolly chances and we did not score them. Gusto, by the way, props to him. I think Gusto had a good game today overall. I think Caicedo बहुत अकेले बहुत काम किया. Although I know there was time when Brentford midfield was totally over us. लेकिन Caicedo, Gusto, I think last 1-2 महीने में और Disasi कहीं ना कहीं rectify किया अपना mistake to some extent as much as he was really targeted as well. I think these 3 special shoutouts है. Palmer had an off day. It'll be fair to say. I know he was very tired. So did Enzo. And maybe that is where you can say that हम एक वही killer instinct lack करते हैं in back-to-back games. I think yes, killer instinct is the problem, and I think when you're talking about being in Europe or not being in Europe, that's where I am almost on the fence, right? Kid, we don't deserve to be in Europe if we cannot finish our dinner, right? It's set up for us. Agreed. It's set up for us. Right, and we're not doing it. तो उधर जाके हमने क्या पुट लेना है, right? We cannot beat the, I don't know ये कौन सी टीम थी, Brighton थी, क्या थी, Brentford थी, like I don't even know the name. See, that is the thing we are in right now. That इतना desperate हो गए हम कि भाई हम हमारे टीम में इतना shit देख रहे हैं कि basically for whatever it is we feel that यार other teams are not even existing. लेकिन the reality ये भी है ना मिकाइल, अब हम बोल सकते हैं कि यार Brentford were probably I don't know एक आई नो एक रॉन्ग चीज है लेकिन वहीं पर पॉच आउट वाले वाइब्स आ रहे हैं. स्टर्लिंग को क्यों गाली दिया जाता है फॉर एग्जांपल, राइट? सो देयर आर सो मेनी टाइम्स व्हेन यू सी द इंटेंट ऑफ ब्रेंटफोर्ड इन द सेकंड हाफ अप अंटिल द गोल इक्वलाइजर केम वाज फार मोर देन द चेल्सी प्लेयर्स. और वो आप यू कैन से और पहली दफा नहीं है, एवरी टाइम बीट लीड्स बीट आई डोंट नो मतलब पैलेस वी हैव बीन प्लेइंग अ गेम ऑफ 2 हाफ्स. आप हाफ टाइम में बोलते क्या हो यार? मतलब बीट सिटी, इवन आई नो सिटी इज डिफिकल्ट, वी डिड वेल फॉर अ चेंज, बट आप ज्यादा यू गेट टू मच इन द शेल और इन गेम्स जहां पर यू हैव टू चेंज. आज भी मैं बोलता हूं, आई विल पुट यू इन अ डिफिकल्ट स्पॉट चैट एंड मिकाइल, यहां पर किसी ने बोला था मडवेके को लाओ और गौरव ने यहां बोला चैट में कि भाई खाली 2 सब्स्टिट्यूशंस किए. आई नो दैट you don't want to change too much in a young team because you want to be as much as possible in that understanding each other zone, but clearly when you have an extra substitution as an attacker और आपके दोनों मिडफील्डर्स जो मेन है वो येलो कार्ड, इनफैक्ट तीनों मिडफील्डर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग येलो कार्ड पर थे, was it not a case of just playing a very risky जो हम देखे in the past 4-1-2-3 with maybe just Caicedo sitting with because Enzo का game नहीं चल रहा था, we all know that, with putting in Palmer and Madueke as your kind of floating. Okay, Madueke last game in the 3-2-3-2 did play that kind of a role, and then you had Sterling, Mudryk and Nicholas Jackson. Because हम 11th position में Michael, I know आप जो बोलोगे that maybe it's an away game, looking at the chances जो Brentford ने किया that maybe a point
at the end of the day is fair from a neutral perspective. लेकिन क्योंकि हम 11th है मिकाइल and the only मतलब 1% chance जो है अब वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है in terms of getting the 6th 7th position, right? तो आप क्या बोलोगे? Was it not reason enough for Poch to make that substitution even late, be it even making substitution before 1 hour mark, जो करता ही नहीं सारा, पता नहीं क्यों. 100%, and like again, chat वाले भी जुड़े हुए हैं. No big up to the way, chat. sorry guys. So Mikhail, seriously bro, Liverpool की mentality yet again, man. They've scored like a last minute winner. There Liverpool you are go. winning the league. 9th minute of stoppage time, bro. If I speak, I'll be in trouble, but congratulations, Nosan was a Liverpool fan. 9th minute of stoppage time, bhai. Again, I've not watched the game to be commenting on that. Mentality, bhai, mentality. Mentality is also key. As much as 50-50 decisions will not, वो आपको लगेगा मैं रो रहा हूँ, लेकिन the reality I've seen that. Mikhail knows exactly what I feel. I don't say it better अभी के लिए. लेकिन Mikhail, please continue. I stopped there. नहीं बोला आप अंकित भाई जो बोल रहे हैं हम सब आई थिंक वी आर इन एग्रीमेंट. टैक्टिकली तो वो लेवल है ही नहीं पोचेटिनो में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट? बट इसमें जो सिचुएशन जो बन रही है वो लाइक जो एनालिसिस मेरा है, इन गेम चेंजेस I don't even understand his in-game changes, so I cannot even comment कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा होता. But is he there to just keep players happy? Is that his job? sometimes you get the feeling कि वही उसका checklist है, he has to just go through it to get अच्छा इसको खिला दिया, इसको खिला दिया, इसको कर दिया, इसको ये कर दिया, इसको नहीं खिलाना, इसको नहीं खिलाना. वो it's almost sometimes like that. सिचुएशन के मुताबिक ना स्टार्टिंग लाइनअप होता है ना चेंजेस होते हैं नॉर्मली. ठीक है, टुडेज चेंजेस आई काइंड ऑफ अंडरस्टूड बट ही अंडरप्लेड हिज हैंड. द गेम डिमांडेड मोर टू विन the game and he didn't do it. Like अगर दो substitutions किए हैं और we had a whole 3 substitutions left to do. What's the point? So lost opportunities कह लो या उसका mentality नहीं थी, mood ही नहीं था to win the game. But like even जो आप बात कर रहे थे कि 3 at the back खिलाया है, so 3 if you recall, 3 at the back was the mandate to get away from. So we got away from it, and we got away from it to the point where we don't know how to play it properly anymore. And by the way, we are playing it. Props, yaar. Mikhail, I remember all those late night streams that we used to have 2021 में. Remember हम सब एक चीज बोलते थे यहाँ पर, Mikhail अलग ही गाड़ी चलते थे. That is why we love Mikhail, man. Mikhail used to stick out his neck and saying it. And now that Mikhail is saying it, I agree with Mikhail. क्योंकि आप अगर उसी में जा रहे हो, वो वापस से शॉर्ट टर्म फिक्स है. मतलब while we want to fix it short term, लेकिन is it helping the mentality? Kyunki rather than being more resilient in 3 the back, which was what a Conte was while hitting it, we are not doing that. We are going in a shell. So it was ball watching. Everybody was ball watching. Somebody else is supposed to do something there. I'm not. So even the like, ठीक है, that's the another conversation is fitness, because yes, there are a lot of injuries. But I don't even see the fitness to give throughout the 90 minutes. Sometimes ये players जो आप देख रहे हैं कि दूसरे ball watching, जो Caicedo Chilwell की जो confusion हुई थी, वो nobody had the energy to run and claim the ball. Finally, Caicedo had to go back, do a recovery challenge and give away a free kick. That could have been a yellow, or was a yellow probably. Yellow मिल गया था उसको उसपे. So like situations like that, right? We just don't. And में Palmer को ball मिल रही थी, he wasn't passing it to Gusto. Right? That's basically fatigue. You're so tired that you've switched off. You don't know what to do in the moment anymore. Also, so मैं ये कह रहा हूँ कि और कुछ ना करो, और कुछ ना करो, कम से कम गेम फिटनेस में वर्क कर लो यार on the training ground. मैं वही बोल रहा हूँ कि आप फिटनेस एक चीज होता है, लेकिन आप वही अब वी आर टॉकिंग अबाउट सिस्टम्स एंड अदर थिंग्स. अब पामर, व्हाई इज ही नॉट एंटिसिपेटिंग गुस्तो? क्योंकि अब फ्रॉम द लास्ट 7 months में आप 6 months खेले हो with a fullback system, ठीक है? तो Gusto wouldn't have overlapped as much as what he was doing today, for example, right? तो वो चीज आपको communicate करना चाहिए. If you are a coach, in my opinion, you should communicate. Because हमने 3 दफा देखा, Mikhail has called out during the watchalong. First time when you see it, a coach or his coaching staff should stand up and shout when there's a stoppage, or even if there's not. भाई Mourinho पेपर में लिख कर देता था, whatever it is, just give the message. See, that is what it is. The intensity beat basically एकदम होता है ना, whatever it is, हम इतना try करेंगे. 100%. In game management, you're like an orchestra leader, right? You have to manage the game
from moment to moment, standing on the sideline. When you see something needs to be fixed, you don't wait till after the game dressing room conversation to address it. You fix it right there, right? And then you see the opportunity. You communicate that as well to the player. Ke ye karo instead of what you're doing. Yeah, ye karo to take advantage of somebody else. So yeah, like that's what one wants to see on the sideline. So some players, some managers do it, some managers don't. Poch does it sometimes, he doesn't do it sometimes. Generally speaking, Poch जो है ना वो lag कर रहा होता है tactically in the game. Like वो जो like you know that's the way to say it. कि वो करता है लेकिन वो जो करना होता है वो बाद में करता है. So it's almost like too late, right? अब it's just a formality to do what should have been done 5 minutes ago, or you know proactively before the match as well sometimes. तो है यार frustration है इस वक्त हम we can dissect it 20 million different ways. Chelsea being Chelsea, it was a Chelsea performance. We had highs, we had lows, and suddenly we draw it, and almost feels like we got away with it because we could have lost it too. So weird mistakes on the defensive end and weird mistakes on the offensive end. Sums up our season basically. You know, it's all been a bunch of tukas कि कभी गोल हो जाते हैं, कभी कभी नहीं होते, and you know, like we cannot become consistent, right? Consistently we're like this, inconsistent. But consistency in playing well, वो एक दो matches में हमें नजर आई कि we raised our game to the next level to play Man City, let's say for example in this season, right? तो लगा कि हाँ there is something there, right? कि ये it's not all imagination. There is a team here, there is a manager here, maybe there is hope here. But Ganta, man, next you're playing Brighton and you can't get a result out of it, especially when you had chances on a platter. Like किधर जाएं यार? कि मतलब कि as fans, like I want to be upbeat, but you know, give me something to be exactly, upbeat. you hit the nail on the head because of the fact that next we are playing Newcastle and it could have become a 6-pointer. अब वो हो गया, Newcastle have got a victory. Okay, we have got basically dropped 2 points. Brighton have lost, that has to somehow helped, but abhi bhi best case, I think it's almost gone. मतलब unless Manchester United really fall off, or maybe Newcastle, अब वही है, you can expect one team to fall off, not 3 or 4. Or West Ham, by the way, they've already fallen off and they're coming up. So I don't see them falling off, to be honest. So FA Cup, I don't know, Mikhail, abhi right now, क्योंकि आपने खुद बोला, abhi right now, as much as he's to blame and the players is to blame and the owners are to blame, the entire thing, of course, is a huge circus. बट मार्च ब्रेक आ रहा है. ऑफकोर्स आज जो होने वाला है सोशल मीडिया पे ऑलरेडी शुरू हो गया है. राइट नाउ आर यू अग्रीइंग विद बिपिन यहाँ पर दैट नो वी हैव टू just restart right now, or you say it's better to wait till the summer, get a better approach, better maybe हमारे पास ज्यादा options हो? For all we know, I know बहुत ही too good to be true है, or maybe it's not right because Michael ने बोला Tuchel had his own issues, लेकिन I think owners कहीं ना कहीं have to take the blame a lot because Poch has become a yes man. वो clearly दिख रहा है अभी. By the way, Michael Martin scored his first goal आज. It pains, bro. It pains. Trust me. और यहाँ पर हमारी left wing was literally not to be counted at all at times. Left wing so was like for all the joy that watching Gusto gives me in Reece James' absence. Like left flank तो था ही नहीं हमारा. It was like invisible. और जो एक दो chances आए हैं Chilwell के लिए वो भी he didn't make the most of them. So and like even by you know from the crosses from the right. So disappointing है, लेकिन अब क्या करें यार? We know our problem on our wings. Chilwell and Reece have this problem, right? कि they're coming back from injury when every time they're playing, right? So the match fitness जो है time लगता है. Chilwell had a few good games. आज की game was a little off the boil, I think, for me. And generally speaking, वो अभी भी like we're not really playing aggressive football on the left, right? So it's almost about you know protecting Chilwell in some way. So ठीक है, वो 3 at the back खेलने की कोशिश की. I didn't like it because our execution of it without Thiago Silva Actually, was poor. start ही गड़बड़ थी ना Mikhail. अब देखो last match में against Leeds, when you have kind of got a system, I know we played 3 at the back, but why did you first of all have 3 wingers on the bench? Mikhail, please tell me, which manager, when you are having so many injuries और आपके goals नहीं आ रहे, आपकी creativity और भी कम हो रही है month by month while we are trying to be solid, has 3 wingers on the bench. But again, coming back to the first question, guys, again chat में सब लोग तो बोल रहे हैं sack Poch अभी. 17th March to 30th March, there's a March break, infamous, and we've been there previously as well.
Of course, Chelsea fans especially know that. But Newcastle, most importantly, in my opinion, Chelsea versus Leicester. Again, game by game. I think it's about game by game. आज अगर वो हारता, then it would have been much stronger. Yes, because Brighton have dropped points. Technically, we still have a chance with the league for 7th, but वो realistically लग नहीं रहा है. But Leicester, it's a realistic chance of winning it, and we going to Wembley. But again, it'll be tapering of the cracks. People are saying in social media, most of them हमारे chat में भी बोल रहे, why wait till that? आप अभी March break में sack करो. Rather उससे पहले ही कर दो. Where are you? Because Lampard, if I remember right, when he got sacked the first time, I think he won a game technically, right? उसके बाद में sack हुआ था in a cup game in January. I think तब decide हो चुका था, but Correct. for whatever reason they kept him on for one more game. Yeah, the thing is, यार किसको लेके आओगे is the conversation. Like I react like as a Chelsea fan, Chelsea follower, like you know, we've changed 4 managers in one season too. So like क्या बोलें, क्या ही बोलें, right? So at some point it just comes down to किसको लेके आ रहे हैं. For the sake of changing is वो भी करके देख लिया, it doesn't work. कि just for the sake of changing manager बदल दो, right? तो किसको लेके आओगे इस वक्त, right? The point is कि how many times can you go back to your old girlfriends, right? So वो मैनेजर जो हम 3 दफा यूज कर चुके हैं, 2 दफा यूज कर चुके हैं, अब वापस उनके पास भागे जा रहे हैं, right? थोड़ी desperation नजर आती है, मुझे कोई plan नजर नहीं आता. It's wishful thinking, it's hoping कि they can do the same thing. ठीक है, Jose can come back a third time. It's a new management, so it will kind of be like a new setup. You could argue that Chelsea right now needs that kind of a profile of manager to bring them up a level. Lekin, with a young team, we know Jose doesn't work with young players to this extent. I'm not going to say he doesn't work with young players, but generally he likes experience in his teams. तो वो क्या होगा, वो फिर यही होगा कि आपने जो पूरा $1 billion खर्चे हैं, वो आप you're going to start walking them out the door and getting in 30 plus players again to win one season or to get a some sort of a cup result for one season or 2 seasons. और वो हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं कि that works to an extent, but then you cannot have spent $1 billion trying to build a project, right? वो फिर चलता है कि ठीक है, you're buying Bakayoko and you're getting free transfers like Pedro and Fabregas on deadline day, and you're trying to get something in the season, right? कि कुछ मिल जाए, and then you go do those things, चल जाता है. इस वक्त with that much spent, you need some continuity in the management position, even if it's a Pochettino. I understand. I'm not Pochettino in guy kind of guy, but I'm not a Pochettino out kind of guy either. I just want consistency, some stability in the club. I want us to look like a mature club and a mature team. इस वक्त problem ये है कि team भी immature है, manager, I don't know, arguable whether he's mature or not. I'll tell you the main. And ownership is immature. एक line में बोलूंगा, just adding to what you said. I think we don't know what we are doing. I don't know how many of you will agree. Be it basically from the board, be it from the manager, be it from even the players' intent in terms of contract issues and whatnot. I think we don't know what we are doing. It seems like that. Honestly, in a very bad context, I would want there to be like a camera crew behind documenting this season and the decision making in the boardroom. We need one of those camera crews in there making a documentary for this season, because मेरे को नहीं समझ आता हमारी decision making कैसे होती है. I would love to be the fly in the room on the wall listening कि ये decision making कैसे होती है, who does the decisions, who is making the decisions, because इस वक्त तो मुझे नहीं कुछ समझ आता कि ये क्या है. वो मैजिक बॉल को ऐसे शेक करते हैं और क्या बोलेगा वो कर देंगे, right? It's completely nonsense in terms of the direction. This is a top tier club. You cannot manage it like we're mid championship level project. कोई सर नहीं है, कोई पैर नहीं है. And again, we came back from the brink of annihilation as an organization, as a club. We were about to be finished, and somehow we came back from that brink, and owners got changed, and somehow we're here where we are today, where we've spent $1 billion on players, and we necessarily don't know if that made us better or worse. चीज बोला था Mikhail, you mentioned, I know हम ऐसी बात करते हैं Bakayoko का,
टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ ऑफ कोर्स द ओनर्स, मतलब 90% में तो 90% नहीं 80% उनको ही ब्लेम दूंगा मैं तो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उनको फुटबॉल का एफबी नहीं मालूम था, एंड दे वर टेकिंग सजेशन फ्रॉम पीपल हु गॉड नोज व्हाट नो व्हाट। बट इवन बिफोर दैट, इफ यू एक्चुअली थिंक बैक, आई नो इट्स इजियर सेड देन डन। मतलब हाउ डिड वी कम टू दिस पॉइंट, Mikhail? As a club, right? I know Putin is to blame, but even before that, 2005, Mikhail, 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, that 2004 even मैं बोलता हूँ, 2003, 2000 में बोलता हूँ, जब मैं बार्सिलोना के साथ देखा था in that round of 16, those 13 years between 2000 and 2012, and then I know there was an entire squad change. मतलब we used to have people like Joe Cole on the bench, मैंने कल ही इसके बारे में जिक्र किया था। From that point, we went on, and of course, we tried to change with some youngsters and some nice play. Roman wanted some sexy football. Mazakar, famously, we all know Hazard, Oscar, Mata. Wala, I know that was the different era. Wahan par we lost a UCL again. Then we kind of went a dogged approach with the Jose part 2. Then again dogged approach with the Conte, with the Tuchel. Okay, लेकिन in between that, the Bakayokos, the Barclays, the Drinkwaters, and we used to have like again, मतलब a person like Thiago Mendes को इतना game time नहीं मिलता था. There used to be time when SCN used to be on the bench. There used to be time when Joe Cole used to be on the bench. There used to be time when Ramirez used to be on the bench. But from that point, as a club on the whole, even when Roman was around, of course, Marina has to be blamed to some extent, as much as she did a lot of good things. उसके बाद में, we have already made a mistake for a few years, and then again, what did this ownership, what were the existing leaders in the club at any point, जो कुछ ही बाकी, what did they read, what did they learn? Is it I don't better think they, off kind of just the stopping I think the changing? biggest problem is, Ankit, these owners were not watching any of that. Exactly. These people are new to the game. They're new to football, right? They're not new to Why did the Chelsea. They're Carabao new Cup to pain us football. more? That is why, exactly, you're right. हमें So ज्यादा there is दर्द no हुआ. correlation. We as a fan base have all the learning of the past 20-25 years Correct. to keep in mind when we say something, right? कि ये तो कर चुके हैं, ये फिल्म देख चुके हैं, ये फिल्म भी देखी हुई है, ये भी देखी हुई है. इन्होंने तो कुछ नहीं देखी हुई, ये तो अपनी कोई नई आई डोंट नो क्या करना चाह रहे हैं. चेल्सी Anyways, एक long story पॉपुलर short, क्लब है, और you kind of get yeah, success. it's like a typical uh, North American US takeover, where they take over, first thing they do is get rid of everybody. And they'll be like, yeah, whatever. We fail, we succeed, we get rid of हमारे everybody first. ऑफिसेज में वही हुआ है, हम देखे. Yeah, Exactly, but I know like what you mean. it's normal. It's normal. And then they're like, okay, now bring in all the MBAs and we'll run all the reports and we we'll do better. We'll do our own thing. वो यहाँ पे हमने सुना था डेटा आएगा, बिग डेटा आएगा, ये आएगा, वो आएगा. आया गया, आप कुछ समझ नहीं आई क्या हुआ. लेकिन ना बेरा बचा, ना कुक बचा, ना ग्राउंड कीपर बचा, ना किटमैन बचा, ना चौकीदार बचा. like you can So understand what's happening. They exactly, are solution ये नहीं they है are कि not focused on beg. football. लेकिन मिकाइल, मैं यही पूछ रहा हूँ, इज द बेटर सोल्यूशन नॉट नाउ, राइट नाउ, कि भाई जाकर माफी मांगो कि भाई आई नो दैट वी वर नॉट ग्रेट, वी हैड आवर इश्यूज, बट गेट at least a couple of people from the regime which at least got us to top 4 for a couple of seasons, couple of years back. Too many couples, I know, but you know what I mean, right? Simple as that, starting with Petr Cech. Why don't we go him? Why don't we use John Terry? Simple as that. यार बात ये है कि like what are you मैं थोड़ा सा I don't know. Director football वाला, director, be one of the directors. Yeah, so I agree with what you're saying. I just don't like going to personas like public people just out of the fan mentality कि यार John Terry है, let's get him in. And नहीं, Peter what I'm Peter trying to say let's is, get him in. listen, I John Terry was agree. there as a There second needs to be manager proper to people in. Will. Proper people have to be brought in. The control of the club has to be in football people's control again. Or they tried it with the new sporting directors, but I think there were too many cooks in the kitchen, and maybe the cook that they should have hung on to left. So you could argue, but and now the problem is that nothing works. So what do you do again? John Terry को ले आओ, that's more a feel good kind of vibes कर लेंगे, फिर से Terry आएगा. जिस तरह लैम्पार्ड को हम 2 दफा लेके आए हैं कि vibes हो जाएंगी और कुछ नहीं होगा. I'm not saying vibes. Let me explain. So
Peter Cech, basically, he did a decent job, is what the feedback is. Although he's a club legend, or bowling, I know that. But everyone who has spoken highly of his work at the club, in the role that he was in. Okay, Peter Cech. Then you have a John Terry coming back to the coaching staff, because क्या हो रहा है ना यहाँ पर, apparently we are Poch, especially under Poch, we are trying to basically again give a lot of game time to those youngsters. So he was part of it. He knows the Chelsea DNA. He was part of the second coach. And again, there are people who are there at the helm, जहाँ पर they may not be the right approach. लेकिन even for that matter, I'm not saying Lampard is the coach. Don't get me wrong. Lampard is a director. For me, people who know exactly what is needed in Chelsea need to make decisions rather than do the coaching part of it, because that is a specialty job, absolutely. Lekin in terms of football, कि क्या बोला, what kind of DNA would work for Chelsea better? These directors and owners know shit, यार, Mikhail, honestly. उनका mentality नहीं यार है वहाँ. हाँ वो too many voices in the air, too many new people trying to do whatever they feel, और फिर वो होता ये है कि अच्छा मैंने अंकित की बात नहीं सुनी पिछले 6 महीने, चलो अंकित की आज सुन लेते हैं, और मैंने मिकाइल की बात नहीं सुनी तो आज मिकाइल की सुन लेते हैं, राइट? सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि चलो ये भी ट्राई कर लिया, वो भी ट्राई कर लिया, some things work out, some don't. Generally speaking, I understand what they've been trying to do, which is create a new generation of players that they can play with for the next 7, 8, 9 years. But football में ऐसे नहीं होता. Football में आपका एक manager जो है gives you 2, 3 years maximum, and that's unfortunately the reality of the modern game. Okay, you can only get performance level from a team in the first 2 years, maybe 3 at most. But apart from maybe the most elite managers, nobody else can do it more than that. Unfortunately, that's just human nature. इसीलिए आप Tuchel को भी देख लिया कि Tuchel was, even though he had won 3 trophies, he was on the way out. We could all see here he was losing the dressing room, he was losing the fans even, क्योंकि वो left right pajama ढीला टोपी टाइट वाली उसकी फुटबॉल चल रही थी. There was nothing new happening anymore, right? And the players were losing interest in executing his instructions even, because they was just Pulisic is a great example. How good he's doing right now. Matlab, he's balling. Pulisic and I know Pulisic and Loftus-Cheek in a different league. It's not fair to compare. लेकिन I think both of them कहीं ना कहीं वो एक freedom मिल रहा है उनको, and both of them are expressing on the pitch and beat him in the Champions League and other things जो किए in the last 1 year. Plus, it's a different league, right? So whatever you say about the Italian league, Serie A, its pace is different. Tammy Abraham scored how many goals? 24, 25 goals the first season he was there, like broke records for the first season for a foreign player or whatnot. But Premier League mein he couldn't score more than 12, 13, 14 goals a season. So the levels to the conversation. Kid Loftus-Cheek needed to go away to that kind of league to kind of get back into football, and so you could argue Pulisic did as well, because he couldn't do it fitness level pe. He was getting injured. Like baller of a footballer, but he would get injured. And then once he got injured, then you had to take him out and give other people chances in that position, and then it was hard for him to get back in the team. He was playing like a false 10 or a right wing back, which is not. Like the thing is, I don't blame anybody in that situation. When players get injured, they get injured. It is what it is. It's sad. Loftus-Cheek के साथ भी यही हुआ, Pulisic के साथ भी यही हुआ. And sometimes life is like that, and the football is like that. If there's a fork in the road, and either you become great or you dwindle away. And sometimes that happens to great players. It's okay. So I am happy for them where they are. Power to them. बात ये जब आप बात कर रहे थे, just coming back to what you were saying, कि you want football people in the club again. I agree with you, but I don't want vibe people in the club. So when you say football people, I would take a Xabi Alonso who's killing it in Germany, right? Because he's gone out and he's proven it somewhere else, right? So it's not my opinion or your opinion. It's somebody who is from a generation of football players, same as John Terry, same as Lampard, who is gone out there and creating waves, proving himself, right? उस टाइप के लोग लेके आओ, and I'm 100% agreeing with you. Yes, let's do it. मुझे टेरी इसलिए नहीं चाहिए कि टेरी चेल्सी प्लेयर है, let's bring him back, right? टेरी ने किया क्या? What's he doing out there? Is he going out there and proving himself at Aston Villa? नहीं. He was assistant manager and then he quit coaching. So मेरे लिए question mark है. He's more a PR guy. You need to hire him जिस position में Peter Cech को hire किया था आपने, कि he is more about the face of the club. He is more about dealing with fans and dealing with media and dealing with other clubs. You're using him to represent the club as an ambassador of the club, resident ambassador. Okay, he is the face of representing the club in the local organizations,
with the English FA, with that may not go well with in Terry's case, but whatever. Terry की अपनी history है with English FA. लेकिन you get what I'm trying to say. कि I'm not against using club players. कि Frank Lampard को भी ले आओ, but in a relevant role to what that means. I don't think Frank Lampard is a genius of a manager. He's an okay manager, championship level, maybe mid-table Premier League level. He'll keep getting work in the coming future. I have nothing against that. Or he could come as a club director and just sit in the back office and be Chelsea's face, wear a nice suit, go out, shake the hands, get the pictures taken, go sign a good player for Chelsea when the opportunity presents itself, help close the deal. Like that's where these players can come and help our club get to the next level. But unfortunately, not in the dressing room, not in the decision-making room where you're actually putting policy decisions together. कि भाई, what kind of project are we building? What kind of players do we need to get? What kind of transfer policy do we need? वो सब time आया और गुजर गया एकदम $1 billion later. अब it's going to be a very rough few years जहाँ पे we'll have to sell to buy. तो वो आप वाली बात है कि एक अच्छा प्लेयर नजर आ रहा है, कचरा उसको भी बेचना पड़ेगा बिकॉज उसी की वैल्यू है, उसको बेचना पड़ेगा. 50 मिलियन अब तो उसी के मिलेंगे और किसके स्टर्लिंग का भी मिलेंगे. वैल्यू गिर गई है. स्टर्लिंग का भी लास्ट एक महीने स्टर्लिंग में के आपको 20-25 मिल जाए तो आई वुड से ड्राइव हिम ओवर बिकॉज ठीक है, वी नीड somebody of his stature in the team, but he's earning 350 a week, I think, which I think is obnoxious, right? We don't need that kind of player. His output is not matching what we pay. crazy, yeah. So मतलब Malang Sar, who's training with the academy, is earning more than Gallagher and stuff, यार. मतलब that is embarrassing. वो तो एक different era की signing था, so I cannot blame him. उस वक्त वो सस्ता लगा था हमें. When he was bought at 120, we were like, हाँ ये तो सस्ता है, right? Because we had so many. हाँ. But वो फ्री में आया था ना, तो maybe we had him offered more wages. That maybe. Yeah. And ठीक है, we tried him. It didn't work out. He had a mistake in him. Everybody knows it. So it is what it is, right? It didn't work out. ठीक है, उस वक्त के wage level structure club में different था. अब very different wage structure. So I would say कि okay, fine. You know what? Stick to your wage structure. Get rid of the Sterling. Cash him out, and use that money to actually get replacements where you need them. And tactically, that would. We're coming to that point in the season where we need to start thinking, okay, who would you need to be which positions do you need to flesh up? लेकिन वो आप वाली बात है कि अभी we're in the middle of the season, middle of a game. We cannot be talking about transfers, right? After the game, maybe after the season, maybe. So those are conversations one can have. लेकिन कितना और खर्चेंगे? We have to sell to buy now. Financial fair play is looming large, and there will be. I don't know if you heard. चैट या बोल रही थी, couple of them were saying like, big up to the chat, joking. चालोबा इसलिए आज स्टार्ट कर रहा है back to back games after 8 months क्योंकि हमें उसका वैल्यू बढ़ाना है. हाँ, 100%. I agree with that. And there's a player in there, and 25 million you can get on a good day for a Chalobah. With his experience, you should get more probably because he's been won a Champions League. He's been a part of Super Cup, Club World Cup season में तो भाई he was very much there the first time. So for the right team, you could get 30-35 million for him easy. And back in that day, 30-35 million used to be average price. Man, come on. Not too long ago. वो आजकल ठीक है, वो Chelsea desperation की वजह से teams get away with paying bottom dollar for our players, and क्या करें? अब वही वाली बात है कि the manager has to be part of that kind of project. Yeah, I have to build up this player so that I can get rid of him in the summer with a good value and in a good way, not in a bad way, not in a toxic way. In a good way. कि ठीक है यार, I'll build you up. This time Loftus-Cheek, we are happy to see him go and get play better football somewhere else. Same kind of vibe, right? I'm not against Chalobah at all. 100%. I'm not even against Sterling. Build him up, cash him out. He's a gun for hire. He's played for so many clubs in his life. He'll go to the next club and be as equally happy and as equally sterling as he is here. कोई मसला नहीं होगा, right? So the point is कि कुछ players ऐसे हैं that you are okay with. Some players are like, ठीक है, Gallagher को बेच दिया तो जो काम वो करता है वो कौन करेगा टीम में? Enzo and Caicedo cannot do that. Right now you're seeing. आज भी to be honest, Caicedo और Gallagher का work rate जो था ना midfield में, उसके बगैर तो we would have been beaten like crazily, bro. 100%. And Caicedo was struggling, but he was getting in that final last ditch touch or whatever to keep us in the moment in the game, or whatever, to give somebody else time to come and help him. Lekin a lot of people were ball watching around him, and you're just like, there is no synergy in this pivot right now because nobody knows what the other person should be doing to help out the person. And a lot of times we were on the wrong side of the ball again.
Everybody standing on the ball is starting to go the other way, and instead of getting back on side of the ball, you're just standing there watching. कि नहीं कि समय hopefully there'll be a ping pong okay ball मेरे पास आ जाए शायद. So you have to be more proactive like that in midfield. So we need that energy. We need people that are ahead of the game, reading the game. वो थोड़ा सा we were kind of like everybody's kind of going the other way and the ball's going the other way. So we need to fix that in our midfield. And you get the feeling that some days we do get it right, balance, and some days we don't. So Gallagher, without Gallagher, how do you create that balance again? बिल्कुल जीके मैं इसलिए हंस रहा हूँ जीके लवली कमेंट ब्रो इनको डीआईडी लिटिल चैम्प्स ना भर के इनको 3 एक्सपीरियंस और थोड़ा यंग टैलेंट लाके सेटअप करना था बेसिकली स्पीकिंग वी शुड हैव ऑडिशनड प्रॉपर ऑडिशन होने चाहिए चेल्सी स्काउटिंग के लिए बिकॉज बेसिकली इफ यू आर टेलिंग राइट नाउ आफ्टर डिजर्बी हैज स्पेंट 18 मंथ्स इन द लीग यू आर सेइंग दैट चेल्सी आर कीपिंग एन आई ऑन डिजर्बी साले अभी तक क्या कर रहा था तू मतलब अचार बना रहा था बैठकर द अगर डायरेक्टर आई डोंट नो व्हाट इज ऑल्दो आई एम नॉट फॉर डिजर्बी बाय द वे इज अ ग्रेट कोच attackingly but I don't think I don't get the Chelsea vibe from him just saying I might be wrong like I did say that about Poch all those years ago and about Benitez all those years ago who's to say need experience good players Ibrahim bol rahe and if owners don't want to do that then they will soon see वहीं पर cash 22 आ जाता है ना क्योंकि हम Thiago Silva having not a great exit and a last year looks like it as things stand in terms of captaincy non-issue जो issue है actually and of course what happened to the wife etc those kind of things people like him Sterling not living up to the expectation or even half of it or even quarter of it अब technically देखा जाता है तो वो दोनों actually experienced players है apart from say a Chilwell or even a Disasi तो that is the thing आपके 50% of the experienced players are ऑलरेडी इन क्वेश्चनेबल और आप अगर नए एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ जा रहे हो देन अगेन एक्सपीरियंस प्लेयर्स के लिए आपको सेल करना पड़ेगा एंड आवर क्लब इज ओनली साइनिंग बेसिकली टॉम डिक्स एंड हैरिस वाज जस्ट 1890s वो एक क्राइटेरिया बन गया तो मतलब मेरा बॉटम लाइन ये है मिकाइल एज मच एज पॉच इज टू ब्लेम एंड प्लेयर्स टू ब्लेम आई एम स्टिल लाइक yes it's maybe Poch lucky here that the fact is we are in the FA Cup quarter final but I would still say bottom line that for me इस सीजन में मुझे पता ही है क्या होने वाला है समर में तो फॉर मी एज लॉन्ग एज ही हैज अ चांस टू गेट टू यूरोप जस्ट फिनिश इट बिकॉज आई वुड लाइक टू हैव मोर ऑप्शंस कम द समर फॉर द मैनेजर क्योंकि हमने देखा है पिक्चर ऑलरेडी ऐसे नहीं फर्स्ट टाइम देख रहे हम लोग एज मच एज आई हेट सीइंग दैट वाइब ऑन द साइडलाइंस एब्सोल्युटली एग्री बट बॉटम लाइन ये है कि यार क्लब को on the whole we have to look at something changing मतलब either ये लोग को L लेना है and they have to accept their mistakes about changing everything at the club and either get 2-3 people who are working at certain positions which maybe was working I don't know I might be wrong या आप लाओ like Mikhail suggested maybe better brains who are football people but they know the job and they've been there done that who are kind of winners Xabi Alonso का मतलब for example हमने Amorim की बात की थी these kind of names I would still say that jury रहो थोड़ा सा because of the fact that मतलब आइडियली अगर आइडियल सेंस से बोले तो एक तो आने नहीं वाले वो बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ऑफ चेल्सी आई बिलीव अपार्ट फ्रॉम द मनी फैक्टर I think ideal situation, the ideal manager right now, which is not going to happen again, is again जो मैं बोला था last season. Carlo Ancelotti is a good man manager, is a great tactician. He's someone who kind of is a yes man, but at the same time has the experience, has the calmness. That is the kind of manager मैं बोलता हूँ profile. Again, Carlo Ancelotti is a goat. रोज मिलता नहीं है दुकान में. But that is a I think who knows the league as well to some point. I think I would prefer such a name अगर वो available है. And right now Amorims of the world and Alonso तो realistic नहीं है. I don't see that happening honestly. Just because Amorim is protege of Jose Mourinho, I don't see that happening. I don't know. One name if you have to end the stream with Mikhail, what would you say if at all owners take that stance? Although हम दोनों सोचते हैं कि भाई probably you have to suffer until the season. यार यही है भाई to be आपका honest, वॉल्यूम कम कर सकते हो आप कुछ वॉल्यूम आ रहा है ऑडियो का ये probably मेरा आ रहा है probably yeah. I hope मेरे नहीं आ रहा होगा the thing is honestly the thing that can the shortest path to changing the trajectory of where the club is with the players in those situations where the goal is staring at you and we वो कहते हैं ना आप जिस तरह बोलते हो हक दिया we need to stop doing that is the only path to success जितना मर्जी आप टिंकर कर लो बैक रूम में डायरेक्टर रूम में ओनर रूम में मैनेजमेंट में बात ये end of the day it's about that moment when the player needs to figure out what I need to do to put the ball in the back of the net all the problems go away everything goes away
This is not about the system Pochettino is playing. This is not about the starting lineup necessarily either, because a footballer, a professional footballer, making hundreds of thousands of millions of dollars a year, or pounds, or British pounds, or whatever they get paid, euros. Uh, you cannot put the ball in the back of the net. I'm sorry. That's unacceptable to me. I don't care how bad the owners are or the manager is. That's the where the buck stops, is with the player in front of goal. To me, that needs to be fixed. That's the only way forward. If even if this team takes all the if this team right now takes all the opportunities we get and score them, we would be winning the league. That's how bad we are with scoring. Okay, we create enough chances to be top of the league right now, even last year, even under the year before that, we just cannot convert. And I'm sorry, but no, we saw Tuchel brought in a complete defensive system. We couldn't score goals. Defensively, you could not score against us. Offensively, we couldn't score a goal. Creating chances under Lampard first stint, actually we did more. Actually, 100%, 100%. Lampard का problem ये था, we would create 10 chances and get 10 scored on the way back too. Horrible. Right, defensively zero. But that's what I'm saying is कि defensively perfect भी देख लिया हमने और defensively zero भी देख लिया हमने. And the point is कि end of the day, if we are not taking advantage of those opportunities, unfortunately, this is all extra talk. It does not matter whether we spend $1 billion or zero. When the opportunity comes to score a goal, that's where the problem is there. And I'm not convinced the players are on board, because some of these chances, when I see them, it's almost like they're not taking them seriously enough. They're not serious about the chance. And that makes me like all kinds of मेरा conspiracy theory शुरू हो जाता है दिमाग में, right? कि ये player है, पिछली गेम में भी यही हुआ था, उससे पिछली में भी यही हुआ था, अभी 5 मिनट पहले भी यही हुआ था, 10 मिनट पहले भी यही हुआ था. So I don't want to go that direction. I want to see the player do what the player's job is. Then we can go complain about the manager. Then we can go complain about the director. Then we can go complain about the owner. कोई responsibility नहीं ले रहा यार मिकाइल. इसलिए I want something which is basically attracting the so-called players of fighting for the badge. Because अगर European football कुछ level पे आया तो at least एक trophy. आप देखो ना, any cup match, मतलब as much as we have not been ideal, in the cup competitions our general intensity is far more higher भाई. वो क्लियर दिखता है, वो प्लेयर से आता है टू सम एक्सटेंट. एज मच एज मैनेजर वहां पर जब गाली दे रहे तो उसको भी थोड़ा बैक कर लेते हैं, चलो, लेकिन प्लेयर से भी आता है गाइस. सो फॉर मी 100%. आई एग्री विद द कमेंट्स दैट मिकाइल हैज मेड, एंड आई थिंक ये वाला कमेंट से मैं 100% एग्री करता हूं. एज मच एज वी हैव टू सफर, द रियलिटी इज दैट मतलब आज सच्चाई दिखी है दैट वी आर स्टिल नॉट nowhere close to the team what we want to be, but at the same time as a team we need to understand the fact that right now if the players are not playing with motivation, they're not playing with motivation. मतलब हाँ, कल को जोजे आ जाता है, मे बी टुकल इन द वर्स्ट केस, इन द बेस्ट केस फॉर सम पीपल आ जाता है. even if they motivate, we have seen this film before. मतलब I know Lampard was a great coach last season. Mikhail, you remember we agreed to disagree, और मैं I was proven wrong. I was actually okay with the vibes factor, लेकिन it did not work one bit, and Mikhail was right. Correct. So I would like to take an L. But like I don't want to be right necessarily. I want the club to be better, right? And sometimes you can just see the writing on the wall. This is you know, the chances of this going wrong are higher than the chances of this going right. लेकिन ठीक है, वो I'm a pessimist by nature. I'm a skeptic by nature, right? So I will always look at that the downside before I look at the upside. But you're an optimist. You always want to look at the positive side for the club's sake, right? कि Lampard को भी ले आओ, we'll go win the league. Right, so I love that enthusiasm for the badge, for the jersey, for the club, for the vibes. I love it, right? But reality, cold hard, when you hit the ground, right? So unfortunately, just level pay, we are competing with the rest of the league, with the rest of the teams in Europe. You know, it's not a joke. It's not a joke, and it almost like feels like it was too easy when Tuchel won those trophies in Europe. Because it's not supposed to be that easy. Ancelotti को आप कह रहे हो, Ancelotti पहली बात ही आएगा ही नहीं, because Everton was at the same level as Chelsea are right now, and it did not go well for him. You know, it was a very rough, tough assignment, and he ran away the minute he got a chance. That call from Real Madrid, he was out of there, and then it paid off for him as well. So he will probably learn from that and say, okay, you know, I'd rather not get bogged down by mid-table teams again. I need an example बोला था, that profile, like someone
who's basically a calmer जोजे ही as आ well सकता है इस वक्त, as अगर if they can make a good pitch to Jose might come, maybe that will work out, but I don't see Jose working with this lot. Jose will get rid of हाँ, most of them. उसका वो मतलब अपने player लेके आएगा. मेरी कोई attachment नहीं है necessarily with the, the whole lot necessarily. I support the lot because they wear the jersey and they are our team. But if Jose needs to come and change it up in the dressing room, and that's what we need to do to succeed, that's fine too. But that's not the project direction right now. So that's why I'm saying I don't see a Jose coming in, because he does not fall in line with where the project has been heading so far. तो फिर आप अपने स्पोर्टिंग डायरेक्टर भी निकाल दोगे, बिकॉज वो आपने जो भी वो कर रहे थे, you basically said you don't know anything, now you get lost. We are नहीं, bringing Jose back. मैं Jose तो will. बोल ही रहा हूँ, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि बेसिकली यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि जो आपने किया है लास्ट 15 महीनों में नल एंड वॉइड है. You have to accept. 100% as fans, yes, but as owners, I don't think so. They will never admit that. Exactly. They will Practically they never will not. admit it. I know that. Right, so वही बात. that's the problem. Okay, with the Jose coming in, they would have to eat a lot of humble pie, and I don't see them doing that. वो ये इस They तरह का don't. owner नहीं है. They don't like admitting that they did something wrong. They will keep doubling down on whatever they're doing before they accept anything else. तो मैं तो बीच में स्टेज आ गया था, मैंने बोला था यहाँ पे स्टैम्फोर्ड ब्रिज पे कॉन्डोज बना दो, कॉन्डो बेचना शुरू कर दो, बिकॉज और तो मुझे नजर नहीं आ रहा कोई तरीका, बिकॉज ये इनको फुटबॉलिंग का तो इनको कुछ नहीं समझ आ रही इनको. So यही है कि Barca Pochettino, we management wanted was Pochettino to come in, कि wouldn't be at least a Pochettino has coached at the top level. He has taken a team to the Champions League final. So we were like, okay, चलो ठीक है यार, कोई तो आएगा with some sort of footballing mentality to kind of raise the level in the club, क्योंकि we were so down in the dumps कि even Pochettino was a step up. But Pochettino has his limits, and we've seen them before he joined Chelsea as well, and we are seeing them now as well. So I wouldn't say that we need to go anti-Pochettino. We just need to understand that he has his limitations. As long as he's with the team, our expectations should be reasonable from him. Okay, ठीक है, as long as he raises the level of a few players, he teaches us to play a back four. Maybe that's his legacy. Maybe we needed to get away from the back three. Collectively, we have all agreed upon it कि वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए थे हम. We just needed to get away from it. इतने सारे अटैकिंग प्लेयर रख के बेंच पे हम back five plus two in the pivot, back seven होती थी basically, right? And then who's left to play up front? It was a very disjointed kind of setup. So this is like, I am still saying that Pochettino, for what he was hired for, I think he's doing, which is raising the level slightly. I don't think he was going to raise the level drastically. I did not think that would happen when we hired him, right? So expectation का But mismatch जहाँ पे है, what was your वहाँ पे expectation? problem है. What was the हाँ. expectation कि हम कहाँ पर end करेंगे इस season? मतलब एक realistic expectation. We all spoke before the season. I think right? reasonable expectation ये थी कि we would be in Europe, and that's why I see your frustration today. However, how the season has gone, I don't think we deserve to be in Europe. We're not playing well enough to. We're not playing consistently well enough. We have played well enough in moments, but we have not played well enough consistently. वही वाली बात है कि जाके Man City को जाके almost we beat, या score 4-4 with Man City, या whatever 2-2 with Man City, whatever happened. But then we have a game like today, where we fluff our lines somehow and end up walking away with a draw, thinking that we got lucky, right? Based on what happened in the 90 minutes of the game. So be reasonable. All I'm saying is, keep social media. There will be toxicity. There will be a whole Poch out movement after every bad result. And ठीक है, वो like that's part of the game sometimes. But from a thinking footballer's point of view, from a thinking not footballer, thinking fans point of view, I think Pochettino के साथ we have to be reasonable. अगर आपके पास कोई better coach है that's willing to join tomorrow, fine, bring him in. कौन have a better coach, and how do you expect things to change? I would be interested in that conversation. Maybe that's worth a show as we're getting closer to the end of the season. Okay, let's see who the top 10 choices are and what cases can be made for bringing them in. And We need बात time. वही है कि Time is the. बात वही है कि हाँ, वो थोड़ा सा आई ऑल्सो एग्री विद यू कि इस वक्त टाइम है टीम को बैक करने का, टीम को सपोर्ट करने का, ज्यादा आगे छलांग मारने का टाइम नहीं है. सो आई डोंट इवन हैव अ टॉप 3 or top 5 figured out for who can replace Pochettino, because it's pointless right now. We need to focus on this season, get behind the team like you keep saying. Even I'm human too. मैं भी कई दफा I get fed up. ये क्या बकवास खेल रहे हैं, like ये फुटबॉल भी नहीं है. Like sometimes you're just like ये बकवास like, but ठीक है, We are at some just point reacting. और कुछ नहीं, We are so it's our team. reacting. We need to show up to support our team, and
and that's kind of sort of the message right now. मेरा भी यही है, chat वालों को भी और general Chelsea population को भी, कि इस वक्त सीजन के बीच में है, things are not going our way, like Ankit keeps saying, कि just because things are not going our way, now we will not support the club. ये कैसी following है, ये कैसी fan base है? So we still need to get behind the team. Still need to get behind the manager till the time it becomes untenable. Right now, I think he's shown us some good things as well. Let's focus on those. Let's hope that, abhi bhi theek hai, there are games left in the season. Maybe something can be done. But we're only as good as the next game. Next game, Newcastle ki aa rahi hai. We need to focus on how do we beat them, not how do we draw them, not how do we not lose to them. How do we beat them? Right? That's what we want to see from a fan's perspective. Actually. Are we going for the win? Do we have the killer instinct? Do we show up on the game day as for the players? Are they going in for every tackle before, are they winning every 50-50? Are they getting the second ball? Are they getting the third ball? Are they covering for each other? These are the things we need to see from the team. And that's where I have to agree with Ankit. Maybe the manager is not getting that response from them or that energy out of them. And maybe that's where we do need to consider making changes. लेकिन वो ब्राइटन का जो नंबर हमारा स्पीड डायल पे है, वो किसी ने चैट पे डाला हुआ था, प्रॉप्स अप टू कि यार वो स्पीड डायल पे ब्लॉक कर दो उनको प्लीज, उनका नंबर ब्लॉक कर दो ब्राइटन का. ये क्या, हम ब्राइटन भागे भागे हर 2 मिनट बाद चले जाते हैं. तो वही वाली बात है कि कितनी दफा ब्राइटन से जाके बेइज्जती करवानी है. थोड़ा सा मैं भी हाथ जोड़ रहा हूँ यार कि भाई बस कर दो. लेकिन ठीक है, डिजर्व इज whatever. Like for a team playing in 12th position in the Premier League, it's not unheard of to have Deserby in the line of options, right? And right now, unfortunately, we're 12th in the league or 11th in the league, whatever our position is today after the result. So chalega filhal, lekin ye hai ki today I felt that we did enough to win the game, and I think at that point you have to kind of give Pochettino a little bit of a soft landing. Whatever he did, whether we agreed with it or not, it created enough chances on the pitch for us to have won the game, and we just didn't convert them. And to me, that's where we can do better next time. बाकी ये है कि as a back three, we knew why we played a back three, because उनका हमें लग रहा था threat होगा from crosses. आपने खुद बोला they're leading in crosses, so we needed to have an extra body in. I would argue कि वहाँ पर त्यागो सिल्वा को भी लेके आते हैं if you were genuinely planning. That would have worked also, because he knows that. मतलब again अब वही है, ifs and buts वाला मामला है, late reaction वाला है, whatever. Going round and round, but bottom line वही है, Conte ने जो बोला, भाई suffer. That's what Chelsea unfortunately become right now. कोई नहीं, we will suffer and we will still support the club and still support the team, and big up to Mikhail, yes. big up to the chat again. काफी लोग अभी भी देख रहे हैं. Again आप लोग, I know काफी लोग frustrated हो. Again मेरा खुद का frustration, which is very surprisingly low in recent month. Mikhail knows the level of frustration I used to get. Recent month में फिर भी I am a little bit positive. Today it would have gone the wrong way, but now I agree with Mikhail. Coming back to हम वो जो discuss किए, again try and watch a movie, try and make a weekend, go for a date, जो भी करना है भाई करो, मस्ती करो. That is life, bro. Unfortunately हमें रहना पड़ेगा. I know that'll pain, but that pain के साथ में भूलना मत भाई, players भूलना मत. ये जो 2 stars है ना, these are my happy place. So मैं अपनी जर्सी पहन लेता हूँ और मेरा दिन गुजर जाता है. जिंदगी कट जाएगी इसी तरह यार. अभी इन्हीं खुशियों में अभी है हमारे पास. We have enough memories to live off them. Absolutely, bhai. Again, that helps, man. That conversation helps in the end for sure. लेकिन कोई नहीं. Big up to the chat again. I tried highlighting as many comments as possible. लेकिन क्या है ना, हम अपने Big up to the chat. तो बहुत सारा बोल रहे थे. तो hopefully you guys are all subscribed and hit the bell icon, because I know काफी लोग बोल रहे हैं keep sell loan. That conversation March break में रखेंगे. We are coming with who am I and whatnot. Mikhail, it's been a long time since I've been to a who am I यार. Come on, you have to come back as well. यार बड़ा टफ होता है तेरा who am I के लिए. मुझे बहुत ज़्यादा होमवर्क करना पड़ता है. अरे मजाक वाला करेंगे, चलो. I promise you. चलो we'll plan one day. Because this Chelsea and stress level, भाई मेरी तो तबीयत खराब हो गई थी. मतलब चैट जानती है, you know it, Mikhail. I was like नहीं यार, तो I took a break for a couple of weeks and then I came back. I'm like अभी गंदा भी होता, my frustration levels अभी तक better है, touch wood. लेकिन you all know थोड़ा बहुत हंसी मजाक will be back on both channels. And love to see it, and would love to with the T20 World Cup coming in, भाई पाकिस्तान and India का भाई मजा आएगा. We'll do some conversation वहाँ पर भी. लेकिन big up the chat and up the Chelsea, no matter what. Commiserations भाई. Yes, 100%.
भाई लिवरपूल मैन मेंटालिटी मॉन्स्टर्स, वी नीड टू लर्न अगेन फ्रॉम देम, बट वी हाँ भाई, अब बात ये है कि राइवल से भी if you can see learn something, learn it, and then there is a lot to learn from them. Liverpool I've never liked, but I've always appreciated the work ethic under Klopp and the mentality under Klopp, because the mentality under Klopp reminds me of the mentality of Man United under Fergie, right? And again, they were opposition too, but you have to respect the mentality monsters that they were. वो Fergie time जो कहते थे कि they would just 3 गोल भी करने हैं तो they would figure out how to do 3 goals, right? तो आज वाली गेम में आपको mentality नजर आई towards the end, like not even too like late for us, not even 10% of it. So that's what's missing, right? कि as a team, even हमारी अपने levels हम are not even anywhere close to where they used to be. So बाकी टीमों को जब देखते हैं, we can see the eye test. You see the mentality is there. They're doing the right behaviors. So that's something Joe Pochettino maybe is failing in, and maybe that's a criticism of him that's fair, probably in my mind as well. लेकिन सारी टीम नहीं है. It will take time. जो भी नया आएगा वो ठीक है. अगर जोजे टाइप ले आओ तो that's the adrenaline shot, right? कि आपको पता है कि उसको तो चाबी देनी है सबको. उसके बाद ये ऐसे भागेंगे कि जिस तरह ये 2 मैच खिला दो एक लाइन में खेल लेंगे. To be But honest, again, I know we are going on and on about it, Mikhail and chat, but the thing is, अगर कोई ऐसा मैनेजर आ जाए ना, मैं इसलिए मतलब एंचेलोटी वाज अ बहुत ड्रीम वाला मामला होने नहीं वाला, लेकिन उस लेवल का मैनेजर बाय चांस कहीं से पता नहीं जैकपॉट मिल जाए ना, जो ओनर्स और डायरेक्टर्स को बोल पाए ना, उनको अपना रास्ता दिखा दे. I think probably that is the ultimate solution. It's too good to be true. It's not going to happen, and we're going to it's learn the too. hard I way. 100% agree with you, but I think ये ownership does not have the ability to give somebody that kind of control. Secondly, I think Nagelsmann is an example. We didn't go for Nagelsmann and Luis Enrique because वो जीते हाँ, तो Ancelotti, I think himself experimented with coming to Everton, and I think he himself has realized it was a bad experiment, because he's better at going to a team that's almost there and getting them there, Correct. थोड़ा सा right? मतलब तो हाँ. थोड़ा सा जस्ट साइन चाहिए. अब अगर वो बायर्न म्यूनिख जाए या इस तरह की टीम में जाए, आई थिंक he'll get them back to where they need to be, right? मगर चेल्सी आना is too much of a project right now, right? We're so far away. We're so far away कि वो उसका टाइम जाया हो जाएगा. उतनी देर में वो कहीं और जाके ट्रॉफी जीत जाएगा कोई, right? So I don't see it happening. Plus I don't see कि owners will have the owners का ego इतना ज्यादा है इस वक्त, या कंट्रोल का रिक्वायरमेंट इतना ज्यादा है, या ड्रेसिंग रूम में इन्फ्लुएंस का रिक्वायरमेंट इतना ज्यादा है कि वो इतना बड़ा नाम आई डोंट थिंक आने देंगे necessarily. Plus, I don't think I think Ancelotti will have better offers, to be honest. That's why I'm saying. Lekin I would love to see Ancelotti back. I think Ancelotti still has unfinished business with Chelsea. जिस तरह Ancelotti was let go in the Roman era, वो अभी तक we all agree कि was a little Italian too manager harsh. connection रहा है, Mikhail, you know it. हाँ. मतलब that is always So there. so definitely there is a unfinished business between Chelsea and Ancelotti, and I would love to see him back any day. Today, next year, next decade, whenever I think he has a good place in Chelsea fans' hearts and minds, and we would and he's gone on to so much. He's achieved so much with other clubs wherever he's gone mostly. So no argument there. उस लेवल का तो मैनेजर है ही नहीं दुनिया में मेरे ख्याल में, जो what I think he's won Champions वो League तो with गोट 3 लेवल है clubs. भाई, 4 हाँ, वो तो like there's मैनेजर. very, I think current crop में you can only maybe you can put nobody next to him, because I think he's standing by I himself in would terms put of how many Ancelotti Champions League right he's over won, there. how many leagues he's won. Probably level, But ठीक है, we can hope and wish कि maybe he has a place in his heart for Chelsea still, and maybe he will take on a tough assignment to help the club get back to winning ways, and that would be lovely to see. चलो भाई, उसी बात पर थोड़ा hope is what keeps us alive पर आते, और let's have a good weekend despite the draw, although it feels a loss, but कोई नहीं, अब the chance no matter what, and big up everyone. Bye. Big up to the chat.